बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान अपने तमाम नाजरीन को स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का कराची से खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पर आज जो मैच खेला जा रहा है सिंध वर्सेस सेंट्रल पंजाब, इस मैच का तीसरा अहम और बड़ा क्रूशल दिन है, क्योंकि यहाँ पे सिंध की टीम स्ट्रगल करती नज़र आई और अब तक हमने देखा कि इस पूरे 3 दिन में जो खेल हुआ, 2 दिन में जो खेल हुआ, उसमें सेंट्रल पंजाब डोमिनेट वो करती हुई नज़र आई। यहाँ पे पहले बैटिंग की थी, 155 रन की इनिंग खेली थी इस मैच में सिंध की टीम ने, और जवाब में आबिद अली के शानदार 98 रन की बदौलत 187 रन बनाने में कामयाब हुई सेंट्रल पंजाब। 32 रन की बढ़तरी हासिल की, जो कि ज़्यादा बड़ी बढ़तरी नहीं थी, लेकिन उसके बाद अब जवाब में जिस तरह से स्ट्रगल करती नज़र आई है हमें सिंध की टीम, उसके जो है वो कई खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और असद शफीक और जो हसन है वो अब यहाँ पे पार्टनरशिप एक बना रहे हैं, और पार्टनरशिप बनाने के बाद जो है वो अब 115 रन की बढ़तरी सिंध की हो चुकी है। 5 विकटें अब तक जो है वो सिंध की गिर चुकी हैं, लेकिन जिस अंदाज से विकटें गिरी हैं, किस अंदाज से विकटें गिरी हैं, ये अभी हम दिखाएंगे भी और साथ साथ डिस्कस भी करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एनालिस्ट अहमद सईद से। अहमद, सबसे पहले आपको खुश आमदेद। और जिस अंदाज से ये विकटें गिरी हैं, इस वक्त हम देख भी रहे हैं कि विकटें जिस अंदाज से गिरी हैं, पहले एहसान अली रन आउट हुए, इस रन आउट के हवाले से क्या कहेंगे, फिर खुर्रम मंजूर जिस अंदाज से बाहर खेलते हुए आउट हुए, और उमर बिन यूसुफ आउट हुए, फवाद आलम आउट हुए, जिस अंदाज से विकटों की झड़ी लगी है, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कोई भी। जी हाँ, बिल्कुल। फिर एक बार हमने देखा है कुछ ख़राब शॉट्स, कुछ बदकिस्मती आप कह लें, कुछ एहसान का रनआउट का आपने जिक्र किया। वैसे तो बाद में देखने में ये लगा कि बड़ा अच्छा डिसीजन था, लेकिन थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच एहसान की वहाँ लगी। अगर डाइव मार देते तो शायद बच जाते, लेकिन बाकी विकटें जो हैं वो सारी जो आप देखें तो वो उन्होंने विकटें थ्रो की हैं। अब सारा मामला जो है वो असद शफीक पे आ गया, और जीत और सेंट्रल पंजाब के बीच में असद शफीक खड़े हुए। और अब ये जो मुकाबला है, बिल्कुल सही कहा अहमद सईद ने, अब ये मुकाबला जो है वो असद शफीक वर्सेस सेंट्रल पंजाब है। अपनी निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। हसन अली विकेट कीपर बैट्समैन उनका साथ दे रहे हैं, और अब ये आखिरी मुस्तनद प्लेयर है जो बैटिंग करता है। गो कि पहली इनिंग में 65 रन की इनिंग खेली सुहेल खान ने, लेकिन आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो जेन्युइन बैट्समैन नहीं है, एक बॉलर हैं। एक अच्छी इनिंग उन्होंने ज़रूर खेली। इस प्लेयर पर कितना डिपेंड करेगा? बहुत ज़्यादा। हसन से बहुत तवक्को है रनों की, उन पर ड्यू भी हैं रन थोड़े से, और असद शफीक का जितना ज़्यादा साथ ये टेल देगी उतना ही ज़्यादा मैच जो है मुश्किल होता जाएगा। 115 रन की लीड अभी है, अगर ये 200 से ऊपर ले जाने में कामयाब हो गए तो बड़ा अच्छा मैच हो जाएगा। जैसा मैंने आपको कल कहा था, अबरार 21 होंगे उसके बाद। अच्छा, मुझे जाना भी है क्योंकि इंटरव्यू के लिए, लेकिन आखिरी सवाल इंटरव्यू से पहले आपसे कि अब 115 रन की लीड हासिल हो चुकी है, कितने जो है रन हैं फेयर इनफ होंगे, क्योंकि आज तीसरा दिन है और काफ़ी टाइम है, अभी तकरीबन 2 दिन का खेल बाकी है। 200 रन की लीड जो है उसको तो सिंध की टीम देख ही रही होगी उसकी तरफ, और सलाहियत भी उनके पास अभी मौजूद है। टेल जो जिसको हम कह रहे हैं उसमें सुहेल खान शामिल हैं, हसन अभी साथ खेल रहे हैं उनके, तो टेल काफ़ी मुस्तनद बैटिंग कर सकती है प्रूव कर चुके हैं पहले। तो 200 रन का तो उनका टारगेट होगा कम से कम दें, और उससे जितना ज़्यादा होता जाएगा सेंट्रल पंजाब के लिए मैच मुश्किल होता जाएगा, आसान नहीं होगा। ऑलराइट, मैच मुश्किल होगा क्योंकि अभी बहुत खेल अभी बाकी है। मीर हमज़ा भी बैटिंग की सलाहियत रखते हैं, हमने देखा गुज़िश्ता चंद मैचेस में मीर हमज़ा ने अपने बैटिंग से भी बड़ा परफॉर्म किया। लेकिन साथ साथ हम बात कर रहे हैं हिकमत अमली की, स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। जिस तरह सेंट्रल पंजाब ने इस मैच में अब तक डोमिनेट किया, और स्ट्रेटजी को बताने के लिए इस मैच में जो इस तरह से जिस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरी है, उसको बताने के लिए अब्दुल रज़ाक मेरे फेलो एंकर अली यूनुस के साथ इस वक्त मौजूद हैं। सो ओवर टू अली यूनुस। रज़ी भाई, सबसे पहले आपके एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। बहुत कूल एंड काम एटमॉस्फेयर है आपके कैंप का, बहुत क्रेडिट जाता है आपको, हमारे फ़रद को, अकरम रज़ा भाई को। नहीं, हमने शुरू में ये रखा है, और अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, हमने अपनी टीम को उठा के रखना है, ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा रखना है, कॉन्फिडेंस देना, ये हमारी जॉब है, और मैं समझता हूँ ये प्लेयर्स के लिए बड़ा अच्छा होता है। एज अ बैटर और एज अ बॉलर आप क्या एडवाइस करेंगे इस पिच पे, क्या करना चाहिए प्लेयर्स को? देखिए, बड़ा ज़बरदस्त पिच है, और अगर बॉलर जो सीम हिट करता है उसको मदद मिलती है, जो एफर्ट लगाता है उसको विकेट मिलती है, और जो बैट्समैन की विल पावर यहाँ शो होती है कि उसको हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है, जहाँ रिलैक्स होगा वहाँ विकेट गिर जाती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त पिच बनाई गई है। 115 रन की लीड है सिंध की, आप क्या चाहेंगे कितने तक इनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए? देखिए, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से 170-75 जो है ना वो बड़ा अच्छा होगा। अगर हम चेज़ करते हैं, कोशिश करें कि विदिन 50 रन इनको आउट किया जाए। और कौन से 2 की मेंबर्स देख रहे हैं आप आज के दिन में कि आपकी तरफ से परफॉर्म करेंगे? देखिए, आबिद अली बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और रिजवान से मुझे भी एक्सपेक्टेशन है, और जो है हमारा डोगर है, इमरान डोगर, वो भी ज़बरदस्त है।
तो मुझे उम्मीद है कि अगर ये करेंगे तो बड़ा अच्छा परफॉर्म होगा। राइट, थैंक यू सो मच रज़ाक भाई, ऑल द बेस्ट फॉर द डे। थैंक यू सर, थैंक यू। जी नाज़रीन, सुना आपने अब्दुल रज़ाक साहब को अपने हिकमत अमली के हवाले से, अपनी स्ट्रेटजी के हवाले से और जिस तरह से अब तक का ये मैच आगे बढ़ा है। थोड़ा सा मैच को मज़ीद डिस्कस करते हैं। आबिद अली ने जो इनिंग खेली कल, वो बदकिस्मत रहे, नर्वस 90s का शिकार हुए और हमने बांग्लादेश में भी देखा कि वो नर्वस 90s का शिकार हुए और यहाँ भी हमने देखा कि नर्वस 90s का शिकार हुए। 187 रन किए सेंट्रल पंजाब ने और उसमें से आबिद अली ने 98 रन की इनिंग खेली। क्या कहेंगे आबिद अली की इस मैराथन इनिंग के हवाले से, क्योंकि आबिद अली की इनिंग ने बड़ा वाइटल इसमें डिफरेंस डाला है। जी हाँ, जब 155 रन पे सिंध आउट हुई थी तो लग रहा था कि रन्स कम है। अगर आबिद अली की वो इनिंग उसमें से हटा दे तो सेंट्रल पंजाब जो है वो इस वक्त मैच में होती ही नहीं, ख़त्म हो गया था उनका मैच तकरीबन। तो लेकिन ज़ाहिर है टेस्ट प्लेयर है, बहुत एक्सपीरियंस है, अभी खेल के भी आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनसे तवक्को तो यही थी कि वो यही करेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। बहुत शानदार, बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने। और साथ साथ हम बात कर रहे हैं कि आज के दिन पिच कैसा बिहेव करेगी, क्योंकि आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशल है दोनों टीमों के लिए। 115 रन की बर्तरी इस वक्त हासिल है यहाँ पे सिंध की टीम को और 200 प्लस या 250 की जो लीड है वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आज के दिन पिच कैसा बिहेव करेगी ये जानने के लिए चलते हैं हमारे पिच एनालिस्ट शाह फैसल की जानिब। क़ायद आज़म ट्रॉफी का इस साल ये चौथा मैच है इस वेन्यू पर और तमाम ही मैचों में जो तीसरा दिन होता है मैच का वो बैटिंग के लिए ज़्यादा साजगार होता है। ये हमने देखा है पिछले मैचेस में। इस पिच का भी अगर बगौर जायज़ा लिया जाए तो जो मॉइस्चर था वो काफ़ी हद तक सूख चुका है। ये पिच काफ़ी ड्राई है और ये पहले दिन भी बाकी पिचों की निस्बत ज़्यादा ड्राई थी, इसलिए नज़र रखनी होगी जो इनवेरिएबल बाउंस है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये क्रैक बिल्कुल मेरे सामने है और अगर थोड़ा सा आगे जाकर दिखाएँ तो यहाँ पे भी एक क्रैक है। और जो सिंध की दूसरी इनिंग्स का पहला ओवर था, जो चौथी बॉल तकरीबन यहाँ पिच हुई और बिल्कुल ज़मीन के साथ ही वो नीचे निकल गई। तो बैट्समैनों को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा और खेल की सिचुएशन का जो प्रेशर है वो अलग है। पहले घंटे का खेल इस चीज़ को डिटरमिन करेगा कि इस मैच में कौन सी टीम बर्तरी हासिल कर सकती है। आपने सुना शाह फैसल को पिच रिपोर्ट के साथ कि आज के दिन पिच है कैसा बिहेव करेगी। और जिस तरह अमर भी बात कर रहे थे कि तीसरा दिन है, इंपॉर्टेंट दिन है, पिच का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अमर, आज जिस तरह हमने 7 को देखा, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की, मोहम्मद अली ने पहली इनिंग में 3-3 और 7 ने विकेटें हासिल की, दोनों ने मिलकर, फिर अब यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तमाम बॉलर। तो क्या किसी एक बॉलर को ज़्यादा पिच ये फेवर करेगी, आप समझते हैं कंट्रीब्यूट करते हुए सिंध को स्ट्रगल करनी पड़ेगी? देखिए, इनके बॉलर्स तजुर्बेकार हैं, वक्कास है। मोहम्मद अली के बारे में मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि हमेशा जो है वो मेहनत करते रहते हैं, बड़े इंथुसियास्टिक, तेज़ भागेंगे, बॉल करेंगे, मेहनत से बॉल करते हैं। तो उनकी बॉलिंग का स्पेल देखने में बड़ा मज़ा आता है, हमेशा विकेट लेने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ये है कि स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़ा सा लैग कर रही है सेंट्रल पंजाब। एक ऐसा एडवांटेज जो कि सिंध के पास मौजूद है अबरार की शक्ल में। लेकिन अहमद शफी अब्दुल्ला हैं उनके पास, प्रूवन प्लेयर हैं। जी हाँ, लेकिन वो फिंगर स्पिनर हैं, बहुत ज़्यादा परचेस उनको अभी तक नहीं मिली है। हो सकता है कि आगे जाके कुछ उनका रोल हो, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है कि यहाँ पे फिंगर स्पिनर का कोई बहुत ज़्यादा रोल हो। लेकिन अबरार जैसे कि रिस्ट स्पिनर ज़्यादा वो इफेक्टिव होगा यहाँ पे। लेकिन अहमद, अभी तक हमने देखा है कि जो गेंदें शॉर्ट हो रही हैं वो बैट्समैन बड़ी इजीली जो इसको फेस करने में कामयाब हो रहे हैं। आगे जो गेंद कर रही है, जिस तरह साथ जिस स्ट्रेटजी के साथ गेंद कर रहे हैं वो बड़ी ज़बरदस्त है। आगे जब ड्राइव खिलाने जाते हैं वहाँ पे बैट्समैन को काफ़ी मुश्किल हो रही है। जी हाँ, हमेशा की तरह जैसे जितने भी आप यहाँ मैच देखें हैं तमाम मैचों में ये हुआ है कि ख़ास लेंथ है जहाँ पे बैट्समैन परेशान होता है और वो लेंथ जो है उसको तंग करती है। ज़रा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ, बहुत टाइम मिल रहा है यहाँ पे बैट्समैनों को और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी से कल असद शफीक ने बैटिंग की है और बाकी तमाम सिंध के बैट्समैनों में वाज़े स्ट्रेटजी ये नज़र आ रही थी कि कोई भी बॉल शॉर्ट है उसको पूरी तरह से उसका फ़ायदा उठाना है। ऑलराइट, जो भी शॉर्ट बॉल होती है उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से कल खेला है असद शफीक ने। खुर्रम भी बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन एक बाहर जाती हुई गेंद को खेलने की कोशिश में वो आउट हुए। लेकिन मैच, जिस तरह हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे अपने क्रिकेट एनालिस्ट अहमद सईद के साथ, कि मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। 115 रन की अभी लीड है यहाँ पे सिंध की टीम की, 2 दिन का खेल अभी बाकी है। मैच का क्या मिजाज होगा, क्या मूड होगा, किस करवट ये मैच जाएगा, ये सब आपको लाइव एक्शन के जरिए पता चलेगा। और आज के दिन के लाइव एक्शन के लिए हम आपको लेकर चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की जानिब। State Bank Sports Complex for Day 3, Round 9 game between Central Punjab and Sindh. A day that promises to be a very exciting one, where Sindh will start their inning from 147 for the loss of 5 wickets. They lead by 115 runs. They would like to make the most of this situation and build on that lead, as we heard it from our experts, that they would like to get at least
200 to make a game out of this. I've got my fellow commentator Shah Faisal alongside me. A very exciting, a very thrilling day, Shah Faisal. Absolutely, Ali Yunus, and very warm welcome to all the viewers. Yeah, it promises to be a very entertaining day. That has been the case throughout this match and the previous rounds that we covered here. Cricket of the highest order, and the contest is tantalizing, and you would be a very brave man to call this game the way it stands right now at the beginning of day 3. This man will hold the key. How well he has played, Asad Shafiq. 56 not out at the moment, and he holds the key for Sindh from here on if they want to make a match out of the situation, because 115 runs might not be enough. They would like to build lead on it and look to get to that 200 mark, 230 runs we've been talking about since yesterday. It's not going to be an easy task, as Muhammad Ali is ready to start off the proceedings for the day. Right on the money to start off the day by Muhammad Ali. He's bowled really well. Yesterday, the ball that took the wicket of Quaid Azam, I think that was a great setup cricket. We talk about how to get wickets on a pitch like this. He's done it brilliantly. Yeah, that was great passage of play. He really bowled a hostile spell to Quaid Azam and really shook him up, and then finally got the wicket. So he has been clearly the best fast bowler of this championship so far, and the leading wicket taker as well. Length we've been talking about on a pitch like this is very important, and our pitch expert have been saying it again and again, which areas to bowl the ball most deliveries. It's going to be a very interesting passage of the play this first hour. It's always crucial for the batters. Right, the batters have to start all over again. Asad Shafiq 56, but today is a new day. The bowlers are fresh, and they will really give it their all in that first hour, and that's where the advantage can be wrestled by either team. That came in. So first run for Asad Shafiq and Sindh. The lead now 116 runs. It'll be crucial how Mohammad Hassan will play. And if you look at day 3, the average scores in this season's Quaid Azam Trophy, 288 runs and 9 wickets. The run rate pretty high as well, highest than all the days. That's why we call it the third day is the batting day. Will it be the same today? We have to wait and see. 288 runs, 9 wickets shows the quality of the pitch, that it has something for everyone. If you bend in hard, bowl in the right areas, wickets will come too. And if you choose the right ball to hit, runs are available. Oh, nicely clipped. This will run away for. This is an excellent start by Mohammad Hassan to get going for himself and Sindh. A boundary to start off the day for him. Hassan is a very busy cricketer. He will put the bad balls away. A leg stump half volley. Muhammad Ali straying on to his pads. Neatly clipped. Timing and placement was superb. Waqas Maqsood couldn't get around. Good start for Sindh. Hassan's role, like I said, will be very important, because, like I said, he's busy and he'll keep the scoreboard moving. And with every run of such vital importance, his contribution, and if he can stay on the wicket for an hour or so, he will definitely make a telling contribution. Dangerous man. This is better. Good cricket by Hassan. He got a boundary in the last game, and this ball was outside the off stump. He was happy to let it go. This is good cricket by him. You got to choose your deliveries to hit runs. It is very important on day 3 also. With the batting is easy, but still you got to find your deliveries. You got to pick the deliveries to get score off. Another factor for Hassan will be because he's looking over his shoulder. We saw Sarfraz training yesterday. He will definitely be available for the next round. And he's the man that he's likely going to be replaced by him. It's a good opportunity too. At a time when a team needs a partnership,
If he can score some runs and be there with Asad Shafiq and get his team to a respectable total, that will come very handy. End of the first over by Mohammad Ali. That's how the scorecard looks like at the moment. Some very ordinary shots. Khurram Manzoor tops the list in playing that ordinary shots. He scored 23 runs. Ehsan Ali was very lucky to be run out of 4. Umair bin Yusuf, another very ordinary shot. He scored 32 runs. Saad Khan was unlucky. It was a brilliant delivery by Fahim Ashraf. He could only manage 3 runs. Fawad Alam, another poor shot, 13 runs. It's that man, Asad Shafiq, 57 not out, who holds the key for Sindh alongside Mohammad Hassan, who's on 10. Bowling pretty good. The wickets shared around. Fahim Ashraf, Muhammad Ali, Saad and Ahmed Safi Abdullah sharing 1 wicket each. The lead 120, and we're going to see Fahim Ashraf take up the proceeding from the other end. 2 slips and a gully. Point, cover and mid-off. Fahim has looked in good rhythm. 1 for 37 so far in the second innings. Yeah, without many wickets, Fahim Ashraf has looked good, has run in well, but has not got many wickets. Just 1 in the first inning, 1 in this inning. He'd like to create an impact here. He's up against a very experienced Asad Shafiq, who knows how to bat with the tail. He's been around with Pakistan team at number 6, the highest run getter at that number. He would know how to build that inning and take that lead. 120 at the moment, maybe 100 more runs. Definitely 100 more runs will put Sindh in the box seat, in my opinion. And like you said many times, Asad Shafiq's contribution will be the key, but he had to get started first. He can do that by getting his eye in. He's got a couple of good sighters from Fahim Ashraf. He's got a little bit of movement, but the line is not right just yet. And Asad Shafiq can get his eye in, get his feet moving. And if the run scoring opportunity comes, we know that he can put them away as well. Talking about run scoring, it's very important that his intent should be very positive. That is what he did yesterday when he came to bat. He was ready to get runs right from the word go. He was looking to get runs. This is good cricket. You can let off of these deliveries that are outside the off stump, but any delivery that is in his range, that must be put away. When you leave well, you make the bowler to bowl at you, and that's where you can pick him off for runs. And so far, a bit of a loosener there from Fahim Ashraf. All these 3 deliveries quite wide, not tempting Asad Shafiq. Skipper will be expecting him to make Asad Shafiq play at least. This is better, within the lines. This is what you expect from a seasoned campaigner like Fahim Ashraf. He's a permanent member of Pakistan's test side, and he'd like to create an impact for Central here too. You make a good point. This is the time to make a telling contribution for his team with the ball. Like I said, he's the most experienced in terms of the level of cricket he's played for Pakistan. He should be leading this attack. Nice, this is better. Right where we've been talking about. Make him play. As a bowler, this is the best you can do early on, because we've seen wickets falling in this first hour or so throughout this tournament, especially here at State Bank Stadium. It's not easy for the batters. You cannot take this inning for granted. You've got to keep fighting. That should be the plan from Sindh. Keep fighting. This first session is very, very important. If Sindh can bat through the session, they will give themselves a very, very good chance. Absolutely. I think if they can get to that 230 mark. Oh, that's in the air. Lucky he didn't go that far towards Waqas Maqsood. He was in business. That's what happens when you make him play early doors. Asad Shafiq losing his balance, was playing around it, almost the leading edge, carried to mid-on.
Made in from Fahim Ashraf, 152 for 5. Muhammad Ali will continue bowling. 29 wickets for him in this season so far. I think to me, he's been the pick of the bowlers. He's been right there like a workhorse. Comes in, bowls those hard deliveries, bowls with good pace. Even at the third session also, he bowls with the same intention and same pace. And that is what you want to see as a captain from your fast bowler. Wonderful bowler. Yeah, he caught the eye at the Gaddafi Stadium, where the pitches were docile, but he ran in, troubled the batters with his very good bouncers. But here, when the pitches have offered help, he's really come to the fore and picked up the wickets as well that he deserved. Absolutely, I think conditions is not bothered about. Got wickets at Faisalabad, got wickets here, got wickets at National Bank, got wicket at UPL. Oh, you got to be careful with that. You already have one run out in your inning. You don't want another one. We earlier saw Ahsan Ali lost his wicket through a run out. This is a crucial part. You don't want to be just gifting your wicket away to the opponents. Got to be very careful. Keepers are busy cricketers, and that's another of their trait. As soon as they hit the ball, he was off for a run. But that's a Shafiq. Took control, made a good call. Got to be careful when running with Hassan. Yeah, you got to be careful because we know Hassan can, after playing the shot, can take a few steps and then decide if he has to take a run or you have to make the non-striker wait. And that is what we saw earlier when Khurram Manzoor took so much time to call it waits for Ahsan Ali. He followed up so much that he couldn't go back. Unlucky for Ahsan Ali. Yeah, that was a complete disaster. Talking about that Ahsan Ali run out, Khurram Manzoor first was guilty of ball watching, and then when Ahsan did come halfway, he just turned his back on him. Sold him down the river. Absolutely. I think being openers, they've been together for this season, whole season. You got to understand how each other run, what are the capabilities, what is the sprint like, and if you can have we'll have a look at it again. The run out of Ahsan Ali. He backed off so much that couldn't come back. It was a marginal decision. Went in favor of the bowling side. Have a look at that steps again. He took 3 steps before he said no or wait. He was actually saying no whilst he was advancing himself. Coming at you and saying no, no, no. Have a look at this. Look at Ahsan Ali and look at Khurram Manzoor. He's ball watching and he's backed off so much and just said no. Feel for that youngster. Yeah, but Ahsan Ali's technique was poor too. He didn't drag his bat, didn't stretch too much. A dive would easily have saved him. Not enough commitment for me. Should learn from Rizwan how to dive, how to slide. He loves doing those. Every game we see Mohammad Rizwan play for Pakistan, we see a few dives and slides. Even yesterday. It's noticeable whenever he calls for 2, he's prepared for a dive because he thinks it's tight and only the dive will save him. So that is a regular feature, like you said. In every one of his innings, you'll find that he eventually has to dive to complete that second run. Runs.
Will run away for 4. This is good batting by Mohammad Hassan. Poor line by Mohammad Ali. Just tucked away towards leg stand. 4 runs for Hassan and Sindh. Second boundary that Ali has conceded on the onside. Once again, guilty of bowling 2 straight. Hassan working it away very neatly. Very fine. Once again for Waqas Maqsood. It's a short boundary. Important runs being added. Central got to be very careful. They got to be very cautious with that runs. The lead is now 124 runs at the moment. They don't want to be conceding too many runs on this pitch. They are to bat 4th, and we know what Sindh are capable of. Sohail Khan, Mir Hamza, Ibrar Ahmed, Tabish Khan, they're a formidable bowling side. You don't want to be chasing too much. Solid as a rock, Asad Shafiq. His role was different yesterday. We saw when he came to bat, he was free, fluent, he was playing his strokes. Today, it's different. I think the roles have changed. It's Hassan's role to go after the bowling and get scores. Hassan will always play positively. That's his nature. Could really help out here Asad Shafiq, because then Asad Shafiq can get his time, get settled at the crease. He can always make up for the lost time. Because Asad is really in good form, but like we said, it's a new day. He has to get in again. And if Hassan keeps moving the scoreboard along, that will be very good for Sindh. Absolutely. It's all about the roles. Asad Shafiq can take his time. There's a lot of time left in the game. The lead is 124 runs. This is the first session of the 3rd day. The time is not a problem. Runs is, how many runs can Sindh do from here on? That's the question. Oh, that's a brilliant delivery. Wonderful delivery by Fahim Ashraf. Probably the first time that we have seen him today ball in the right areas and the channel. Yeah, he got gradually closer to those good areas. It took him a while, but that was a beauty. Asad Shafiq had to come on to that front foot. Well, he didn't really, but he misjudged the length, and in the end he was just poking at it. Lucky he didn't get an edge. And we've seen that, Shah Faisal, that the length has shortened as the day have progressed. This is the 3rd day. The pitch gets hard, so the length changes with every day. Spot on. Perfect. Because a delivery that would be a very, very good length for the bowlers on day 1 certainly becomes a good day for the batters. If we have a very close look at the pitch, very dry. This has been the driest of all the pitches that we played here this season, the 4th one. And there are some cracks as we look at it towards the right of your screen. We saw a few balls misbehave from those cracks. And the longer the game goes, the Sindh inning goes, the batting in 4th innings will become difficult. And that invariable bounce. We saw that on the first day even. The ball keeping low. That's not a good sign when you have to bat 4th on a pitch like this. Any runs can be difficult. Spot on, because bowling first is definitely an advantage. The away team takes that opportunity because they don't contest the toss and decide to bowl. But then the home side gets an opportunity to bowl last on the pitch. And if they can take the game that long, as we see this ball from Waqas Maqsood, shoot it along the ground. Absolutely, that invariable bounce we were talking about. And this one is edged. This is live. This is 4 runs for Asad Shafiq to get him going on day 3. 47 overs gone, 160 for 5 Sindh. Fahim Ashraf gradually getting closer to the perfect areas for day 3. He got the edge eventually. And that just rolled along the turf once again. Didn't carry. Asad Shafiq will take the boundary. Runs for Sindh, no matter how they come. 160 for 5. 3 boundaries since morning. That's another very exciting game going on. 238 runs made by Southern Punjab. A wonderful 100 by Salman Ali Agha. And have a look at the reply.
453 runs for 9. The lead by 215. Northern Faizan Riaz getting a huge 100 alongside Umar Amin getting a big 100 too. 158 to his name. Ali Usman getting 4 wickets. Ilyas also getting 2. What a game. And that result, Shah Faisal, if Northern beats Southern Punjab, that looks certain. That will make that points table very exciting. Because KP is in the game, Sindh is in the game, Central is in the game. Very interesting points table. Very, very tight. Absolutely spot on. And if Northern wins that game, they'll give themselves a wonderful chance to get to the final, because they'll be playing Balochistan here in the next round. And Balochistan languishing at the foot of the table. Struggle to stop the juggernaut of Northern. Because Northern has hit form just at the right time. They are peaking at the right time. That induction of Haris Rauf and Haider Ali really catapulted them into something really good, because that match, once they won that and they won another round, and they're on top in this round as well. Spot on. That inning of Haider Ali, Haris Rauf's wicket, and now the inclusion of the captain coming back, Noman Ali, taking 6 wickets also. It's very exciting, that Northern side. Oh, playing a miss. This is better. Muhammad Ali, just after he delivered, probably not feeling 100% with his shoulder. Have a look at that. Yeah, he didn't complete his follow through like he normally does. Have to keep an eye on that. But the shot from Hassan, he's going to play like that. He would have to ride his luck, because I think that's the only way he knows how to play. You can afford that from one side. Because Asad looks solid. He will look to bat through. It's important that his partner keeps on looking for runs. It seems fair enough at this stage with Asad being there. And if Hassan's aggressive intent does pay off, then Sindh will be in better position. And this is, like I said, Hassan's strength as well. If you put the pressure right back on the bowlers, there's not a lot of margin for error for the bowlers. This tactic can really work well. But if it doesn't come off, he'll have to be brave enough to face the criticism. 250 already to his name in this tournament. This is driven nicely, but straight to the man. Shot was there to be offered. Could not quite find the gap. Talking about Muhammad Ali being the leading wicket taker this year. Muhammad Ali with 29 wickets is the leading fast bowler. Sohail Khan 26, Mir Hamza 25. These 3 of them are in action here. Samin Gul with 21 and Taj Wali with 19 makes the rear of the top 5 fast bowlers. Taj Wali getting 11 in the match. Wonderful list of the fast bowlers. And how proud Muhammad Ali is. A youngster topping the list, where Sohail Khan, Mir Hamza, Sabeen Gul, all established fast bowlers. It's heartening to see a youngster topping that list. 48 overs gone, 160 for 5 Sindh. We were talking about the points, that if Northern can win that game, and they're already at the top of the order. That is after 2 days of this game. 109 points to their name. KP at number 2 with 108. Sindh with 105 at 3. Central with 103 at 4th. It doesn't get any closer than that. Very crucial match. Yeah, absolutely. Very, very tight, this points table. Between the top 4, anyone can get to the final. So with only 7 playing days remaining in the Quaid Azam Trophy, the round stages,
it's anyone's game in the first 4. Even Southern Punjab, you cannot discount them because they still got 1 game after this. Yeah, but they'll have to wait for others' decision. Lots of ifs and buts for them. Balochistan can be a party spoiler for Northern in the last game. Runs. They should like to get 2. Just played in the gap with soft hands by Asad Shafiq. Will earn him 2 runs. Very steady start there for Sindh this morning, and they would really like it. But talking about that points table, for once, I just cannot figure out who's going into that final. It's that tight. I mean, one good session, one good spell of bowling can really change the entire season for a team at this stage. It is that close. And the competition has been superb. Runs again. He should look to get 2. No, it's done well. Ali Zurab doing the fielding, gets Quaid leg. And since the time it has moved to Karachi, it has all changed. In Punjab leg, it was dull. But since the time it has come to Karachi, it has flared up. The action has been non-stop here. Every session of play, every hour. And not just here at the State Bank Sports Complex. All other 3 venues, the UBL and the National Bank, all these venues have produced some scintillating cricket, and that's the result where we see that much congestion at the top of that table. And very surprisingly, Faisal, just 1 result in Punjab leg and just 1 draw here at Karachi leg. Look at the difference. Southern, who were at the top in Punjab leg after that finished, after the 5 round games. And look at, they're nowhere close to that first position now. That has been the quality of the pitches, the conditions here in Karachi. Wonderfully managed, wonderfully done. Just love it here. Absolutely, it's been an absolute fun to call action from this leg. No timing. Mohammad Hassan is on 14. It's a crucial partnership. As we say, not just for the game, but for the championship. If they can get along, get to that 250, till 250, this partnership, and Sindh go on to win this game, Northern winning, KP also in the contention, it's going to get very interesting for the last game. And when we talk about this much tension on the top of the table, as we watch Hassan looking for another single, not there. Overthrows, maybe? No. Good work by Saif Badr. It puts extra pressure on the teams as well. The batters and the bowlers will know this situation. The coaches will know that situation. Come back to it after this. 163 for 5. We see intensity in the field. We saw that from Central Punjab yesterday. So the battle is very, very intense because that pressure of getting up to that top 2 slots in the points table has really got to players because coaches are really pushing them hard. Talking about the pressure, and it is just the right time for the big players to be coming back. We saw Abid Ali coming back for Central, Fahim Ashraf coming back for them, Fawad Alam coming back for Sindh, Noman Ali for Northern, Naseem Shah Abbas for Southern Punjab, for KP also, Kamran Ghulam coming back, Sajid Khan also. It's a good sign that they've come back at the right time. Yeah, and these big stars have really made impact here. Noman got a 5 for Abid Ali here, playing the best innings of the game so far for his team. Abbas and Naseem Shah has struggled, but I'm sure they still have something to say before this round stages are finished. So yeah, big names coming with big performances, and it can only get the competition more entertaining and more interesting. Only I wish
Naseem Shah and Abbas had come back in the previous game for Southern. On the last day, when they were to defend a good total against KP, if they had the services of Naseem Shah and Abbas on that day, it would have made a lot of difference for Southern Punjab. On this pitch, Abbas would have been a handful any day. Whether it be a first day or fourth day, Abbas would really have challenged the batters. But one game too late for Southern Punjab's liking. How well Asad Shafiq has played. All his experience, all his hard work, all these years into the game. What a time to get runs for Sindh. 64 at the moment. He was short of runs in this tournament. He played a wonderful inning against KP at the similar sort of situation. He's doing it again for Sindh. Wonderful man, wonderful player, wonderful performer. Asad Shafiq. What a time to get runs. Always there for the team. We've seen a different Asad Shafiq since morning. He's been cautious, he's been careful, he's been solid, he's been temperamentally very good, unlike he was the last evening. Yesterday he came out as if he was in a hurry. But then that second half of his innings, yesterday even, he got settled down and he looked in much more control. I mean, the strokes were there from the beginning, but in the first part he looked a bit hasty. But then he found his rhythm. He was unflustered and has began in the same way in the morning. Square leg has been pushed back in front of square. Probably some short pitch stuff is coming. 2 men out on the hook shot. Oh, I wanted a run. You don't want to be running on Saif Badar's arm. He's a wonderful fielder, especially inside the circle. He's very quick. That partnership Asad Shafiq had with Umair bin Yusuf yesterday, when they were together looking to get runs, they were both very positive. But then Umair bin Yusuf lost his wicket. I think that was the saddest part, the way he got out. A wonderful catch by Waqas though, but still there was no need of that shot at that point. Same goes with Fawad Alam. He was excellent, brilliantly set up by Mohammad Ali. He can let it go. That's the end of the 50th over for Central Punjab. Sindh has scored 163 runs for the loss of 5 wickets. उसमें से बाहर ये गेंद उसको निकालना चाहते थे पॉइंट रीजन पे, लेकिन फील्डर वहां पे सैफ बदर मौजूद। 131 रन की बरतरी। अब तक के खेल में 16 रन स्कोर किए इन दोनों बैट्समैन ने। हैमर सईद हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम हैमर। शुक्रिया अली सलमान और तमाम नाजरीन को खुशामदीद। हसन अली बड़ी अच्छी सपोर्ट फराम कर रहे हैं। आज जब खेल का आगाज़ हुआ तो हसन अली 7 रन से साथ क्रीज पे मौजूद थे और अब तक इस पार्टनरशिप में दोनों ने बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप यहाँ पे फराहम की सिंध की टीम को। मोहतात अंदाज से इब्तिदा की आज दिन की और इसी की ज़रूरत भी थी
कि पहला घंटा हम सब जानते हैं और देख चुके हैं पहले, थोड़ा सा बॉलर्स को मदद करता है। शॉर्ट बॉल की थी और बड़े जबरदस्त तरीके से इसको पुल करने में कामयाब हुए। फील्डर गेंद के पीछे, गेंद के साथ रेस लगाते हुए इससे पहले गेंद तक पहुंचेंगे 2 रन का इजाफा। हसन अली अब ज्यादा बेहतर एतमाद के साथ बैटिंग कर रहे हैं। इससे एक गेंद पहले इसी जगह से तकरीबन फील्डर को मजीद अंदर की तरफ किया था फाइन लेग पोजीशन पर, और हसन अली तैयार थे इस शॉर्ट पिच के लिए। वैल्यूएबल, एक रन की बड़ी अहमियत है अमर। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरह मैच अब हो गया है, जिस पोजीशन में आ गया है, और जैसे हमने सुबह भी आपसे बात की थी, 200 रन की लीड जो है कोई आसान नहीं होगी सेंट्रल पंजाब के लिए चेस करना। तो जाहिर है हर रन अहम, और दोनों टीमों की कोशिश कि अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करें आज तीसरे दिन के इब्तिदा में। बहुत ही खूबसूरत फ्रंट फुट पे खेले और 1 रन का इजाफा। तो बस शफीक को भी काफ़ी एतमाद हो गया होगा हसन पर। ये बढ़तरी आहिस्ता आहिस्ता 134 रन तक पहुंच चुकी है, और कल भी मैं बात कर रहा था अमर के 200 प्लस 225 बड़ी वाइटल होगी, क्योंकि सिंध की जो बॉलिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आबिद अली और फिर सिंध के दरमियान ये मैच मोस्ट प्रॉब्ली होगा, क्योंकि स्ट्रोक प्ले ने ज़्यादा, अगर आप रिजवान की बात करते हैं स्ट्रोक प्ले का मुजाहरा करते हैं, डोगर की बात करें स्ट्रोक प्ले करते हैं, आबिद अली एक ऐसा बैट्समैन है कि जो आहिस्ता आहिस्ता 1 और 2 के जरिए अपनी इनिंग को आगे बढ़ाते हैं। तो बड़ा ये इंटरेस्टिंग ये मैच होने जा रहा है। बिल्कुल आबिद अली का आपने जिक्र किया, और बिल्कुल ठीक आपने ये तज्जिया किया है कि आखिरी इनिंग में मैच खासा सिंध और आबिद अली के दरमियान होगा, क्योंकि वो एक सुतून की तरह पहली इनिंग में भी जैसा हमने देखा, और बहुत ही इस विकेट के हिसाब से उन्होंने बैटिंग की है। जिन बॉलों को छोड़ना लाजमी था उसको उन्होंने बिल्कुल छेड़ने की कोशिश नहीं की, अपने एरियाज़ बनाए, और उन एरियाज़ में जहां वो स्ट्रॉन्ग हैं और जहां उन्होंने सोचा हुआ था कि रन बनाने, वहीं पे अटैक किया बॉलर्स को। बहुत ही उम्दा इनिंग पहली इनिंग में खेली है उन्होंने। अच्छी गेंद थी, सरप्राइज किया असद शफीक को। असद शफीक पूरी तरह काम, कंपोज, फोकस। 64 रन की इनिंग खेली असद शफीक ने। फवाद आलम की आमद के बाद से क़यादत असद शफीक से लेकर फवाद आलम को दी गई, और सरफराज अहमद अब चूँकि नेशनल ड्यूटी से वापस आ चुके हैं, और कल भी हमने उनको टीम के साथ देखा और आज भी हमें ग्राउंड में नज़र आए। ये सरफराज अहमद हैं, जिनके साथ हसन मोहसिन, एहसान अली और ताहा मौजूद। गुफ्तगू करते हुए अपने यंगस्टर के साथ, एक अच्छी चीज़ है कि आप यंगस्टर के साथ टाइम लगाते हैं, उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। मजीद 1 रन का स्कोर में इजाफा हो जाएगा। ये एक रन जो है बड़े वाइटल साबित होंगे, इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ओवर मुकम्मल हुआ 167 पे 5। स्कोरर्स बहुत ही अहम हिस्सा मैच का, और ये बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं ये, और बहुत ही एफिशिएंट दोनों कराची के अंपायर, सॉरी स्कोरर्स। सरफराज का आपने जिक्र किया, डगआउट में नज़र आ रहे थे, बहुत ही अहम किरदार। किसी भी टीम में अगर इतना सीनियर खिलाड़ी और इतना मजा हुआ खिलाड़ी जो है, वो सिर्फ उसकी डगआउट में और टीम के साथ शमूलियत ही जो है वो आपको एक बूस्ट दे सकती है नए खिलाड़ियों को, और जाहिर है कि उनका तजुर्बा और जो हिकमत अमली में वो मदद कर सकते हैं। तो एहसान अली के साथ मैं वे गुफ्तगू हैं, और एहसान अली कल जिस अंदाज से आउट हुए, यकीनन काफ़ी मायूस होंगे अपने उस रन आउट से। जिस तरह हम प्री मैच में बात भी कर रहे थे कि अगर वो डाइव कर जाते तो शायद उनका सर्वाइवल हो जाता, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर एहसान अली जो 4 रन बनाने के बाद रन आउट हुए, तो फिर भी जो है हम समझते हैं कि थोड़ा सा जो है वो लाइन्स बिल्कुल करीब पहुँचे हुए थे क्रीज में।
लेकिन बहरहाल अंपायर का फैसला हतमी और आखिरी, जिसको खुशदिली के साथ कबूल करना चाहिए हर स्पोर्ट्समैन को। असद शफीक बहरहाल क्रीज पे मौजूद हैं, जहां एक इस्तेकामत फराम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रही है सिंध की टीम, और उसमें इस पेयर का बड़ा हाथ है। एहसान अली मौजूद हैं दरमियान में, उनके साथ सरफराज और एहसान दोनों ही अगले PSL में क्वेटा ग्लैडिएटर्स के स्क्वाड में शामिल हैं। काफी ऑफिसर से बाहर ये गेंद थी, 7 की एक दफा फिर गेंद दी है और आखिर तक गेंद पे निगाह रखते हुए गेंद को कवर करते हुए लेफ्ट किया असद ने। नई हिकमत अमली अपनाई है असद शफीक ने उनको। अगर आपको याद हो तो पिछली इनिंग में बोल्ड किया था असद शफीक को, साध नहीं, कदमों का इस्तेमाल ना कर पाए, खड़े खड़े बॉल को खेल गए थे, उस स्विंग होके अंदर आई और कैप बन गया बैटर पैड का। असद एक 65 रन के साथ मौजूद हैं, 56 रन के साथ आज के खेल का आगाज़ किया था असद ने, और जब बढ़तरी थी सिंध की वो 115 रन की थी। इस तरह 20 रन अब तक के खेल में स्कोर किए गए और काफ़ी एतमाद के साथ दोनों बैट्समैन जो हैं वो बॉलर्स का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल, जहां कल इन्होंने छोड़ा था दिन के इख्तिताम पर, वहीं से दोबारा शुरू किया है। बहुत अच्छी बैटिंग दोनों ने आखिरी सेशन में कल सिंध की तरफ से पॉजिटिव अंदाज से जो बॉलें और जो एरियाज चूज कर रहे थे बहुत ही अच्छी थी। अच्छा स्ट्रोक खेले इस मौके पे, लेकिन रिजवान वहां पे मौजूद थे, रन बनाने का मौका नहीं मिल सका। इसी ग्राउंड पे सबसे बड़ी इंफरादी इनिंग 253 रन की खेल चुके हैं रिजवान। इस ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले एक इनिंग में बैट्समैन है रिजवान हुसैन। कल के खेल में हमने देखा था एक वाज़े हिकमत अमली सिंध की बैटिंग में नज़र आ रही थी कि शॉर्ट बॉल पे बहुत तेज़ी से उन्होंने जो है वो उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की, रन्स बनाए उस पर। रन लेना चाहते थे शफीक, मना किया असद ने। कोई अननेसेसरी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है सिंध की टीम। असद ने थोड़ी सी नाराज़गी का इजहार किया, लेकिन दुरुस्त फैसला था हसन का, क्योंकि इस मौके पे कोई भी ऐसा रन आउट इस मैच के नताइज को तब्दील कर सकता है। मजबूत दिफा असद शफीक का, दिफा अंदाज से खेले, ओवर मुकम्मल हुआ 167 पे 5। अली आपने एक रन का जिक्र किया था अभी, उन्होंने वापस उनको दिया तो एक मुझे किस्सा याद आ गया। हमारे एक विकेट कीपर पाकिस्तान से भी खेले, वो जावेद कदीर, उनका अमूमन एक बड़ा मज़े का जुमला वो कहा करते थे जब वो एक रन नहीं लेना होता था उनको, तो वो हमेशा आए कहते कि एक रन के लिए तुम्हें खतरे में थोड़ी डालूंगा मैं। वैसे रन की बात की तो रन के लिए तो जावेद निदाद के किस्से भी बड़े मशहूर हैं, जब वो कॉल करते थे। क्योंकि बड़े ज़बरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट थी जावेद निदाद की। जावेद निदाद, आसिफ इकबाल, मोइन खान, ये वो बैट्समैन हैं कि जिनकी रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी ज़बरदस्त रही है। और इसी तरह वसीम अकरम जो कॉल करते थे, जो नो करते थे, वो स्टैंड तक आवाज़ आती थी। मुझे याद है नेशनल स्टेडियम में जो इंक्लोजर होते थे तमाशाइयों के, वहां तक उनकी आवाज़ आती थी। बड़े ज़ोरदार अंदाज में नो करते थे वसीम अकरम। और यही वजह है कि 79 में जब इंडिया की टीम आई तो जावेद निदाद को टॉप ऑर्डर में भेजा गया, तेज़ी के साथ आसिफ इकबाल के साथ रन बनाने के लिए। और लॉर्ड्स का जो मशहूर ज़माना टेस्ट मैच है अहमर, जिसमें मोहसिन खान ने डबल सेंचुरी की थी, तो वहाँ भी सेकंड इनिंग में जावेद निदाद को ओपनर भेजा गया था। मुदस्सिर नज़र को
नीचे किया गया था और फिर जावेद निदाद और मोहसिन खान ने सेकंड इनिंग में इनिंग का आगाज़ किया था। रनिंग बिटवीन द विकेट की वजह से और तेज़ी के साथ रन बनाने की सलाहियत की वजह से। शॉर्ट बॉल की थी, पिछले कदमों पे उछल के खेले पॉइंट पोजीशन पे। अच्छा साथ दे रहे हैं हमारे विकेट कीपर हसन। बरतरी 136 रन की। जी हाँ, बड़ी अब तक अच्छी शिराकत और हसन बासलाहियत भी हैं और सब जानते भी हैं, बहुत तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, सब जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं बैट के साथ और तवक्कुआत उनसे खासी थी और अब ड्यू भी हो गया है मेरे ख्याल से। इस सीज़न में वक्त आ गया है कि वो अपनी टीम को बचाने के लिए एक अच्छी इनिंग खेलें। अब तक असद शफीक इस क़ायद आज़म ट्रॉफी में 4 निफ सेंचुरियाँ स्कोर कर चुके हैं। 96 रन की इनिंग खेल चुके हैं, 82 रन की इनिंग खेली इन्होंने एक मुश्किल सूरत हाल में खुर्रम मंजूर के साथ जब 176 रन की पार्टनरशिप दी थी। 83 रन की इनिंग खेली और इस वक्त 65 रन के साथ नॉट आउट हैं। आखिरी फर्स्ट क्लास उन्होंने 16 दिसंबर सन 2020 को किया था। तो अब एक और सेंचुरी डी हो गई है कि इस वक्त आज हम 14 दिसंबर में इस मैच को कवर कर रहे हैं, तो तकरीबन 1 साल हो गया है कि जब असद शफीक ने फर्स्ट क्लास में सेंचुरी की थी। थैंक यू फरहान। और अगर आज ये यहाँ सेंचुरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत ही अहम और मेरे ख्याल से उनके करियर की अच्छी सेंचुरीज में गिनी जाएगी। अब तक जिस अंदाज से खेलने किसी बॉलर ने इनको तंग नहीं किया, बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मेरिट खेलते हुए। कोचिंग मैनुअल के मुताबिक सर को झुका के फ्रंट फुट पे गेंद को बल्ले के वस्त में लाते हुए बहुत ही उम्दा अब तक बैटिंग की असद शफीक ने। एक मुश्किल सूरत हाल में क्रीज पर आए थे, फिर जिस तरह कल फवाद आलम आउट हुए उसके बाद असद शफीक का रोल मजीद बढ़ गया है। हाँ, अगर ये क्लोजअप असद शफीक का बहुत ही डिटर्मिनेशन है शक्ल पे, इरादा मजबूत लग रहा है उनका आज भी अपनी कल की इनिंग्स को उसी तरह जारी रखने का। मतलब बैठ गया, डक किया, असद शफीक ने जाने दिया, मुस्कुरा के देखा फ़हीम अशरफ की जानिब। अच्छी राइवलरी दोनों के दरमियान, दोनों टेस्ट क्रिकेटर दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। 16 इनिंग्स कबल सेंचुरी स्कोर की थी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में असद शफीक ने, और उसके बाद से अब तक करीब ज़रूर पहुँचे सेंचुरी के, सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके। इसी पिच पर, इसी ग्राउंड पर हमने कई ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंसेस देखी। रिजवान हुसैन के 253 देखे, इसके अलावा उमर सिद्दीक के 90 प्लस की इनिंग देखी, फरहान आगा के सलमान आगा के जो है 90 प्लस की इनिंग देखी, आबिद अली के 98 की इनिंग देखी, वलीद याकूब हैं और साथ साथ प्रोफेसर नासिर हुसैन। कई प्रोफेसर जो हैं वो इस वक्त अंपायरिंग में मौजूद हैं, प्रोफेसर और ऑफिशियल्स में मौजूद हैं। प्रोफेसर अनीस, प्रोफेसर नासिर हुसैन, प्रोफेसर आफ्ताब गिलानी जो भावलपुर यूनिवर्सिटी में हैं, और साथ साथ आपको याद होगा प्रोफेसर साकिब कुरैशी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये कराची यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। इसके अलावा प्रोफेसर जावेद मलिक हैं जो जिनका मुल्तान से ताल्लुक़ है। जब बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने माजूल किया था तो बहादुर शाह जफ़र से पूछा था, ओवर भी मुकम्मल हुआ, 168 है स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर। तो बहादुर शाह जफर को जब माजूल किया तो उनसे अंग्रेज़ों ने कहा था कि ये आप देख सकते हैं अब तक का बैटिंग कार्ड, 168 किए 5 विकेटों के नुकसान पे, 65 रन के साथ नॉट आउट हैं असद शफीक। 18 रन बनाकर साथ देते हुए मोहम्मद हसन, 32 रन की इनिंग खेली उमैर बिन यूसुफ ने और 23 रन बनाए खुर्रम मंजूर ने। इसके अलावा 13 रन की इनिंग फवाद आलम की जानिब से, एहसान अली 4 रन बनाकर आउट हुए। तो अब मुश्किल सूरत हाल से यहाँ टीम को निकालने की कोशिश होगी असद शफीक और मोहम्मद हसन की। 168 है स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर। तो जब बहादुर शाह जफर को माजूल किया था, इख्तिदार उनसे लिया गया था अंग्रेज़ों ने, तो उनसे पूछा था आपकी बादशाह तो नहीं रही, अब आप क्या करेंगे?
तो उन्होंने कहा मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। तो अंग्रेज़ों ने इसको जवाब दिया कि बादशाहत चली गई, हुक्मरानी की आदत नहीं गई। इसी तरह प्रोफेसर ग्राउंड में भी अथॉरिटी होते हैं, उनकी सुपरमेसी कायम होती है, उनकी एक उंगली के इशारे से जो है कोई भी ग्राउंड से बाहर जा सकता है। अमूमन कुछ और रिश्तों के लिए कहा जाता है कि उंगलियों पे सारे मामला चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अंपायर उंगलियों पे चला रहे होते हैं सारे मामला। और अच्छा साइन है कि पढ़े लिखे लोग क्रिकेट में आ रहे हैं। अच्छा स्ट्रोक के लिए डिफ्लेक्शन के बाद अनलकी रह गया, रन नहीं मिल सका। अच्छी फील्डिंग थी यहाँ पे और आबिद अली ने बड़ा अच्छा यहाँ पे अपने रिफ्लेक्सेस का मुजाहरा किया। सब कुछ था इस एक गेंद में। सैफ बदर ने पहले गेंद को रोकने की कोशिश की, डिफ्लेक्शन हुआ, आबिद अली के पास आएगी बॉल। सैफ बदर एक लाइव वायर की तरह से कल भी फील्ड में देखिए ड्राइव किया, हाफ वॉली को टाइम मारी उन्होंने और डिफ्लेक्शन सीधी आबिद अली के हाथ में गई। अच्छा कॉम्बिनेशन दोनों का। अच्छी एफर्ट थी यहाँ पर आबिद अली, जो बिल्कुल कमिट करके थे सैफ के पीछे भागने के लिए। उन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पे अपने रिफ्लेक्सेस का मुजाहरा किया। दोनों ही टीमें एक रन के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। कल दिन के इख्तिताम पर जो बॉलिंग सेंट्रल पंजाब ने की थी थोड़ा पीछे थी, शॉर्ट बॉलिंग ज़्यादा कर रहे थे, उसका भरपूर फ़ायदा भी उठाया सिंध के बैट्समैनों। ये देखिए डाइव और आबिद अली का बैकअप। अच्छी एफर्ट दोनों फील्डर्स की। अच्छे फील्डर हैं सैफ बदर, पॉइंट पे बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने फील्डिंग की है। ओवर मुकम्मल हुआ 168 पे 5। जैसा मैं कल आखिरी सेशन की बात कर रहा था, उसमें काफ़ी शॉर्ट बॉलिंग की थी, सिंध ने उसका भरपूर फ़ायदा भी उठाया। किसी भी पीछे गिरी हुई बॉल को जाने नहीं दे रहे थे कोई भी बैट्समैन। वाज़ेह हिकमत अमली नज़र आ रही थी। आज काफ़ी बेहतर एरियाज़ में तमाम बॉलर्स ने बॉलिंग की है, बैट्समैन को खिलाने की कोशिश की है, फ्रंट फुट पे लाने की कोशिश की है। पिछला ओवर हमने देखा कि इसमें थोड़ी सी शॉर्ट बॉलिंग करने की कोशिश की बैट्समैन को डिस्टर्ब करने के लिए, वरना अमूमन आज जो है वो अच्छी लेंथ पे बॉलिंग की गई है सेंट्रल पंजाब की जानिब से। असद शफीक क्रीज पे जब तक मौजूद रहेंगे ज़्यादा रन की उम्मीद रखी जाएगी। मज़ीद मैं समझता हूँ मज़ीद 100 रन जो है ज़रूर सिंध देख रही होगी, क्योंकि उसको 250 रन तक मिल जाते हैं तो ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। रन देने के लिए तैयार नहीं सेंट्रल पंजाब, और दूसरी जानिब रन चाहिए यहाँ पे सिंध को। कवर्स में फील्डर मौजूद हैं, रन नहीं मिल सकेगा अली जरियाब। और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा पिच बैटिंग के लिए आसान होती जाएगी। अमर जी हाँ बिल्कुल, कास मकसूद का ये स्पेल राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं।
अच्छा कलेक्शन था विकेट कीपर अलीशान का अपने बाएं जानिब डाइव करते हुए। बहुत जल्दी ये एक्सपेरिमेंट मेरे हिसाब से इन्होंने किया है, क्योंकि नेचुरल एंगल जो है वो उनका बाहर बॉल स्लाइड होता है, नया बॉल अंदर ज़रूर लाते हैं वो, लेकिन जूं जूं बॉल पुराना होता जाता है उनका नेचुरल एंगल है, बॉल जो है वो स्लिप्स की तरफ लेके जाते हैं वो, और वो ज़्यादा मौसर होता बजाय इसके कि राउंड द विकेट। इस मरतबा ये गेंद रोकनी चाहिए थी गली के फील्डर को। 1 रन का स्कोर में इजाफा हुआ है, रिजवान गेंद तक पहुंचे हैं। अब तक का फील्डिंग का स्टैंडर्ड काफी बेहतर रहा है सेंट्रल पंजाब का, लेकिन बिल्कुल हाथ के करीब से होती हुई गेंद गई है ये। रिजवान इस 1 रन के इजाफे के साथ बरतरी बढ़ते हुए सिंध की 137 रन की। बहुत ही खूबसूरत मंजर, नीलगुआ आसमान पे पाकिस्तान नेवी का ये चॉपर फिजाओं को चीरता हुआ अपनी मंजिल के जानिब रवाना हुआ। पाकिस्तान की सरहदी समंदरी सरहदों की मुहाफिज पाकिस्तान नेवी, और पाकिस्तान नेवी ने जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं। जिस तरह से पाकिस्तान नेवी के गाजी और हंगोर के जो कारनामे हैं वो जब जब समंदरी जंग होगी तफासील लिखी जाएंगी, उसमें हंगोर का और जो गाजी का किरदार है पाकिस्तान नेवी के शिप और आबदोज गाजी, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। कवर्स में खेले, इस मौके पे रन बनाने का मौका नहीं मिल सका। बरतरी 138 रन की सिंध की। ओवर मुकम्मल हुआ 170 पे 5। इस तरह की फील्ड अब इन्होंने खड़ी कर ली है सेंट्रल पंजाब ने, लगता है फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, रन्स को बिल्कुल ड्राई अप कर दिया उन्होंने और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ना कोई गलती बैट्समैन करे, क्योंकि अब तक सुबह से लेके अब तक बड़ा अच्छा मुजाहरा दोनों ने बैटिंग का बड़ा संभल के खेला है, और ये बखूबी जानते हैं सेंट्रल पंजाब के बॉलर्स और कप्तान भी कि अगर ये सेशन निकल गया, पहला घंटा जैसे कि हो चुका है अब, और लंच तक अगर ये दोनों खिलाड़ी खेल गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, उनको परेशान करना फिर, क्योंकि विकेट बेहतर से बेहतर होती जाएगी बैटिंग के लिए, और स्पिन ऑप्शन कोई नहीं है सेंट्रल पंजाब के पास। जैसा हमने सुबह जिक्र किया था, फिंगर स्पिनर ज़रूर है जो इस विकेट पे इतना मौसर नहीं रहेगा जितना कि सिंध के अबरार जो कि रिस्ट स्पिनर है वो रहेंगे। मिक्सअप करते हैं अबरार अपनी डिलीवरीज को, जो किसी भी बैट्समैन के लिए मुश्किलात का बाइस बन सकती हैं। दूसरी जानिब दाद देनी होगी हमें हसन को कि किस तरह से उन्होंने साथ दिया अब तक। 6 रन पे थे जब आज इनिंग का आगाज किया। शॉर्ट बॉल खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के नीचे से होती हुई गई, एक यकीनी स्ट्रोक को मिस भी किया। हसन ने थोड़ी मायूसी भी देखी जा सकती है, और फौरन से शफीक ने बुलाया। ये बहुत ऑस्टम के बाहर शॉट ऑन था, लेकिन स्लो आई बॉल, मेरे ख्याल से पहले ही शॉट अपना खेल चुके थे वो, और फौरन से शफीक ने जाके उनको यह समझाया एक सीनियर पार्टनर के हैसियत से, फ़र्ज भी उनका है ये, उन्होंने जाके उनको कहा हुआ कि जी अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, और इस 200 रन की लीड की तरफ बहुत अहम किरदार है इन दोनों खिलाड़ियों का। एमर इस पार्टनरशिप की जो एक और जो इंपॉर्टेंस है वो ये कि जितना टाइम गुजारेंगे उसके बाद आने वाले सुहेल खान, मीर हमजा बैटिंग कर सकते हैं, तो उनके लिए एक आइडियल प्लेटफॉर्म सेट हो जाएगा। क्योंकि जब वक्त गुजार जाएंगे तो जो इब्तिदाई जो अर्ली एडवांटेज होता है अर्ली मॉर्निंग का, उसको भी मिस कर जाएगी सेंट्रल पंजाब। उसके बाद फिर सुहेल खान जैसे स्ट्रोक प्लेयर हैं, फिर ताबिश भी बेहतर बैटिंग करते हैं, मीर हमजा भी आखिरी नंबरों पे रुक जाते हैं आके, अबरार भी इतने बुरे बैट्समैन नहीं हैं, तो ये सारे भी मिलकर अगर 10-10 रन करते हैं, 8-8 रन करते हैं, तो उसके बावजूद भी ये 200 रन तक पहुंचने की पूरी सलाहियत है सिंध की, और फिर मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये। एक अच्छा शॉट, अच्छा ड्राइव, लेकिन ये डिफेंसिव फील्ड के साथ आप बॉलिंग कर रहे हैं। ये देखिए पिछले ओवर में भी और इस ओवर में भी एक तो अच्छे शॉट्स लगे जो कि सीधे फील्डर के हाथ में गए,
फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं बैट्समैन को कि कुछ गलती करे। और इसके साथ ही ओवर भी अपने अख्ताम को पहुंचा। 170 पे 5, हसन 19 और असद शफीक 66 के साथ स्कोर क्रीज पे मौजूद हैं। 138 रन की बर्तरी अब सिंध को हासिल हो चुकी है। अब तक का जो इब्तिदाई एडवांटेज है उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करने दिया इन दोनों बैटर्स ने, और मुमकिन तौर पे पानी के वक्फे से पहले ये आखिरी ओवर है, तो कोशिश ये होगी कि सेशन टू सेशन खेलें। खूबसूरत मंजर है ये स्टेट बैंक की मेन पवेलियन बिल्डिंग का। अच्छी अंदर आती हुई गेंद थी, ये वकास मकसूद की जानिब से, उसको उतने ही उम्दा तरीके से मैनेज किया एक्सपीरियंस असद शफीक ने। बहुत ही मुश्किल इस एंगल से जो है वो विकेट हासिल करनी यहाँ पे वकास मकसूद के लिए। मैं काफ़ी इख्तिलाफ करता हूँ इनकी इस हिकमत अमली से, क्योंकि ऑप्शंस कम हो जाते हैं जब आप राउंड द विकेट जाके इतनी अर्ली ऑन बॉलिंग करें तो। ऑप्शन से बाहर गेंद इसको लेफ्ट की आसानी के साथ जाने दिया विकेट कीपर अली शान के ग्लव्स में। और अहमद कल हमने देखा था पहली इनिंग में कि जब 7 गेंद करते थे तो अली शान ने स्टंप्स पे के करीब खड़े होकर विकेट कीपिंग करते थे, लेकिन आज ऐसा कोई इंटेंशन हमें नज़र नहीं आया अली शान की जानिब से, जिससे बैट्समैन पे एक एडिड प्रेशर पड़ता है। और एक और भी एक नई चीज़ जो मैं देख रहा हूँ अली शान में, आप ये देखेगा ये यहाँ पे खड़े होते हैं, और जब अमूमन विकेट कीपर जब बॉलर गेंद करता है तो इसी जगह पे झुक जाते हैं, नी डाउन हो जाते हैं। लेकिन आप ये देखेगा जब बॉलर गेंद करते हैं तो अली शान काफ़ी फासला तय करते हैं, जो अमूमन पॉइंट के फील्डर को आपने देखा हुआ है, दीगर फील्डर को, कि बॉलर के साथ चलते हैं। विकेट कीपर को अमर मैंने तो कभी इस तरह नहीं देखा कि विकेट कीपर भी वॉक कर रहा हो, क्योंकि जब आप वॉक करेंगे तो फिर आपकी कंसंट्रेशन, जो आपकी रीच है, उसमें भी बड़ा डिफरेंस आ सकता है। ये देखेगा यहाँ से, ये पिछली गेंद पे काफी ये वॉक करते हुए नजर आए थे। जी हाँ, 2-3 कदम आगे बढ़ाते हैं ये बॉलर के साथ। अपना अपना अंदाज है जी, हर एक का कंफर्टेबल, जिसको जो लगता है वो हर एक करता है। ऑप्शंस की मैं अली बात कर रहा था, आउट करने की यहाँ से जब तक रिवर्स स्विंग होना बॉल शुरू नहीं हो जाता, राउंड द विकेट एक लेफ्ट आर्मर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। दिफा अंदाज से खेले हैं, और अशरफ अली जैसे विकेट कीपर का साथ हासिल है सेंट्रल पंजाब की टीम को। यकीनी तौर पे अशरफ अली के टिप्स भी हासिल होंगे अली शान को। 2-3 कदम आगे बढ़ते हैं और वॉक करते हुए आगे की जाने बातें, तो एक दिन अशरफ अली से ज़रूर टिप्स लिए होंगे। ये अली शान है, बड़े अच्छे विकेट कीपर हैं। अब अगर आप एक और एंगल से, जाविये से देखेंगे तो 2-3 कदम आगे बढ़ते हैं ये बॉलर के साथ साथ। अमूमन विकेट कीपर इस तरह वॉक करते नहीं है बॉलर के साथ। दो तीन कदम ही आगे बढ़ते हैं। तो ओवर भी अपने अख्तिताम को पहुंचे। 170 है स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पे 138 रन की बढ़तरी के साथ, और इसके साथ ही यहां पानी का वक्फा भी।
कहाँ लेना है? हाँ हाँ लेते हैं लेते हैं लेते हैं लेते हैं। ओके ओके सबर 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 सबर। हाँ लगे दोबारा बोले। हाँ कमेंटेटर बैठे हुए। किसका? ओए होए 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 क्या शॉट आया भाई, वाह 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 वाह। अच्छा कॉम्स और आइए आई भी लगाइए लोगों ने, भी लगाई लोगों ने कॉम शामिल साहब। हाँ शामिल साहब आवाज आ रही है मेरी? अभी आई भी लगाए थे लोगों को। मेरी आ रही है, मेरी आ रही है। $170 for 5. That, and look at that. Day 3, first hour. Sindh has not lost a wicket in round 7, and they didn't do it in round 9 as well. But overall, day 3 is a batting day for the first hour and throughout the day, in my opinion. But this stat would suggest that Sindh really apply themselves well in that third innings of the match. And talk about the application and street smartness. Ali Yunus is second to none. He's joined me in the comm box as well. Yeah, very good point made by our statsman Farhan Nisar. It's about the Sindh side. They've not lost a wicket. They've been under pressure in both games. They played well on the third day. Over here they were under pressure. It was Asad Shafiq that day. It's Asad Shafiq now. Shows the strength of their batting lineup. Shows the experience.
They do know a method, or they have evolved a method that works on this day 3 pitch here at State Bank. They've already turned one game around through to their magnificent batting on day 3. They would look to do the same today. Not completely out of the woods just yet. With 5 wickets down, I have a feeling 1 wicket and the floodgates can open. Absolutely. But it doesn't seem like their Hassan and Asad are in a mood to give away their wicket. Spoke too soon. Commentator's curse was about to happen. Hassan tried his best to prove you wrong. That extra bounce. Look at the way he didn't need to play at it. In nothing short. Look at his feet. Just walking around. Movement and bounce for sure. But the line wasn't threatening. This one keeping low. That invariable bounce that we've been talking about. Not a good sign even for Central Punjab. They would have to bat last on this wicket. 170 for 5. It's a very interesting battle, Shah Faisal. We saw between the overs a few banter going on, few words exchanged by Hassan with Saad and Imran Dogar also. Shows the intensity of the game, shows how important this session is for both sides. Central are desperate to get a wicket. They're a bowler shot, no, they were, but gladly for them, Mohammad Ali has come back. Waqas Maqsood round the wicket. And Emmer made the point in his stint just a while ago that left arm around the wicket angle, it really reduces the options of a left armer if the ball is not reversing. He's generally working on that angle coming into the right-hander, because to straighten from that line and get the edge is a very difficult task unless there is some reverse going on. Yeah, that's one way of looking at it. But then again, from over the wicket, nothing is happening also. So maybe if you can create that angle and look to cut the ball away from the right-hander, that can be the only option for Waqas Maqsood. Because with that angle, LBW will be very difficult to get. With his pace, looks very difficult. Got a ring of fielders on the offside, just a slip and a gully. That's that drive. Good tumbling save. Skipper saw a chance at the striker end, but Hassan got there and they will get an overthrow. Ali Shan failed to gather the ball. Also, Mohammad Ali was so slow to react from fine leg. He should have known that Saad is going to throw on this end. He was so slow to react. It resulted in an extra run. It was a wonderful piece of fielding by Mohammad Saad. Well, look at that again. There was a run, all right. The throw came in. And the fine leg fielder should have come up. Every run matter. He was pretty late to react to the situation, Muhammad Ali. Like you said, every run is of utmost importance here. He's looking to create that angle. A very difficult one to create. He has to be absolutely perfect to get a result out of that. Yeah, but like Ali said, it's one way of looking at it. I personally would have preferred him to angle the ball across and tempt him into a loose drive with plenty of bounce and carry in that. And that's the difference between the two sides. The experience in fast bowling. We saw Sindh has a lot of experience when it comes to taking wickets. Mir Hamza, Tabish, Sohail Khan, they know how to get a batter out. They know how to set up a batter to get a wicket. I think that has been missing for Central Punjab. And that X factor of Ibrar definitely being the difference. We've not seen any threatening spinner from Central Punjab.
Beautiful drive, an awkward bounce will allow an extra run. Throw is to the striker end, but Hassan was alert. Very bad bounce there for the fielder at mid-on. Ahmad Safi Abdullah. They should stop it. Drives like that shouldn't be given away. Have a look at that. It went straight to him. From that angle, we might not be able to tell. But they're running for everything, Shah Faisal. They're taking these singles. Because boundaries have dried up. They have to rely more on singles now. They've survived the first hour now. They would look to cash in. Hassan will put bat to ball. He will go for those drives. This time couldn't pierce the gap. 173 for 5. Sindh leading by 141 runs at the moment. And this first hour and 15 minutes definitely belonging to Sindh. Belonging to Hassan, belonging to Asad Shafiq, how well they've played. And now we see just one slip and a gully. Shows that Central has gone defensive. Asad Shafiq was knocked over by Saad in the first innings. Advancing down the wicket, looking to find a method to counteract against the slow seeming deliveries of Saad, which has really caused trouble. And even this morning, he looks quite likely to take a wicket. The ball has gone old. Mohammad Saad has looked threatening with a semi-new ball. We've seen him seam few deliveries. But with this pace, with a relatively older ball, 60 over bowled, with this pace, got to be very lucky. Or it had to be a very poor shot like Khurram Manzoor did. But better than the most. But he's still doing a job. Look at his economy. 10 overs, 9.3 overs, 1 for 20. He hasn't been easy for the batters to get away. You can always argue that he can bowl with his two seamers, but slight doubt over Muhammad Ali's fitness. It's really making him bowl those extra overs. He's really pinned the scoring down. And like we saw in the last over, Hassan did take a chance against him. And he'll be hoping for that, Muhammad Saad. The patience game is on. Since morning. Once again, not in control, Asad Shafiq. That lack of pace went all along the ground. I see the body language going down from Central Punjab. They must keep believing that there's just one wicket away. And then the tail starts. Sohail Khan did play well in the first inning, but that's not going to happen every time. You might expect a few blows, but not every time. Loosener capitalized. Muhammad Hassan was looking for that opportunity. Saad straying down the leg side, and valuable runs added to the total by Hassan. 178 for 5. Look at that. Sliding down the leg side, roll of the wrist, and the fielder was quite square. Important boundary from Hassan. You're talking about Central Punjab's body language. They're feeling a bit down. So watches these beautiful pictures here. That just talking to Coach Abdul Razak, they have to keep patience, because if one wicket falls, the floodgates can open. You might have seen a few fans, crazy cricket fans, but the guy on the left has travelled all the way from Lahore, Mohammad Azam, to witness a first-class game. How wonderful is that to see? Young cricket fans travelling long way to witness a first-class game. This is the first time I'm seeing that.
And this again, we've seen that beautifully done by Asad Shafiq. That is his bread and butter shot towards his leg stump. Wonderful boundary. So 2 consecutive boundaries for Sindh. Now the lead is 150 runs. Wow, what a beautiful shot that was. Another leg stump half volley. That angle in from left arm around the wicket. Waqas Maqsood straying onto the pads of Asad Shafiq. A roll of the wrist. Look at that balance and poise. The grace and beauty of Asad Shafiq's on drive in full flight. That psychological figure of 150 has been reached. But talking about this body language and how Central Punjab can still make a comeback, we've seen this many times on this venue. When 1 wicket falls, it really does start something special for the bowling team. They just need to be patient. Yeah, but the question remains the same. From where did that wicket comes from? Who is the bowler? Because they've looked flat since morning, the central bowling side. No pace. The ball is getting older. Probably their ace bowler was Muhammad Ali. He's not 100% fit. That will be a big blow to them if he's not able to bowl anymore in this inning. But credit must be given to Asad Shafiq, the way he has handled the situation. You all were thinking that maybe the first hour of the day you might get a wicket, but he has done wonderfully well. Yeah, Ali, when you're talking about who to look for a wicket, I know Hassan is on the crease. He's very good against spin, but it's a risk and reward situation. Ahmad Safi Abdullah with his older ball. I'm sure Hassan will go after him, and that will present an opportunity for Central Punjab to make a breakthrough. See, it's just a tricky situation for Central Punjab. They need wickets, but they need to save runs too. They cannot afford a big over or two, 10 runs, 12 run over. We know that Asad Shafiq plays spin very well. So does Hassan. That sweep shots from Asad, it's been his trademark shots. Talking about Hassan, this man is getting ready to take his place behind the stumps in the next round. Former Pakistan skipper Sarfraz Ahmed, he's been training hard since he come back from national duty. He was at the PSL draft, so he couldn't play this game. So Hassan has got a big motivation to do exceptionally well here and make that decision as hard as it can be for the selectors. Hassan is an experienced wicketkeeper batter. Over 100 first-class games. 250 in the season already. He's been in supreme form. And not a bad choice to lose his place to a former captain. To a former champion trophy winner captain. He wouldn't mind that. More than that, probably Sindh will benefit from his leadership as well. Asad Shafiq was the skipper originally, and then Fawad Alam for this game. But I'm sure Sarfraz will take his spot and become the leader of this group when he joins in the next round. 182 for 5. Muhammad Ali is back. We'll have to keep an eye on him, especially that shoulder of his. He was troubled by it in his first spell, but we'll have to keep an eye. And his side needs a big effort from the big fast bowler. He definitely has it in him to bowl a big heavy spell where he can get a couple of wickets. Central would want him to do that because the lead is now 150.
Uh-oh. Be careful. You don't want to be running on a misfield, and especially on the arm of this guy. Saif Badar, a very good fielder. Have a look at the banter. They're continuously talking to each other. Have a look at Hassan. Do he needs to do that? Concentration. Concentrate on the batting. Remember, he's a wicket keeper. The wicket keeper, they hardly ever remain quiet. When batting, keeping, and sometimes, I know we all say this, you have to stay in your bubble. Some players like to do that. I think it makes them concentrate harder if they keep talking and keep chatting to the opposition. Perfect example. Hassan, as you just said, that he likes talking, that might motivate him. On the other hand, it's Asad Shafiq, cool and calm. Hardly you see a word, you hardly hear a word from him. You can say whatever you want to say to him. He's not going to change his expressions. He's not going to change his game plan. He's going to stick to his own method of playing. Very quiet, soft-spoken. Remains in his bubble, especially when batting. It's funny how different players adapt different strategies to keep him focusing for as hard as they can. Some remain to be quiet, and some very talkative. He's so quiet that at toss, I was like, if he's gonna say anything or not. He's that quiet, Asad Shafiq, but very committed, very solid, very talented, a big performer for Pakistan. Wonderful man. Hardly breaks into a smile. Must have been something funny that can get Asad Shafiq to smile a little bit. As we watch, that fielder from square leg has been sent back. Some short pitch stuff coming Hassan's way. That's Muhammad Ali's strength. See to the right of your picture, there's another man as well. Very square, just behind the square. Look at that bounce and carry. Muhammad Ali. That is why I love this man. Now look at that bounce and carry, the tennis ball bounce. Shows that he is giving some effort. Have a look at that. That is top class bowling, that tennis ball bounce. From the length it kicked on, never easy for the batters. When Ali Shan took it, it was still on the way up from a good length. Can just direct it straighter to the body of Hassan. Showing some aggression. Hassan would not go quietly. But yet, this plan, I mean, he hasn't bowled a short pitch delivery yet. But that fine leg fielder is also very, very square. Is almost long leg or backward square leg. And the second one is well in front of square. That suggests that short pitch stuff is coming. It is an older ball, that is why it's towards the umpire, towards the square leg. Had it been a newish ball, you might have seen them finer. Short pitch got on to him too quickly. Never was in position. It's a good contest here. Good over from Muhammad Ali. 182 for 5. Such a frustrating partnership this has been for Central Punjab. 62 ball old ball, nothing really happening. And as you wished, we see some spin. Good from skipper Saad, because they have to keep bringing the changes. Doesn't allow the batters to settle in into a rhythm. They have the option. They picked him ahead of Zafar Gohar. They have to trust him on this day 3 pitch. There's no point picking someone and not trusting him when the situation arises. This is his moment. It was forced changed. Zafar Gohar was not 100%. It's better to play
100% fit player, then a half-fit player on a very crucial game. You don't want to lose a player within the game. Here you go. Something different from Asad Shafiq. To get down to the pitch. You're absolutely right. Zafar Gohar is a quality professional. But when Ahmed gets his opportunity, he has to make the most of it to stay in the team. It's too short. Hit it through the gap. It was not much of a gap, but he split it beautifully. Superb stroke from Asad Shafiq. Wonderful footwork, wonderful pick of the length, wonderful placement. This is top quality batting by Asad Shafiq. Quickly onto the back foot. Look at that. It's not that short, but that footwork and that placement was spot on. Wonderful batting by Asad Shafiq. Now gaining confidence with every delivery. Going for his favorite sweep shot. Got it right off the meat of the bat. And traveled very, very quickly to the fence. Back-to-back boundaries. One towards offside, the other one towards leg side. That is the quality of this man. Asad Shafiq, have a look at that. We've been talking about his quality, his ability to hit that sweep shot. Even the fielder, Saif Badr, couldn't do much. He wanted to move towards his right. Couldn't do much because it was such a forceful shot. Hit hard by Asad Shafiq. And the point we were making, Shah Faisal, earlier, that one big over, you don't want to risk that. Asad Shafiq, also credit to him. He's realized this is the moment. He's been working very hard. Runs have been hard to come by. He's put the spinner immediately under pressure. The interesting thing about that last boundary is that square leg fielder, Saif Badr, like you mentioned, he was anticipating it and he started to move towards his right. But then with the extension of the arms, Asad Shafiq hit it way in front of square. This is intelligent batting as well. And that's that replay lined up again. That sweep shot we were talking about. That's the cut shot. Made his own length. And then that sweep shot. Look at that fielder. He was moving it, anticipating. But Asad Shafiq fooled him as well. 190 for 5. मोहम्मद अली अपनी बॉलिंग को जारी रखे हुए हैं और इस पूरे मैच में बहुत ही उम्दा और निपितुली बॉलिंग की है मोहम्मद अली ने। चंद गेंदों पर सरप्राइज ज़रूर किया है और रवां सीज़न में सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले ये फास्ट बॉलर हैं। एमर जो पंजाब का लेग था उसमें फास्ट बॉलर्स की इतनी विकेटें नहीं मिली, वहाँ भी ये कामयाब दिखाई दिए। एक मैच में उन्होंने 9 विकेटें ली और कराची आने के बाद तो इनका जादू सर चढ़कर बोल रहा है। अच्छा बाउंसर जाने दिया सन ने। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक ख़ास बात इनकी देखिए, बाउंसर तेज बॉल। एक ख़ास बात जो इनकी बॉलिंग में है, ये बड़े ही इंथुजियास्टिक लगते हैं हर वक्त। जब भी इनको कप्तान इनकी तरफ बॉल फेंकता है तो कभी मैंने इनको जो है वो कोई ऐसा स्पेल नहीं देखा जिस पे ये अपने तमाम तर तवानाई ना लगाएं। ये एक और बाउंसर था। और एमर जो इस साल गर्मियों में जो
सिटी क्रिकेट हुई तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इनहमाक से खेलते हुए दिखाई दिए। एक तेज़ बाउंसर थे, इतनी ज़्यादा अच्छी डायरेक्शन नहीं थी। तो वहाँ भी इनके बारे में यही सुना गया है कि जून जुलाई की गर्मी में भी इन्होंने 10-10 12-12 ओवर के स्पेल किए। तो इनका स्टेमिना अच्छा है, फिटनेस लेवल इनकी अच्छी है, तो उसी का नतीजा इनको मिल रहा है यहाँ सब इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। ये भी अच्छा बाउंसर था जिसको बहुत उम्दगी से मैनेज किया हसन ने, और इसके साथ एक रन भी हासिल कर लिया इन दोनों बल्लेबाजों ने। या फिटनेस का आपने जिक्र किया, खासे फिट नज़र आते हैं। और जो हम बात कर रहे थे कि ये इंथुजियाज्म जो है इनका, और ये हर वक्त कोई ना कोई कुछ ना कुछ हिस्सा बने रहना मैच का, ये जो किरदार ये अदा करते हैं, ये बहुत ही खुशाइन है और पूरी टीम को जो है ये एक तरह से उठाता है। जब भी ये बॉलिंग करते हैं मैं ये देखता हूँ कि पूरी टीम जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि उनको ये एहसास हो रहा होता है उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि कुछ ना कुछ होने वाला है अब। तो ये बहुत ही एक अहम हिस्सा होंगे जिस भी टीम से खेलेंगे। ये उनके रवैये का कमाल है, एटीट्यूड। जी हाँ, ये इब्तदाई स्क्वाड में शामिल नहीं थे, लेकिन जब इनको मौका मिला तो उसके बाद इन्होंने अपनी जगह नहीं छोड़ी। और अगर हम इनका बॉलिंग एक्शन देखते हैं अमर, जो इनका रनअप है वो भी इतना ज़्यादा वो तेज़ी से नहीं आते, जो आर्म स्पीड है वो भी ऐसी नहीं है कि जो जिससे बैट्समैन परेशान हो, लेकिन जब गेंदें इनकी पड़ने के बाद जो जादूगरी दिखाती हैं वो ज़रूर परेशान करती हैं बल्लेबाज को। ये इस ओवर का तीसरा बाउंसर था जिसके साथ ओवर को ख़त्म किया। असद शफीक भी सोचते रह गए। 191 पर 5 सिंध की टीम 159 रन की कीमती बढ़तरी हासिल कर चुकी है। ऑप्शंस जो हैं वो कम से कम होती जा रही हैं सेंट्रल पंजाब के पास। हमने देखा तकरीबन तमाम तर जो ज़राए उनके पास हैं वो इस्तेमाल कर चुके हैं अब तक, लेकिन कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई है अभी तक। बहुत ही शानदार शराकत असद और हसन के दरमियान, बहुत समझदारी से ये सेशन उन्होंने खेला है और कल की ही तरह कोई गलत शॉट मारने की कोशिश नहीं की। ये उन्होंने हालांकि रन्स बनाना जो है वो बड़ा अहम यूँ है कि जाहिर है जितनी लीड वो लेते जाएंगे उतना ही फ़ायदा उनकी टीम को होता जाएगा, लेकिन ये भी वो उनके जहन में और बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि वक्त कितना अहम है इस मैच में। और ये अगर हम पहले घंटे के स्टैट्स अभी हमने देखे अमर, कि सिंध ने जो पिछला मैच यहाँ पर खेला वहाँ भी तीसरे दिन पहले घंटे में विकेट नहीं गवाई। उस वक्त भी असद शफीक और खुरम मंजूर खेल रहे थे, और यहाँ भी अभी तक इन्होंने विकेट नहीं दी, और यहीं से मैच का पांसा पलटा था। पिछली अगर हम राउंड की भी बात करें तो सिंध की हिकमत अमली यही है कि जब तीसरे दिन उनकी पहली इनिंग्स में इतना अच्छा नहीं करते पहले दिन, लेकिन तीसरी इनिंग्स तीसरा दिन तो उसमें डोमिनेट करती है सिंध की टीम और कामयाबी हासिल करती है। तो यहाँ भी इनका यही प्लान लग रहा है। स्वीप किया था इस बार, लेकिन लेग स्टंप के बाहर बॉल नीचे जा रहा था। और बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि यही हिकमत अमली का हिस्सा होता है इनकी। ये देखिए ये स्वीप किया, तीसरे दिन जो है वो अच्छी शराकत बनाई जाए। और ऊपर से खेल दिया इस बार, कदमों का इस्तेमाल किया था सद ने, बहुत टाइम नहीं किया उसको बहुत अच्छी तरह, लेकिन इतना बैट ज़रूर लगा बॉल को कि वो ये देखिए कदमों का इस्तेमाल किया। इतनी अच्छी टाइमिंग नहीं थी, लेकिन वकास मकसूद के सर से बहुत ऊपर था ये गेंद। लेकिन इस शॉट को देखते हुए जो इनके कोच है उनका दिल ज़रूर हलक में आ गया होगा।
पिछले मैच में यहाँ 83 रन पर आउट हुए थे और अब 86 पर पहुंच चुके हैं इस शॉट के साथ। और अहमद गुज़िश्ता 16 इनिंग्स में 3 हिस्सों की इनिंग्स नहीं खेली असद शफीक ने। 16 दिसंबर को पिछले बरस इन्होंने अपनी आखिरी फर्स्ट क्लास सेंचुरी स्कोर की थी, तो एक सेंचुरी भी ड्यू है इन पर। पैंसठ ओवर इख्तिताम, 197, 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और एक मरतबा फिर ये देखिए कि राउंड 7 में और राउंड 9 में सिंध ने बैटिंग की तीसरे दिन पहले घंटे में, और एक जैसे ही ये इनके रन्स हैं राउंड 7 में 20 और राउंड 9 में 23 रन्स किए, लेकिन ऑब्जेक्टिव यही था कि विकेट्स बचा कर रखी जाए, विकेट पर टाइम गुजारा जाए। और उसका नतीजा हमने 7वें राउंड में देखा कि जब सिंध की टीम 120 रन्स के खसारे के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा को शिकस्त देने में कामयाब हुई और यहाँ भी 165 रन की बहुत ही कीमती बढ़तरी सिंध की टीम अपने नाम कर चुकी है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज फरहान अबरार चौथी इनिंग में फैसला कुन साबित हो सकते हैं। और यही कमी एक महसूस हो रही है मेरे ख्याल से सेंट्रल पंजाब को इस वक्त। उनके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो कि इस विकेट पर मौसर साबित हो, ख़ासतौर पे स्पिनर, क्योंकि फिंगर स्पिनर लेफ्ट आर्म उन्होंने खिलाया है और अब तक कोई बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिल सकी है फिंगर स्पिनर को। और रिस्ट स्पिनर जैसा कि आप जानते ही हैं, वो किसी भी विकेट पर किसी भी लम्हे जो है वो मौसर साबित हो सकते हैं। और अबरार तो महारत रखते हैं अपनी मिस्ट्री बॉल्स, और चूं विकेट थोड़ी सी क्रम्बल होती जाएगी, थोड़ा सा नीचे रहने लगेगा और वो और ज़्यादा ख़तरनाक होते जाएंगे। ये रिस्ट स्पिनर की अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। मिस्ट्री स्पिनर, रिस्ट स्पिनर, ये बैट्समैन को चकमा देने में कामयाब होते हैं, लेकिन इस सीज़न में हमें रिस्ट स्पिनर अहमर दिखाई भी नहीं दिए। बिल्कुल खाल खाल रिस्ट स्पिनर नज़र आते हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में। जाहिद महमूद सिंध की टीम का हिस्सा है, वो पाकिस्तानी टीम के साथ मसरूफ़ होने के बायस इस साल अभी तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक्शन में दिखाई नहीं दिए। अबरार हैं सिंध के पास। इसके अलावा हमें बाएं हाथ के फिंगर स्पिनर्स तो नज़र आए हैं, अली उस्मान है, असगर हैं, जफ़र गौहर, अहमद सफ़ी, लेकिन जो रिस्ट स्पिनर की जो इम्पोर्टेंस है वो अभी तक इस सीज़न में हमें दिखाई नहीं दी। इसीलिए अबरार का किरदार जो है वो और ज़्यादा अहम हो जाता है। पिछली इनिंग में भी अगर आप देखें सेंट्रल पंजाब की, आबिद अली को भी हालांकि उन्होंने परेशान किया था, लेकिन आबिद अली अपने तजुर्बे की बुनियाद पर उनको बेहतर अंदाज से खेल गए। बाकी किसी भी प्लेयर को जो है वो एतमाद के साथ नहीं खेलने दिया उन्होंने। बिल्कुल 3 विकेटें हासिल की थी उन्होंने, और इससे पहले जो मैच, वो आखिरी मैच खेले थे उसमें यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर 11 विकेटें हासिल की थी। तो यकीनन जो सिंध की टीम है बहुत ज़्यादा भरोसा करती हुई हमें दिखाई देगी चौथे दिन, जब ये आज शाम को जब इब्रार बॉलिंग कर रहे होंगे। और सेंट्रल पंजाब के जो बैट्समैन हैं उनके खिलाफ नफसियाती तौर पर भी दबाव में दिखाई दी, अगरचे कि उनकी कुछ गेंदें ऐसी थी जिन पर रन्स किए जा सकते थे। और ये शाहनुल्लाह हैं, इनके साथ ख्वाजा रोहेल। और शाहनुल्लाह अगर हम दोबारा देखें तो इनका ताल्लुक सिंध से है। सिंध की सेकंड 11 को 3 टाइटल्स जितवाने में इनके जो एनालिसिस हैं वो मदद करते रहे हैं, लेकिन इस मरतबा सिंध के मुखालिफ डगआउट में मौजूद हैं। ये स्क्रीन के बाएं जानिब शाहनुल्लाह हैं, लंबी घनी जुल्फों के साथ, और उनके साथ हैं ट्रेनर ख्वाजा रोहेल। शाहनुल्लाह को स्क्रीन पर देखकर मुझे एक मैच याद आ गया पिछले सीज़न में, जब ये अपना कैमरा लगाने के लिए स्टैंड पे चढ़ रहे थे और वो स्टैंड जो है वो उसके पहिए निकल गए थे। बहुत ही खुशकिस्मत रहे कि कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, हालांकि इनको खासी चोट लगी थी उसमें, लेकिन अपने काम से बहुत ही सिंसियर, बड़ी मेहनत से और
बड़ी लगन से काम करते हैं। बिल्कुल इनके बारे में कह सकते हैं कि इन्होंने खून पसीना एक किया अपने काम के लिए। वो गिरे थे, इनकी वीडियो मुझ तक भी पहुंची थी और काफ़ी ऊंचाई से ये नीचे गिरे थे। और अगर हम इसी ओवर में देख सकें, जो साइड स्क्रीन के ऊपर जो दोनों साइड पे जो कैमरास नस्ब हैं, जो एनालिस्ट के कैमरास हैं, वो तमाम तर जो पूरे मैच की जो वीडियोस हैं वो फिर कोचेस शाम को बैठते हैं एनालिस्ट के साथ, उस पर एनालिसिस करते हैं, प्लेयर्स अपनी खामियां और खूबियां देखते हैं। तो एनालिस्ट का किरदार बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और ये एक और तेज़ बाउंसर, लेकिन ये काफ़ी ऊंचा था, आसानी से जाने दिया असद शफीक ने विकेट कीपर के पास। और अंपायर नासिर हुसैन ने दोनों हाथ अपने खोले हैं। ये कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बल्कि इन्होंने वाइड का सिग्नल दिया है। रेड बॉल क्रिकेट में अंपायर्स को वाइड देते हुए कम देखा गया, लेकिन ये गेंद सर से बहुत ज़्यादा ऊपर थी, इसलिए इसको वाइड करार दिया गया। शॉर्ट बॉल एक बार फिर। खातिर खा कोई मदद अब नहीं मिल रही है विकेट में से। मुख्तलिफ हरबे तमाम बॉलर्स आजमा रहे हैं और शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल ज़्यादा देखने में आ रहा है। ये अच्छा ओवर था मोहम्मद अली का। 198 पर 5 सिंध की टीम और 166 रन। फोकस करती है, कंसंट्रेट करती है, तो उसके आने से पहले काफ़ी गलतियां वो कर बैठती है दूसरे बॉलर्स पे। फास्ट बॉलर्स अमूमन विकेट ले जाते हैं जब फोकस जो है किसी स्पिनर पे होता है। जी हाँ, इस मरतबा कट किया और 1 रन यहाँ पर हासिल होगा हसन को। और कल अहमद जब हम सेंट्रल पंजाब के कोच से बात कर रहे थे कि कितना टारगेट मौजू होगा, तो उनका ये कहना था कि अब ये विकेट का कमाल नहीं, अब ये प्रेशर गेम है। जो टीम प्रेशर को ज़्यादा अच्छा हैंडल करेगी। पहुंचने के लिए सिर्फ प्लेस करते हैं उस बॉल को, सिंगल्स और डबल्स हासिल करने के लिए भी। और पीछे गिरे हुए गेंद पर फौरन कट करने के लिए जाते हैं। इस मरतबा ठीक से टाइम नहीं कर पाए। और ये जो बैटिंग में दिलकशी है असद शफीक की, ये इनकी खासियत है। और इसमें कतन भी कोई तब्दीली नहीं आई अगर हम पिछले 10 से 12 साल में मुआजना करते हैं असद शफीक की बैटिंग का। प्लेसमेंट उनकी बहुत ही उम्दा होती है, गैप तलाश करते हैं और जानते हैं कि जहां बाउंड्री नहीं मिलेगी तो वहां पर सिंगल या डबल के साथ वो अपने स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। इस मरतबा क्रीज से बाहर निकले और ये गेंद स्क्रीन के ऊपर से इस गेंद को गुम कर दिया है असद शफीक ने। फील्डर्स रवाना हुए हैं, ग्राउंड स्टाफ भी हम देख रहे हैं, सब साइड स्क्रीन के पीछे गेंद को ढूंढने की कोशिशों में मसरूफ हैं। बिल्कुल स्ट्रेट बैट के साथ ये शॉट खेला है असद शफीक ने। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि दोनों अंदाज से कदमों का इस्तेमाल दिखाया है और यही इनकी बैटिंग की खूबसूरती है। 95 रन पर पहुंच चुके हैं और अब गेंद की तलाश जारी है। पिछले मैच में हमने देखा ज़िशान अशरफ ने इसी जानिब एक छक्का लगाया था, जिसके बाद गेंद गुम गया और ये वकास मकसूद अब वो थोड़ा सा सख्त होता है, उसमें उस तरह की नरमी नहीं होती जो मैच की बॉल में हो, तो वो कभी कभी फर्क डाल सकता है थोड़ा बहुत। अंपायर्स बॉल चेक करते हुए और मुआयना करते हुए पुरानी बॉलों का, जो सबसे करीब मौजूदा बॉल के उनको लगेगी वो इस्तेमाल करेंगे। अब वो बॉल तब्दील होने से जहां पे बॉलर्स को थोड़ा सा एडवांटेज हो सकता है, वहां बैट्समैन को भी काफी फायदा मिल सकता है, क्योंकि उनके और सेटल नहीं होने दिया उन्होंने बिल्कुल भी स्पिनर्स को। दोनों प्लेयर्स जो हैं वो स्वीप बड़ी अच्छी खेलते हैं और लेफ्ट आर्म स्पिनर काफी तंग रहते हैं जब ऐसे प्लेयर्स विकेट पे हों जो स्वीप अच्छी खेलते हो। और इतना ज़्यादा स्पिन भी नहीं मिल रहा और नज़रें इन पर होंगी जिन्होंने अपनी नज़रों पर नज़र का चश्मा लगाया हुआ है।
अबरार अहमद चौथी इनिंग्स में इनका किरदार बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा, लेकिन मोहम्मद अली अपना किरदार बखूबी निभा रहे हैं। कल फवाद आलम बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार हुए मोहम्मद अली का सामना करते हुए, और ओवरऑल बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है मोहम्मद अली ने इस मैच में। एक ऐसा किरदार है ये मोहम्मद अली जो एक टीम में, अगर एक कप्तानी के हवाले से आप पूछें तो हर टीम चाहेगी कि, या हर कप्तान चाहेगा वो उनके पास एक ऐसा खिलाड़ी मौजूद हो कि जब भी दिन के किसी भी हिस्से में जब उनकी तरफ बॉल उछाली जाए तो वो अपने भरपूर तवानाई से बॉलिंग करते हैं, 100% देते हैं। और ये अमर ऐसे बॉलर हैं कि जो कप्तान की हिदायत को 100% जो है मानते हैं, उस पर अमल करते हैं। जो रोल दिया जाता है, जो हिदायत दी जाती हैं, जिस एंड से गेंद करने का कहा जाता है, जिस वक्त कहा जाता है, ये अपने कप्तान की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। और इस सीज़न में बतौर फास्ट बॉलर सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करना इनकी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। ये गेंद अपनी लाइन से ज़रा से दूर थी, जिसको ऑन साइड पर खेला। बस शफीक भी कदरे मोहतात हैं, वो जानते हैं कि उनकी क्रीज पर मौजूदगी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और इनफरादी तौर पर अपनी 26वीं सेंचुरी को भी स्कोर करना चाहेंगे खाने के वक्फे से पहले। असद शफीक के कैलिबर का खिलाड़ी जो है, मुझे खासा यकीन है कि उनकी नज़र अपने 100 रन से ज़्यादा इस लीड पर होगी जो सिंध ने अभी तक 177 रन की लीड हासिल कर ली है। उसको वो 200 रन और 200 रन से ऊपर ले जाने की भरपूर कोशिश करेंगे, और मेरा ख्याल है कि अपने करियर के जिस हिस्से में वो हैं, अपने इनफरादी स्कोर से ज़्यादा लीड की अहमियत होगी उनके पास। और इस बार हसन ने गाइड कर दिया इस बॉल को, ऑफ स्टंप पे थोड़ी सी बाहर थी, पेस का इस्तेमाल किया मोहम्मद अली की उन्होंने, और बल्ले को आखिर में खोलते हुए कैप में खेला, 2 रन हासिल किए। सिर्फ इसको प्लेस किया, बिल्कुल भी तवानाई सर्फ नहीं की इस शॉट में, बल्कि गेंद को रास्ता दिखाया, और 2 रन के साथ हसन भी अब 28 रन पर पहुंच चुके हैं। और जो 70 गेंदों का इन्होंने सामना किया, ये बहुत ज़्यादा अहम है इनके लिए भी, इनकी टीम के लिए भी। और फिर बाउंसर करने की कोशिश की और इसको आसानी से जाने दिया विकेट कीपर के पास। 211 पर 5 सिंध। आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग, देखिए एक और बाउंसर, तेज बाउंसर था, जाने दिया। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बॉलर्स के हौसले कुछ पस्त होते जा रहे हैं, और अक्सर ऐसा देखने में आया है कि जब पूरे सेशन में कोई विकेट नहीं मिलती बॉलर्स को, तो जाहिर है उनके जो स्पिरिट्स हैं वो ख़राब कम होने लगती हैं। लेकिन एक बात की दाद देनी पड़ेगी कि दोनों टीमें अब भी बड़ी अच्छी एक लड़ाई जारी है। आमतौर से अगर विकेट्स नहीं मिलती बॉलर्स को, तो वो फिर एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर देते हैं और अपने प्लान से हट जाते हैं विकेट लेने के कोशिश में। और अब आखिरी ओवर में प्लान तब्दील किया और ये गेंद हवा में खेल दिया, और साथ जो गोल्डन आर्म के बायस शोहरत रखते हैं, उन्होंने असद शफीक की इनिंग्स का खात्मा किया अपनी सेंचुरी से। 3 रन के फासले पर असद शफीक पवेलियन रवाना, और ये दूसरा नर्वस 90 हमने देखा है इस मैच में। और मोहम्मद साद की ये मजमूई तौर पर 5वीं विकेट है इस मैच में, और बहुत ही अहम कामयाबी यहाँ पर हासिल की है साद ने। बहुत ही अफसरदा होंगे वो शॉट पे। देखिए पहला शॉट उन्होंने अपने जिस्म से दूर खेला और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा उनको। बॉल में पेस ज़्यादा नहीं थी, और 2 दिन कल का पूरा सेशन और आज की बैटिंग में उन्होंने इस शॉट को अवॉइड किया है। पहली बार ये गलती और
अपनी विकेट गंवा बैठे। और अहमद, ये इस मैच में तीसरी मरतबा हुआ है कि साद ने अपने स्पेल की पहली गेंद पर विकेट हासिल की है। दोनों इनिंग्स में पहले बॉल पर आउट किया और अब यहाँ जब अपना अगला स्पेल करने के लिए आए और असद शफीक को दोनों मरतबा आउट किया है मोहम्मद साद ने। और यहाँ पेस से चकमा खा के असद शफीक अपनी शॉट को पूरी तरह से ड्राइव नहीं खेला। और जो हम बात कर रहे थे कि कोई विकेट हासिल नहीं की और ये पूरा सेशन सिंध के नाम रहा है, यहाँ पर एक विकेट लेकर अब मैच में फिर वापसी की है सेंट्रल पंजाब की टीम ने। और ये भी आप देखिए फरहान के अब भी गलत शॉट मारने की गुंजाइश इस विकेट पे नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि कितनी अच्छी बैटिंग इन दोनों खिलाड़ियों ने अब तक की थी। ये बैटिंग कार्ड खुर्रम मंजूर 23 रन बना के आउट हुए। 32 उमैर बिन यूसुफ ने की अच्छी इनकी शिराकत असद शफीक के साथ। और असद शफीक लंच से कुछ ही लम्हे पहले 97 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद हसन 28 रन पे अभी तक विकेट पे खड़े में। 211 छह खिलाड़ी को नुकसान पर। सईद अशरफ, मोहम्मद अली और अहमद सफ़ी ने एक एक विकेट ली, लेकिन जो गोल्डन आर्म है टीम के कप्तान मोहम्मद साद, उन्होंने दूसरी कामयाबी लाइन से पहले हासिल कर कर एक मरतबा फिर सेंट्रल पंजाब की इस मैच में वापसी करवाई है। 211 पर 6 है स्कोर। और यहाँ खाने का वक्फा है स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर, और जैसे ही दूसरे सेशन के खेल का आगाज होगा हम दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।
Hello and welcome back to State Bank Sports Complex for the post-lunch session. And this is how things look on day 3 after lunch. 155 for 9 plays 187 for 9. And Sindh has now got up to 211 for 6. The wicket that fell just before lunch, Asad Shafiq, he was dismissed for 97. Mohammad Saad with 2 wickets and the lead 179 runs at the moment. A crucial session of play in the morning which went Sindh's way, but they lost that wicket right at the stroke of lunch. Skipper Asad Shafiq, as we watch Hassan and Sohail Khan walking in. This game is still tantalizingly poised. Very, very close at this stage even. And another important session of plays coming your way. In the commentary box, I've been joined by Amr Said. A very good afternoon, Amr. Thank you very much, Shah Faisal, and a very good afternoon to all the viewers. That's Sohail Khan, who played a vital knock in the first innings. He still will require to make a contribution. 450s, 1873 runs, 65 as his highest. That average 14.48. Important, very important session for both teams. Sindh must be looking for another 50 odd runs. Starts off with a single off the mark, Sohail Khan immediately. Yeah, you're right. At this stage, they would think that they still have a job to do with the bat. Hassan is well settled. His role will be crucial from here on in. You just called 50 more runs, Amr. What do you think on this pitch? What could be a good target for fourth innings? Nicely kept. Ali Shan moving very, very swiftly to his left. Must have been blinded for a moment. Well, with the resources Sindh has, the trump card, of course, being Abrar in the 4th innings, I would say another 50 to 60 runs. Sindh will be in a very strong position. The 60 runs will give Sindh a lead of 240 runs, which really will be a formidable run chase. And also it will take some time out of the game. We've been talking a lot of Abrar and his role in the 4th innings, but you cannot negate the role of Abid Ali, Central Punjab. A lot will depend on him when he comes to bat in that 4th innings of the game. 212 for 6. We were discussing earlier with Ali Yunus as well. Sindh seems to have the resources, not just Abrar, but the seamers also. They know the art of getting wickets. They know how to be patient for long periods, set up the batters, and like in cricketing slang we say, they know how to get the batters out. They have that advantage too. Most certainly, yes. Sohail Khan, Tabish Khan, Mir Hamza, well suited for this sort of track, and the hit and the lengths they hit, very, very difficult, especially with the new ball. Yeah, the art of taking wickets that you learn from doing it day in, day out
for many years in the longer format. I thought Waqas Maqsood was a similar type of bowler. A lot was expected of him today. He somehow didn't find that consistency, and that's why Central Punjab couldn't get any wickets in that morning session. Well, if you ask me, Shah Faisal, I think Waqas got it all wrong in the morning session. Immediately came round the wicket, and all his wicket-taking options were nearly lost when he did that. Muhammad Ali has been running in hard, trying and giving his all. You spot on, Amar, when you talk about that angle created by Waqas Maqsood. Unless there was prodigious reverse swing, that angle is largely very ineffective, especially on the day 3 pitch where the edges of the back foot were unlikely to carry to the slips. And instead, that his natural angle over the wicket would always be taking the ball away from the batters, and the slips will always be in play if you could put the ball up and invite that drive. That's why I think Sindh had the upper hand in the morning session. And particularly when you start angling the ball away from the batsman, the deliveries that remain straight or come in slightly, that is when those deliveries become effective. If you go around the wicket and it's not reverse swinging, as you said, no chances, nearly no chances of getting the batsman out, and especially batsmen who are well set. Nice push down the ground from Sohail Khan. And I'll ask you this as well. We've seen the great Wasim Akram reinvent the art of left arm bowling, left arm pace bowling, and that left arm around the wicket is almost unheard of. Do you think it's slightly overrated in this day and age when we don't get that kind of skill where bowlers can reverse that much? Yes, first of all, you don't get Wasim Akrams every day. Maybe once in a decade or century, I would say. Angling in, looking for that big wind up, Sohail Khan. Probably got an inside edge to it. 213 for 6. That one, the stumps came in a bit. Got that inside edge. He's talking about Wasim Akram. He's absolutely cannot compare him to any other in the world, leave alone at first class level. And that reverse swing, and Saad once again asking questions by just putting the ball in the right area. Streaky one from Sohail Khan will earn him a run. and his ability, Wasim Akram's ability to swing the ball away from the batter, even when he was coming round the wicket, wider of the crease, well, unheard of. Haven't seen anyone do that before or after him. Absolute legend. An artist with the ball. Yeah, but a lot of youngsters have seen him what he did. It's another full delivery onto the pads of Hassan. Probably took him almost off his stumps. Looking to be busy after lunch. You're talking about Wasim Akram, the legend.
A lot of people have seen him what he does, and of course they try to emulate. And like Ahmed said, you don't get a Wasim Akram every day. Once a century maybe. Talk about the difficulty of batting on this pitch on day 3. Saad has really bowled nagging line and length. And as Amar was making the point, he's again hurried Sohail Khan. He made the point just before lunch that even after getting so settled, Asad Shafiq, you cannot get away with making a mistake on this pitch. And that was the cause of his downfall. That's why run making is difficult. Firm hit down the ground. Field is set deep though for Sohail Khan. Just a single. Over ends. 216 for 6. Yes, and that little fact which you've just mentioned, that it is not easy to really score runs quickly. At one fall shot, Asad Shafiq played most probably the whole of his innings. That was where he got out, and that must be very encouraging for the Sindh bowlers, because apart from Abid Ali in that batting lineup of Central Punjab, not many are known to avoid or are capable of playing long innings where they have to curb their shots. To an extent, Mohammad Saad, but I completely agree with you that on this pitch, even the batters required great levels of concentration, discipline, and very, very solid technique as well. Asad Shafiq displayed all that, but one mistake, and that was the cause of his downfall. And that 100 is still eluding him. 17 first-class innings. I think now that he's gone without scoring 100. On the other hand, Sohail Khan is looking to put bat to ball every delivery. 17 innings without 100 for a player of his caliber. Very surprising. He's made two very, very telling contributions in the last few rounds. The 80-odd that we saw here against Southern Punjab really turned the game on its head in partnership with Khurram Manzoor. Muhammad Ali, to his credit, keeps running in, gives it his all at all times. Struggling with a long season now. Remember, he started from the City Cricket Association tournaments. He's a part of that. Played for the second 11. 7th game on the trot in the first 11. You see, he's bowled that bouncer very well. He's well directed, most of them. Top edge, fielder's back paddling, it will go over his head. Waqas Maqsood for a moment was interested, but that carried over his head. It's not a very long boundary on that side. Muhammad Ali's effort ball got the top edge, but Sohail Khan got lucky. An excellent cricket that. Look at that, bang shot again with that fielder on the boundary. The plan had nearly worked, but because of that short boundary, as you mentioned, Sohail Khan got away with it. Praising Muhammad Ali, he almost got instant rewards. He will run in hard again, we know that, that's for sure. Inside edge onto the pad. Another lucky one for Sohail Khan. Muhammad Ali has bowled his heart out without much luck in this second innings of Sindh.
Yes, he's managed to put him on the back foot now. Look at that. No feet movement at all. Just hung his bat, trying to force it on that offside. Got an inside edge. Lucky. Didn't play on. Another run to the total, moving the total off of Nelson's. And a testing over from Muhammad Ali. 2-2-3 for 6. Just talking about that Asad Shafiq dismissal, and that's how the bowlers are still interested, and that's where I was going to make a point that personally I would rather be in Sindh's camp with the runs on the board already, because it will be very hard for Central Punjab to repel Sindh's bowling, which are very, very well suited. And also this begs the question, when you pick a team on the first morning, you have to pick it for day 3 and 4 as well. Central Punjab, lacking a quality spinner, are really struggling. Excellent shot, Faisal. Welcome to the Sindh camp. And, well, yes, even if you look at it from an unbiased position, absolutely spot on you are. Hassan looking to be busy. There wasn't much room there. Too close to his body. Living dangerously. Last few deliveries, Sindh batters have really had the rub of the green. That's the dismissal of Asad Shafiq just before lunch. Played a drive away from his body. The ball did not arrive, and he officially scored at covers. And also, if you look at Saad's figures, 12.3 overs, just 30. He hasn't gone for many runs as well. Well done, well done. Well done. And for that cut shot, this time gets it away and will earn him a boundary. For a moment I thought it was too close to him and difficult to control, but it went down to the ground and through the hands of the fielder. Sindh batting. I think now with the old ball, look at Saad as scoring opportunities rather than the other fast bowlers. This time in the air, this time there was plenty of room and allowed Hassan to free his arms. Still went out of the thick outside half of the bat, but he flashed hard. No chance on that occasion for the fielder. Handy boundaries. That one was hit really hard. That gully fielder was a bit close to the bat, and he had no chance. Timed it well, did not try to keep it down there. That was the first boundary, and there you see a bit more width, and he really went after it. Back-to-back boundaries for Hassan. And the lead has now gone up to 200 runs. Another psychological milestone for Sindh. Make a good point. The new ball is just 7 overs away. And Hassan has realized that. He's a very street smart cricketer. He decided to take Saad on.
could be a good little period there for Sindh before that new ball arrives, because I think things will move quickly when that happens. This might just be a good thing for Sindh, that new ball arriving at this time of the day when batting seems a bit more easier than usual. If anything, I think it will most probably increase the rate of scoring, because the bowlers with the new ball try to do different things as well, and try to pitch the ball up to find that swing, and that might just give the batsman few opportunities to score quickly. It can, and for that to happen, Hassan needs to remain there, because one end is already open with lower order Sohail Khan. But if Hassan gets dismissed before that new ball, both ends will be open for Central Punjab. Frees his arms, have some of that. That big back lift and the follow through, the flourish of the bat. Take that. Looking to dominate Sohail. Not a half volley by any means. Look at that, outside off stump. Went after it hard and executed it perfectly in that gap through the covers. Excellent shot. Intentions clear of Sohail before that new ball comes into play. This one slightly fuller, once again finding the middle of the bat. Sohail Khan, 16 of 22 deliveries. That pull shot was a lucky one. Nothing lucky about that cover drive on the previous delivery. He's looking to middle the ball. I was thinking about Muhammad Ali. We've seen a lot of him this season. He has a very, very good bouncer. But for the bowler of his pace, I haven't seen him bowl many Yorkers. This one's Calypso style, front leg in the air. Sohail Khan is enjoying this. I don't think Central Punjab are enjoying this. Yes, an expected bouncer, and he was ready for that on the back foot. Didn't time it very well, but timed enough for the square leg umpire to take evasive action. Those two fielders on the boundary line, square leg and defined leg, waiting for that top edge. Hassan has really played well. He's been guilty of throwing away his innings. But this one, realizing the importance of the situation, he's really come to the party. 237 for 6. The wind has really picked up in the last 20 minutes or so. 15 kmph, 24 degrees, very, very pleasant. It's a beautiful afternoon here in north of Karachi. Even better for Sindh, as Sohail Khan is wheeling the willow. Good effort in the deep by Ali Zaryab. Talking about the conditions, Amr, cannot get any better than that for a game of cricket, and a game of cricket of such quality and intensity. Definitely the game swinging one side and the other. Once again, width on offer by that fielder has now been pushed back.
Rizwan Hussain. Runs have come at a good pace after lunch. The lead is 207. Excellent work once again behind the stumps. Ali Shan quickly removing the bails as well. Sohail Khan stayed inside his box. As we watch this one, never dragged his foot out or in the air as well, but still good work. Sohail in search of an opportunity to go big, I think. You could just sense it that he will not be just hanging around. Nicely timed once again. Looking very, very comfortable, these two. Wouldn't be a bad idea to try something out of the box. Do have Imran Dogar, both gentle off spinners. He could be an option. He's very tall. He might get some bounce on this pitch. Worth a try? What do you reckon, Amr? $75 gone, 240 for 6. Situations like these, why not use all the options available? You're absolutely right. If you're not getting a wicket, you've got to go to your irregular bowlers at times, and you never know what they might have in store. A surprise element, and then batsmen also, they get a bit relaxed, complacent, see that as a scoring opportunity, and then just might make a mistake. This partnership is 29 runs already. One for the 6th wicket was 73, so handy runs been added. Especially before that second new ball arrives, there's not much time. You cannot lose much if you just try your irregular bowler for an odd over and 2. Also give a breather to some of your main bowlers and really go hard with that new ball when that does arrive. Central Punjab certainly not in the field, but in their dugout they look like a bit panicky at the moment, realizing chasing over 200 on this pitch won't be easy. Big shot playing across the line. The impact must have been a question, and the height as well. Nasir Hussain made the call. Good replay, Amar Said. It certainly, look at it for the first time, it seems a bit high, and yeah, also the impact, most probably outside off stump, the height, good decision in the end. Spot on umpire Nasir Hussain. Sohail Khan at times looking for those expensive strokes, but I think now Sindh are in a position where there's no harm in trying that for the lower order. So we've seen on this pitch there might be one that has your name on it, and as a lower order you're less likely to keep that one out. So look for scoring opportunities. Muhammad Ali, Daisy, as he is called by his friends and teammates, always at the batter. Excellent to watch. Could be a captain's delight because he'll run in for you all day.
We've seen this many times. Oh, look at that. Off the inside edge onto the pads. It bounced away and then there was some backspin on the ball. Went very close to the stumps. This is a good angle. Bounced. Oh, that was close. Sohail Khan had no idea where the ball had gone. Good thing that it wasn't in the stumps. The batter all the time, Muhammad Ali. Sohail Khan, talk about him. He really batted well in the first innings as well. He's making a very important contribution. Remember, his runs in the first innings allowed Sindh that cushion to narrow down that first inning deficit to just 32 runs for Central Punjab. And now another important partnership. Slower delivery. Trying to deceive Sohail Khan. Look at Muhammad Ali's body language. I know he got some niggles as well. Probably feeling the pinch. 240 for 6. That's the summary of the match being played or was being played at UBL Sports Complex. Khyber Pakhtunkhwa 160 in the first innings. Balochistan were dismissed for 100. In the second outing, Khyber Pakhtunkhwa scored 264 and dismissed Balochistan for 135. Sajid Khan getting 6 for 28 in the last innings, and Khyber Pakhtunkhwa won by 147 runs was the margin of victory, and that will propel Khyber Pakhtunkhwa to the top of the summit. Mohammad Saad continuing. And from that match summary, Sajid Khan, fresh from his exploits in the test match, once again ripped through the Balochistan batting lineup and kept low. The wicket started to play tricks here as well, but Sajid's tricks was just too much for Balochistan. 6 for 28 in just 8 overs. Wow, excellent performance. Only 8 overs required to destroy the whole team. That is the confidence you get when you've won a test match for the national team. Saad continuing, still looking to pitch that ball up. He's not been afraid of getting driven. He's really showed the way to his bowlers actually. He doesn't have a lot of pace, but if you put that ball in the right area, like he's done time after time, it's really been very good in this match. 5 wickets in the match so far for him. Slip and a gully for Sohail Khan. .77 overs on 241 for 6. कराची लेग फास्ट बॉलर्स के लिए शानदार रही है.
11 विकेट्स हासिल किए ताज वली ने इस गेम में। अनफॉर्चुनेटली अपनी टीम को मैच नहीं जिता सके, लेकिन परफॉर्मेंस शानदार रही है। और साजिद खान के क्या ही कहने हैं, 8 ओवर्स में 6 विकेट्स हासिल करके मैच जितवाया केपीके को। 145 रन से के बड़े मार्जिन से इन्होंने मैच जीता है बलूचिस्तान के अगेंस्ट, एक बड़ी विक्ट्री। और इस पॉइंट्स टेबल में और इंटरेस्ट डेवलप हो गया। इंटरेस्ट की बात करें तो इस मैच में सिंध की लीड 209 रन की हो गई है। इसके बाद भी बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि ये मैच किस तरफ जाएगा। अभी कहना बर वक्त, थोड़ा पहले है वक्त से। क्योंकि बहुत शानदार बैटिंग की है, बहुत शानदार कमबैक किया है। मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे फेलो कमेंटेटर फरहान निसार मौजूद हैं। फरहान, पॉइंट्स टेबल पे क्या कहेंगे आप? जी अली, जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा ने कामयाबी हासिल की है, और ये भी शायद पॉइंट्स टेबल ही डिस्कस कर रहे हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा की टीम जो है अब वो टॉप पर चले गई। अभी कुछ लम्हात के बाद हम अपडेटेड पॉइंट्स टेबल देखेंगे केपी की जीत के बाद। तो केपी और नॉर्दर्न अगर हम दूसरी जानिब देखते हैं तो वो भी इनिंग्स के मार्जिन से फतह के करीब है। तो ये दो टीमें अभी तक टॉप पर हैं। और टॉप पे अगर कोई बॉलर नजर आए तो वो मोहम्मद अली रहा है। फिटनेस की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें, परफॉर्मेंस तो बाद में आएगी, उससे पहले फिटनेस और स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, बहुत ही शानदार बॉलिंग की है। मत भूलिए कि पहले सिटी क्रिकेट खेले हैं, फिर सेकंड 11 क्रिकेट खेले हैं, फिर यहाँ पे फर्स्ट 11 के सारे मैचेस खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए इतनी क्रिकेट लगातार खेलने के लिए फॉर अ फास्ट बॉलर। और कमिटमेंट की अगर बात करें तो वहाँ भी सबसे आगे, जब भी कप्तान को ज़रूरत होगी विकेट की तो ये सबसे पहले अपना हाथ खड़ा करेंगे। और हमने इस पूरे सीज़न में देखा, अगर चाहे ये फर्स्ट चॉइस नहीं थे सेंट्रल पंजाब की, लेकिन अब ये कप्तान की अव्वलीन इंतखाब बन चुके हैं। और हर मर्तबा जब भी कप्तान को विकेटें चाहिए होती हैं वो इनकी जानिब देखते हैं। यहाँ खुद आ जाते हैं कप्तान साद। और 3 मरतबा इस मैच में अली ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपने स्पेल की पहली गेंद पर विकेट हासिल की है मोहम्मद साद ने। जो है बड़ा खुशकिस्मत होता है कप्तान जिसमें मोहम्मद अली जैसे बॉलर जिनकी टीम में शामिल होते हैं, क्योंकि जब भी आप बॉल थ्रो करेंगे उनकी तरफ तो वो अपना 100% ही देंगे। ये क्वालिटी रही है मोहम्मद अली की। सबसे इंप्रेसिव बॉलर लगे हैं यंग बॉलर्स की अगर हम बात करें। सोहेल खान, मीर हमजा को अगर उस लिस्ट में निकाल दें, ताज वली को भी निकाल दें, तो नए सामने आने वाले बॉलर्स में सबसे ज़्यादा जानदार, सबसे ज़्यादा कमिटेड और सबसे ज़्यादा अच्छे परफॉर्मर मोहम्मद अली रहे हैं। मोहम्मद साद का आपने जिक्र किया, तो जब आपका पार्ट टाइम बॉलर फरहान 15 ओवर कर दे एक इनिंग में, तो क्या समझे हम कि आपकी बॉलिंग में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है या आपका पार्ट टाइमर बहुत अच्छा है, या कंडीशंस उसके मुताबिक हैं? ये आपकी ये जो आखिरी बात है इससे मैं इत्तेफाक करूँगा, क्योंकि जब भी इन कंडीशंस को बहुत अच्छी तरह से साथ यूज़ करते हैं, जैसी ये पिच है, जैसा इसका बाउंस है, ड्राइव अच्छा था लेकिन फील्डर वहाँ मौजूद है। और यही वजह है कि जब भी उन्होंने गेंद हाथ में लिया अपनी टीम को कामयाबी दिलवाई। और इस मैच के अलावा भी अगर हम बात करते हैं, सदर्न पंजाब का मैच आपको याद होगा जब आगा सलमान और उमर सिद्दीक एक बड़ी अच्छी शराकत कायम कर चुके थे, तो वहाँ आगा सलमान को उन्होंने मैदान से बाहर भेजा, तो वो अपनी बॉलिंग से हमेशा ब्रेक थ्रू दिलवाते रहे हैं। देखिए, मैं तो अपनी तीनों बातों पे इत्तेफाक करूंगा अपने आप से, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है सेंट्रल पंजाब में। अगर हम बात करें फ़हीम अशरफ की, ऑर्डिनरी नज़र आए हैं। वकास मकसूद कुछ खास कर नहीं पाए हैं। मोहम्मद अली सिर्फ एक ऐसे बॉलर हैं। और जब आपके मेन बॉलर्स इस तरह की बॉलिंग कर रहे हो तो पार्ट टाइमर्स को 15 ओवर तो करने पड़ते हैं। यहाँ पे 78 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, 241 पर 6 सिंध। और ये अपडेटेड पॉइंट टेबल है, जैसे मैं बात कर रहा था अली कि खैबर पख्तूनख्वा की टीम इस जीत के बाद 124 पॉइंट्स पर है। और नॉर्दर्न भी आज जब ये शाम को मैच ख़त्म होगा तो नॉर्दर्न भी आपको खैबर पख्तूनख्वा के बिल्कुल करीब दिखाई देगी। और ये जो मैच यहाँ पर खेला जा रहा है, इस टीम में जो टीम शिकस्त खाएगी वो शायद
फाइनल की जो रेस है उससे बाहर हो जाए, क्योंकि फिर 3 टीम्स के दरमियान मुकाबला होगा, केपी नॉर्दर्न और यहाँ जो मैच खेला जा रहा है उसके फातेह के दरमियान। लेकिन हतमी अभी भी कुछ नहीं है। ये जो मार्जिन एक इनिंग से बड़े से जब टीम मैच जीती है तो पॉइंट्स भी एक्स्ट्रा मिलते हैं, इस वजह से शायद जो मार्जिन है वो थोड़ा आगे निकल जाएगा नॉर्दर्न का। यहाँ पे सिंध के पास अच्छा मौका है दोस्तों, 9 रन्स की लीड है, 4 विकेट्स अभी हाथ में, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। नया बॉल अब अवेलेबल है, अब देखना होगा कि कब मोहम्मद साद फैसला करते हैं नया बॉल लिया जाए। फ़हीम अशरफ को लेके आए हैं जो कि सबसे बेहतरीन नया बॉल करते हैं इस टीम में। अभी 2 ओवर्स इनफैक्ट बाकी हैं इस नए बॉल में। और नॉर्दर्न अगर इनिंग्स से जीती है अली यहाँ पर, तो फिर 126 पॉइंट्स हो जाएंगे नॉर्दर्न के, और केपी 124 पॉइंट्स पर है इस जीत के साथ। तो फिर ये दोनों टीमें बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगी फाइनल के, लेकिन अभी भी एक राउंड बाकी है, और 9वें राउंड के अख्ताम पर भी हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि कौन सी 2 टीमें जो हैं वो कंफर्म हो गई हैं फाइनल के लिए। जहाँ सेंट्रल और सिंध के लिए बहुत इफ्स एंड बट्स हो जाएंगे फिर उसके बाद। दूसरे रिजल्ट्स के ऊपर काफ़ी मुनसर हो जाएगी इनकी सिचुएशन कि कैसे केपी मैच हारे, नॉर्दर्न बलूचिस्तान से हार जाए, ये लोग बड़ी मार्जिन से मैचेस जीते हैं, इनिंग से जीते हैं, तो बहुत इफ्स एंड बट्स हो जाएंगे। इसलिए मेरे नज़दीक तो अभी तो जो फेवरेट्स हैं फाइनल के लिए वो नॉर्दर्न और केपी हैं, क्योंकि ये मैच बहुत अहम था, 9वें राउंड का गेम, और उन दोनों ने कमाल की क्रिकेट खेली है। और यहाँ पे सेंट्रल पंजाब के पास मौका था, सोहेल खान उनके आड़े आगे, पहली इनिंग में भी, दूसरी इनिंग में असद शफीक, हसान और अब सोहेल खान, लीड जो है 209 रन की हो गई है। अगर इस मैच में सेंट्रल पंजाब की टीम कामयाबी हासिल करती है तो फिर अगला मैच सेंट्रल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान है, तो वो फिर एक तरह से नॉकआउट मैच तस्वर किया जाएगा, सेमीफाइनल की वो शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो सिंध की टीम चाहेगी कि वो इस मैच में कामयाबी हासिल करके अपनी उम्मीदों को ज़िंदा रखे, और सेंट्रल यहाँ पर जीतती है तो फिर सेंट्रल और केपी के दरमियान जो मुकाबला होगा वो देखने के लायक होगा। और सिंध को सदर्न पंजाब से खेलना है। अब्बास और नसीम शाह के आने के बाद थोड़ा मजबूत तो ज़रूर हुए हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस रही है वो इतनी खैर ख्वाह नहीं रही है। एक और रन हासिल कर लेंगे सोहेल खान। दो 242 रन, 6 विकेट्स गवा के सिंध ने बनाए हैं, और मास्टर्स रहे हैं सिंध सेकंड इनिंग के। केपी के अगेंस्ट भी डाउन एंड आउट थे पहली इनिंग के बाद, कम बैक किया। यहाँ पे भी एक ऐसे मौके पे मैच से बाहर हो गए थे, असद शफीक की मदद से कम बैक किया है, और अब इस पोजीशन में कि शायद यहाँ से मैच सोच रहे होंगे कि वो जीत सकते हैं। बिल्कुल सिंध की पोजीशन बहुत मुस्तहकम इस मैच में, और आप अभी सदर्न पंजाब की बात कर रहे थे नसीम शाह की, तो कुछ इतना अच्छा इनका कमबैक नहीं रहा। 20 ओवर्स में 137 रन दे डाले 2 विकेटों के लिए, और तकरीबन 7 रन उनका इकॉनमी रेट रहा है। तो नॉर्दर्न की टीम यकीनन खुश हुई है नसीम शाह के वापस आने से। जब उमर अमीन जैसे प्लेयर फुल फ्लो में हों तो रन्स रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके साथ फिजान रियाज ने बड़ी सेंचुरी की है। ये अच्छा शॉट है, गैप में चला जाएगा। 2 रन्स तो यकीनी मिलेंगे यहाँ पे हसन और सिंध को। लीड अब दर्द सर बनती जा रही है सेंट्रल पंजाब के लिए, लेकिन जो सिंध के कोच हैं उनका सर खुशी से झूम रहा होगा इस वक्त। तो 244 पर 6 सिंध। अभी आपने सिंध के कोच का जिक्र किया कि झूम रहे होंगे वो,
लेकिन लंच टाइम पे वो काफ़ी सीरियस नज़र आ रहे थे, कमिटेड नज़र आ रहे थे, शायद रिलैक्स नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपका कोच रिलैक्स हो जाए तो वो मैसेज सही नहीं जाता है टीम को। वो चाहते हैं कि जब तक ये मैच ख़त्म ना हो जाए ऑन योर टोज रहा जाए, क्योंकि आपने जैसे अभी जिक्र किया कि इतना कम मार्जिन है पॉइंट्स टेबल में कि आपको हर मैच जीतना है यहाँ से, क्योंकि दूसरी टीमें बहुत आगे निकल गई हैं। तो हर सूरत में जीत हासिल करनी है इस कंपटीशन में बरकरार रहने के लिए। ये शानदार शॉट है, बेहतरीन शॉट है, ये अथॉरिटेटिव शॉट है ये सोहेल खान की जानिब से। 4 रन हासिल किए। सुहेल खान अपनी बैटिंग का लुत्फ हासिल कर रहे हैं। पहली इनिंग्स में भी सिंध को मुश्किलात से निकाला और ये देखिए ये गेंद आगे पिच हुआ, इसको स्ट्रेट ड्राइव किया, मिड ऑफ के फील्डर वाइड थे, कोई मौका नहीं और एक और बाउंड्री सुहेल खान के लिए। और बासित अली की आपने बात की तो अपने प्लेइंग डेज में भी अपनी कारकर्दगी से कभी मुतमिन नहीं हुए थे और कोचिंग में भी हमने यही देखा है कि और मज़ीद ये वो चाहते हैं। एज अ क्रिकेटर अगर आप अपनी कारकर्दगी से मुतमईन होना शुरू हो जाएं तो आपकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि हंगर रहनी चाहिए, डिज़ायर रहनी चाहिए आगे से आगे बढ़ने के लिए, तभी आपकी ग्रोथ होगी, तभी आप एक एज अ यूनिट, एज अ टीम, एज अ क्रिकेटर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जहां आपकी हंगर ख़त्म हुई तो वहां आपका काम तमाम हो गया। ये क्रिकेट गेम ही ऐसी है। और इसमें जो आपके मेंटोर्स हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बासित अली ख़ुद बताते हैं कि उनके वालिद उनकी सेंचुरी पर भी खुश नहीं हुआ करते थे कि वो नॉट आउट क्यों नहीं वापस आए। खुदादा जिम खाना से खेला करते थे बासित अली अपने इब्तदाई दिनों में। जी अक्सर ऐसा होता था कि आप सेंचुरी करते हैं, नॉट आउट भी आते हैं, लेकिन टीम आपकी मैच हार जाती है, तब भी कोचेज़ आपसे खुश नहीं होते हैं। मुझे याद है अपने क्लब करियर में भी ऐसा ही हुआ, सेंचुरी स्कोर करें, टीम हार जाए, तब भी कोचेज़ आप पे खुश नहीं होंगे आपसे, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक टीम गेम है। अगर आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस करते रहेंगे और टीम मैच हारती रहेगी तो कुछ हो नहीं रहेगा। यहाँ पे नो बॉल किया मोहम्मद अली ने। इस मरतबा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोशिश की मोहम्मद अली ने, काफ़ी क्लोज था और अली वो रन्स और विकेटें ही क्या जो टीम के काम ना आए। इनफरादी जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें इजाफा ज़रूर होता है, लेकिन ये टीम का ये खेल है और इसमें आप टीम वर्क की ज़रूरत होती है। टीम की कामयाबी में हिस्सा डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पुल कर दिया है, फील्डर मौजूद है वहां पे, ओवर रन कर चले थे लेकिन संभल के वकास मकसूद, एक ही रन बन पाया। 250 रन मुकम्मल हो गए सिंध की इनिंग के। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है ये। दाद देनी होगी असद शफीक, हसन, सोहेल खान, इन तीनों को। 48 पर 3 विकेटें गवा दी थी सिंध की टीम ने और उस लम्हे यूं भी लग रहा था कि शायद ये मैच तीसरे दिन ही इसका इख्तिताम हो जाए, लेकिन असद शफीक और हसन ने जिस तरह से इनिंग्स को संभाला, असद बदकिस्मत रहे लेकिन हसन अभी भी क्रीज पर मौजूद है और सुहेल खान उनका साथ दे रहे हैं। मोहम्मद अली एक बहुत ही शानदार फास्ट बॉलर है। बहुत कम हमने देखा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किसी को इतनी जान मारते हुए। ये देखिए 80वां ओवर हो रहा है इस बॉल से। अपने स्पेल भी लंबा स्पेल किया है, 20 ओवर से ज़्यादा ओवर्स कर चुके हैं, लेकिन एनर्जी में कमी नहीं आई है, कमिटमेंट में कमी नहीं आई है, और यही आपको एक फास्ट बॉलर में देखना होता है। और उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो भी बरकरार है। विकेट से अगर इतनी मदद नहीं मिल रही लेकिन एक प्लान पर डटे हुए हैं, अराउंड द विकेट बाउंसर्स फेंके जा रहे हैं। ये अच्छा बाउंसर था, बॉडी में किया है ताकि थोड़ी तकलीफ तो हो, कुछ तो डिफरेंट करें बैटर। ऑल्दो हसन हम सब जानते हैं कि बड़ी शॉट्स मारने में मशहूर हैं, रन्स तेज़ करते हैं, लेकिन ये अनलाइक हसन इनिंग रही है। 98 बॉल्स खेल के उन्होंने सिर्फ 41 रन बनाए हैं। साथ दिया असद शफीक का, बहुत ही शानदार पार्टनरशिप असद शफीक के साथ, और हम कह सकते हैं कि इस मैच की सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप रही है हसन और असद शफीक के जानिब। बहुत ही शानदार।
इस एक बॉल के बाद नया बॉल अवेलेबल होगा, इंटरेस्ट दोबारा से डेवलप होगा। ओह, ये बेहतरीन बॉलिंग, कमाल का स्पेल किया है मोहम्मद अली ने। 26 ओवर में 70 रन देकर 1 विकेट हासिल किए, लेकिन ये फिगर्स उनकी एफर्ट को सही बयान नहीं करते हैं। इससे बहुत बेहतर बॉलिंग की है इन्होंने। 80 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ, 250 पर 6 सिंध। पॉइंट्स टेबल पे एक बार फिर नजर मारते हैं। 3 मैचेस जीते हैं खैबर पख्तूनख्वा ने अपने इस सफर में। वलीद याकूब ने इशारा कर दिया कि नया बॉल अवेलेबल है और आप ले सकते हैं, और मोहम्मद साद को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई नया बॉल लेने में, और स्ट्रेट अवे नया बॉल ले लिया, फ़हीम अशरफ को दिया है कि क्या कर सकते हैं आप नए बॉल से। इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था मोहम्मद साद के पास, और फ़हीम अशरफ के हाथ में नया गेंद है। लाहौर के करीबी इलाके फूल नगर से ताल्लुक़ है इनका, आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे फूल नगर के हवाले से। जी हाँ, राना फ़हीम अशरफ इनका पूरा नाम है। तो राना बरादरी काफ़ी मौजूद है वहाँ पे, मेरे काफ़ी पुराने दोस्त उस इलाके से हैं। और अच्छा शॉट था, लेकिन टाइमिंग ज़्यादा मौजूद नहीं थी। मुझे लगा जैसे तेज़ गया है बॉल, लेकिन उस तरीके से टाइम नहीं हुआ था बॉल। लकी रहे कि सीधा फील्डर के हाथ में नहीं चला गया। एक और रन हासिल कर लिया है यहाँ पे सोहेल खान ने। नया बॉल बहुत ट्रिकी हो सकता है फरहान, आपको विकेट हासिल करने के चांसेस तो होते हैं, लेकिन रन्स भी तेज़ी से बनते हैं। बॉल बहुत तेज़ी से ट्रैवल करता है, और लीड जो है वो 219 रन की ऑलरेडी हो चुकी है। बैलेंस ढूंढना होगा यहाँ पे। और हसन तो किसी मूड में है नहीं कि अपनी विकेट गंवाएं। उन्होंने बहुत शानदार इनिंग खेली, 41 रन 100 बॉलें खेल के इस टूर्नामेंट में पहले 250 रन की बड़ी इनिंग खेल चुके हैं। कॉन्फिडेंस तो है, फॉर्म तो है, और क्या ही शानदार टाइमिंग है इस परफॉर्मेंस की। और यहाँ पर सिंध का प्लान यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रन्स जोड़े जाएं, क्योंकि अभी भी इस मैच में बहुत वक्त बाकी है। कल का पूरा दिन है, अभी हम दूसरे सेशन में हैं, तो काफ़ी वक्त मौजूद है सिंध के पास कि एक बड़ा स्कोर खड़ा करें और एक अच्छा टारगेट दें सेंट्रल पंजाब की टीम को। सिंध की बॉलिंग देखते हुए तो लगता है कि बहुत अच्छा टारगेट ऑलरेडी सेट कर लिया है इन्होंने। 219 रन चौथी इनिंग में कभी भी आसान नहीं हुए, और यहाँ से 4 विकेट्स अभी हाथ में हैं, तो अगर हम सोचें कि 250 तक तो कम से कम ये यहाँ से जाना चाहिए। ओ, हवा में था थोड़ी देर के लिए बॉल, क्योंकि अब नया बॉल है, फील्ड खुली हुई है, सिंगल्स तो अवेलेबल हैं ही, क्योंकि आपको रन्स भी रोकने हैं, आपको विकेट्स भी हासिल करनी है। कोई बीच का रास्ता है कोई जो इख्तियार कर सकती हो सेंट्रल? सेंट्रल ने देखिए बीच का रास्ता ही इख्तियार किया हुआ है कि 2 स्लिप भी हैं, बाउंड्री पर भी फील्डर्स तैनात है, तो यहाँ थोड़ा सा 3 से 4 ओवर अटैक करना चाहिए सुहेल खान और हसन अली पर, क्योंकि विकटें चाहिए सेंट्रल को। अगर ये विकटें नहीं मिलेंगी तो ये जो लीड हमारी स्क्रीन के बिल्कुल नीचे नज़र आ रही है ये बढ़ती जाएगी। इक्यासी ओवर्स का इख्तिताम हुआ 255 पर 6 से। मोहम्मद अली ने बहुत लंबा स्पेल किया था पुराने बॉल से, क्योंकि डेस्परेट थी सेंट्रल पंजाब विकेट्स के लिए। शायद उनको थोड़ा पहले रेस्ट दिया जा सकता था नए बॉल आने पे, और नए बॉल पे उनका इस्तेमाल किया जाता तो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते थे फरहान। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं वकास मकसूद अब नया गेंद करेंगे, तो ये सबसे ज़्यादा तजर्बाकार बॉलर हैं
और इस ग्राउंड पर इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। जो बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस है वो भी इनके नाम है। हवा भी कदरे तेज़ है आज। कब तक याद करेंगे उस परफॉर्मेंस को हम? ये नया दिन है, नई परफॉर्मेंस, नया जज्बा चाहिए होगा वकास को। अली वो परफॉर्मेंस शायद 4 साल पुरानी है, लेकिन अभी इसी राउंड में जो आखिरी मैच खेले हैं वहाँ भी उन्होंने 4 विकेटें हासिल की थी। जी आप बॉलर तो शानदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं फरहान, लेकिन शायद मुझे लगता है कि इस पिछले 2-3 इनिंग्स में रिदम हासिल नहीं हुआ है, उस तरह के स्विंग हासिल नहीं हुआ है इन्हें जिसकी उनको आदत है, जो वो करते आए हैं। ज्यादा पेस भी नहीं है, इसीलिए शायद मुझे लगता था कि अगर मोहम्मद अली को सेव किया जाता, नए बॉल से अटैक किया जाता पूरे तरीके से, ये टेल एंडर्स बैटिंग कर रहे हैं, ज़्यादा चांसेस मोहम्मद अली के थे विकेट्स हासिल करने के, लेकिन उनका प्लान डिफरेंट प्लान है, कर सकते हैं। क्योंकि ये भी हम कह सकते हैं कि मोहम्मद अली को लंबे स्पेल्स के लिए कप्तान इस्तेमाल करते रहे और पुराने गेंद से जब किसी को कोई मदद नहीं मिल रही थी तो वहाँ काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हुए हैं मोहम्मद अली। लेकिन वकास को गेंद आगे पिच करना होगा, ड्राइव पर उकसाना होगा सुहेल खान को। लेंथ बॉलिंग बहुत की है वकास ने, यही गिला रहेगा, क्योंकि इनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे बॉल करें, तभी कोई मदद हासिल होगी, तभी कुछ एजेस हासिल होंगे। ये मोहम्मद अली आपके स्क्रीन में सामने है, शानदार कैरेक्टर, बहुत ही जानदार बॉलर हैं। 4 रन मिल जाएंगे, शानदार शॉट। या तो आप शॉट करते हैं या आप बहुत मुंह में करते हैं, यही खामी रही है वकास की। आसानी से 4 रन हासिल किए और जिस तरह की बैटिंग फॉर्म है सोहेल खान, ऐसी डिलीवरीज को नहीं बख्शने वाले हैं। और अली अगर नए गेंद से ऐसा ही गेंद करना था तो इससे बेहतर था कि ना ही करते। ये देखिए आगे गिरा हुआ, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि मुंह में गिरा हुआ गेंद था, इसको ड्राइव किया सुहेल खान ने। और ये बाउंड्री लाइन के जो बिल्कुल साथ जो दीवार उसके टकराने के बाद इसकी जो शाइन और इसकी शक्ल है उसमें भी काफ़ी तब्दीली पैदा हुई होगी। और एक बार फिर मारना चाहते थे, ये बेहतर बॉलिंग है, इस पे ज़्यादा कंसिस्टेंटली बॉलिंग करना होगी। और फरहान जितनी ज़ोरदार शॉट थी तो मुझे लगा होगा कि दीवार से टकराने के बाद बॉल भी चकरा गई होगी, जितनी ज़ोरदार शॉट थी। ये वो लेंथ जिसकी हम बात करते हैं, शाह फैसल पिछले लगभग 1 महीने से इस लेंथ पे लोग फास्ट बॉलर्स को बार बार कह रहे हैं कि यही लेंथ है, इसी लेंथ पे बॉल करना है, लेकिन उनकी नहीं सुन रहे हैं। मेरा ख्याल है उन्हें ये बात माइक पर नहीं बल्कि फास्ट बॉलर्स के पास जाकर कहनी चाहिए, फिर सुनेंगे वो। एक बार फिर बड़ा हेड। अब लाइसेंस हासिल है सोहेल खान को, क्योंकि लीड 227 रन की हो गई है, 31 रन पर मौजूद है। यहाँ पे 20-30 और तेजी से रन बनाए हुए बहुत काम आ सकते हैं। वकास मकसूद डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, कहना होगा। शाह फैसल की अगर आपने बात की तो उनका बस नहीं चलता है कि वो फास्ट बॉलर्स के पास जाके उनको स्पॉट्स के ऊपर ले जाएं कि भाई यहाँ पिच करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बबल की वजह से ज़्यादा करीब जा नहीं सकते हैं वो। लेकिन उनका यही कहना है कि मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। और 82 ओवर्स भी इस दौरान मुकम्मल हुए, 259 पर पहुँच गई है सिंध की टीम 227 रन की बड़ी बढ़तरी के साथ। सवाल यह है कि विकेट कैसे हासिल की जाए सेंट्रल के लिए, बड़ा सवाल है। इससे पहले असद शफीक मोहम्मद हसन की एक पार्टनरशिप, और अब मोहम्मद हसन और सोहेल खान की यह पार्टनरशिप इस मैच को बहुत दूर ले गई है सेंट्रल से। विकेट्स हासिल करें, 250 के अंदर आउट करने की कोशिश करें, 250 की लीड की,
के अंदर अंदर अगर आउट करने में कामयाब होते हैं तो शायद कोई चांस हो सकता है, क्योंकि चौथे दिन वे पिच फास्ट बॉलर्स को फिर से असिस्ट करती है। और ये बेहतरीन बॉलिंग है। इस लेंथ पे कंसिस्टेंटली बॉल करना होगा फ़हीम अशरफ को, जो कि मिसिंग रहा है। या नए गेंद का इतना अच्छा इस्तेमाल नहीं देखने को मिला, लेकिन ये गेंद बहुत अच्छी थी। खेलने के लिए गए और बिल्कुल बैट के करीब से होता हुआ ये गेंद गया। और पिछले ओवर में वकास मकसूद ने भी 3 गेंदें ऐसी ज़रूर की थी जिस पर ललचाया सुहेल खान को, और वहाँ पर स्लिप के फील्डर्स हरकत में आ सकते थे। तो यही लेंथ बरकरार रखनी होगी अगर वो जल्द से जल्द विकेटें हासिल करना चाहते हैं इस नए गेंद पर। चांस हो सकता है यहाँ पे बॉलिंग एंड पे। ये एफर्ट जो है ये कहानी बयान करती है आज के दिन का सेंट्रल के लिए। ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, एफर्ट नहीं नज़र आ रही है। बहुत जल्द हम देखेंगे शायद मोहम्मद अली को दोबारा से स्पेल करवाया जाए। अली, सवाल यह है कि जफ़र गोहर फील्ड में क्यों आए हैं, क्योंकि मैच से पहले इनकी तबीयत कुछ नासाज थी, कल शायद ग्राउंड में भी नहीं आए और आज ये फील्ड में मौजूद है मुतबादिल फील्डर की हैसियत से। इस क्यों का जवाब तो शायद जफ़र गौर खुद ही दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं बेंच के ऊपर बिलावल इकबाल मौजूद हैं जो कि शानदार फील्डर हैं। हमने देखा कल जिस तरीके से एहसान अली का रन आउट किया उन्होंने, तो वो एज अ फील्डर ही एनर्जी लेके आते हैं इन द फील्ड। जहाँ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बड़ा नुकसान कर सकती हैं, बड़े नुकसान से बचा सकती हैं। क्योंकि जफ़र गोहर भी बहुत अच्छे फील्डर हैं, लेकिन जब वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है तो फिर उनसे फील्डिंग क्यों करवाई जा रही है। एज, ओह किस्मत बिल्कुल साथ नहीं है सेंट्रल के। ये 4 रन मिल जाएंगे। दूर था बॉल विकेट कीपर से भी और स्लिप से थोड़ा आगे। तो जो लक है वो सोहेल खान और सिंध के साथ है। 264 रन अब हो गए हैं 6 विकेट्स के नुकसान पे। लीड बढ़कर चली गई है 232 रन पे। ये बहुत अच्छा गेंद था, इसको खेलने के लिए गेंद जेन्युइन एज था, लेकिन विकेट में अब शायद इतना बाउंस बाकी नहीं रहा कि ये गेंद कैरी करती और सीधा स्लिप फील्डर के हाथों में जाती। बेहतर लेंथ है ये, ऐसी लेंथ जहां पे बैटर को थोड़ी मुश्किलात पैदा हों अपने फुटवर्क में। और सोहेल खान हमने देखा बैट को हैंग कर गए लेंथ की वजह से। हमने देखा है कि अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, इन वेरिएबल बाउंस की हम बात करते हैं, बॉल लो रहता है बहुत कि कौन भी करता है, तो इनडिसाइसिव जरूर हो जाता है बैटर। बड़ा शॉट खेले हैं शानदार तरीके से, ये कमाल की ऑन ड्राइव है। अब एज अ टॉप ऑर्डर बैटर खेलते हुए सोहेल खान बहुत ही शानदार तरीके से 4 रन हासिल किए। जी हाँ, रन उनके पीछे अभी भी 39 पर पहुंच चुके हैं और नए गेंद का कतन भी कोई लिहाज नहीं किया। ये देखिए कदमों का इस्तेमाल किया, आगे आए और ये ऑन ड्राइव खेली और अब फील्डर गेंद की तलाश में निकल गए हैं। भले जो मर्जी कह लीजिए, मुझे अभी भी यही लगता है कि जो नया बॉल है वो मोहम्मद अली से करवाना चाहिए था, क्योंकि वो ऐसे बॉलर, वाहिद ऐसे बॉलर सेंट्रल में लगे हैं जिनमें थोड़ा दमखम नजर आया, जिनमें जान नजर आई है, जिन्होंने अच्छे तेज बाउंसर किए हैं। सोहेल खान बैटर की तरह सोचते हुए आगे। आबिद अली का बल्ला हमने देखा था इसी पॉइंट से टूटा है और इस बार सोहेल खान का। और इस वक्फे का फ़ायदा उठाते हुए शायद अंपायर्स ने भी डिसाइड किया कि पानी का वक्फा कर लेते हैं। 268 पे 6 सिंध।
Sindh has piled on the runs after lunch. No wickets. Started at 211, so 57 runs have come in the first hour after lunch. And 39 of those from the bat of Sohail Khan. Second new ball has been in play now for 2.5 overs. No rewards for Central Punjab just yet. This will be the final ball of the over. The drinks were taken when that boundary was hit and the ball was lost for a moment. Look at that. Beautiful back foot punch from Sohail Khan. Will come across for the second runs to finish off the over. 270 for 6. And this has been a very good afternoon session for Sindh. Once again, with me in the comm box, Amar Said. Good afternoon, Amar. Thank you, Shah Faisal. Very good afternoon to all the viewers. First inning failures and second inning comebacks continue to be the norm of Sindh batting. And the way they have done that, really they have put a new theory into the contest here at the State Bank Sports Complex, that putting the opposition in always isn't the right thing. Qas Maqsood showing some aggression, but yes, Sindh has shown that despite batting first on that first day, green looking pitch with moisture, you still have the ability to make a comeback on this pitch, provided you pick the right balance of your team. And because it's almost a certainty that they're going to bat first, they've been able to put the choose the right combinations. Would that be a fair call, Amar Said? Yes, most certainly. And that fact that they'll be bowling in the fourth innings is, as you can witness now, will most probably be the deciding factor, with the likes of Abrar and the exploits of the experienced fast bowlers Sindh have. It could well also be a master stroke by the away team if they show up at the venue and the home team is thinking that, well, they're going to have to bat first anyway, and they pick the team according to that, but the away team decides against it, can really do a double bluff and pick their team according to the conditions to be able to bowl in on the fourth innings. Bit too late for that with just one round to go. Yes, food for thought though. Hassan continuing to play a very, very important innings. He's concentrated very hard, has allowed Sohail Khan to play his natural game, because he knows that Hassan will be holding the other end. With on off dismissive. He really smashed that one through the gap. Waqas is looking to pitch that ball up, but no movement whatsoever, and a thumping cover drive. Yeah, look at that, width of it. You cannot bowl there to someone who's been batting for nearly a day. Easy pickings for him now. This has been a very unlike Hassan innings, like you said. When Sohail Khan came, he just dropped the anchor and allowed Sohail Khan to express himself. Because remember, Hassan himself is a very busy cricketer. He doesn't like to be bogged down. He happily played second fiddle to Sohail Khan. In the air and gone!
What a reflex catch from Waqas Maqsood. He stuck the left hand out and the ball got stuck in the mitts. Hassan cannot believe his luck. But Waqas Maqsood has finally given Central Punjab something to smile about. Excellent catch, that one. Look at that. Trying to drive. Not really there. And there you see, not a half volley. Drove it uppishly, and what a catch by Waqas. Missing out once again on that 50. 49. Ahmad Hassan, 274 for 7. Run partnership as we watch Hassan going up the stairs to the changing room. And Mir Hamza, Tabish Khan rather, coming out to bat, another nuggety character. He also doesn't like to give his wicket away cheaply. Could be a good foil for Sohail Khan. 144 matches, 1766 runs, 550s to his name. Tabish, 67 is his best score. He has joined Sohail Khan. Even though Hassan did miss out on that 50, but I think very, very important innings as far as Sindh is concerned. They are in this position because of that partnership between Asad, Shafiq and Hassan yesterday and again today in the first hour. In fact, the whole of the first session. Asad lost his wicket just before lunch. Magnificent work. 73 for the 6th wicket, 63 for the 7th wicket. Hassan did play his part in both these partnerships. Sohail Khan goes up and over, and it will go over the fence. It wasn't a clean connection, but had just enough to take it over the fence. And Sohail Khan is making his intentions very, very clear. Short of authority, that one. Not really recommended, but look at that. It's not a half volley, played on the up, but clears the field. Excellent. Just 5 runs away from the second 50 in the game. He bowled well, didn't get many wickets, but his contribution with the bat has been immense in this. Pull that one. Fahim Ashraf with a little bit more behind the ball. Obviously, he didn't like getting hit over the head. Central Punjab has really looked short of ideas today. One has to say this game was well in the balance when it started this morning. They've got only 2 wickets in the day's play. Look at that one. A bit quicker this time. And very close to him. Missed that pull shot. Square leg is back, mid-off or up. Good delivery, Fahim Ashraf. Yeah, talking about Central Punjab, the duo of Fahim Ashraf and Waqas Maqsood hasn't really come to the party. 1 for 72 for Fahim Ashraf. Of 19.3 overs. As we look at Sohail Khan's innings, at strike rate of 76, 6 fours and a 6. He's really pushed the scoring along since he come in.
will bring Tabish Khan onto the strike for the first time. The variety in Sindh's bowling line has been and will be a big difference in this match eventually. The Sindh bowlers were most probably a little more experienced than the Central Punjab bowlers, know how to bowl on this track. The lengths they've been able to achieve have been far better. And if you compare it with the Central Punjab bowlers, they've been bowling on those regular lengths, a bit backward or back of a length bowling, which I think they've missed the point here. And then again, I will have to come back to that X factor, Abrar. The spinner hasn't been able to play any role for Central Punjab. Big drive from Tabish, aerial for a moment. Didn't carry to Zafar Gohar at backward point. Overdone, 279 for 7. Sindh seems to have better know-how of how to play on this venue, which combinations to choose, and despite being the home team, not having the advantage to bowl first, they've really made it work in their favor because they knew what combinations to pick and they knew how the wicket is going to behave on day 3 and 4. They did fall behind a couple of occasions in the game on the first 2 days or on the first innings, but then they knew the method and the process to make a comeback. I have to say they had the discipline and the skill as well to match their planning. Absolutely, and they are doing it second match in a row on this ground. More or less similar situation in the previous match, and they came out of it with flying colours, and today as well they have recovered very well. Now are more or less in the driving seat with that 247 run lead. It will not be easy for Central Punjab in the 4th innings. Just a while ago when you're talking about the bowling lineup of Sindh, it has a lot of variation. 3 seamers, Sohail Khan being the tall, gets extra bounce because of his height. Tabish slightly shorter with skiddy action and bowls with a lot of nip. And then the left arm of Mir Hamza, who has the abilities to swing both ways. And then complemented nicely by the presence of Abrar in the spinning department. Once again, easily swiveled away onto that sweeper fielder, Sohail Khan. I think Sindh hold all the aces from here on in. As I said, the variety of bowling Sindh possess. We've talked about Sohail Khan, who loves to swing it away from the batsman. Then Tabish Khan, who loves to bring it back in. And the left armer, who loves to swing it both ways or has the capability of swinging it both ways. Gun barrel straight from Waqas Maqsood on the other hand. He hasn't really found any movement at all. Just that angle, which is very predictable. And although he has his best bowling figures on this ground, really looked off color in this match. Disappointing, at least.
Once again that angle with the new ball. Really, that tells you that he hasn't got it going. That's why he's relying on that change of angle. If that was moving for him, he would never change this angle that soon. Not in rhythm, having a bad game. Absolutely correct. Off color, off rhythm. Not helping Central Punjab's cause. .280 for 7. We briefly touched this yesterday about the Sindh batters not being in rhythm and try to be hasty in their stroke play, not being able to concentrate fully. And we came up with the notion that maybe it's a long season, they're in the bubble, they're mentally exhausted. Could that be the case with the bowlers as well? Or I might just add, the PSL draft happened this week, and a few of the hopefuls, if they don't get pick up, sometimes it may just affect you mentally. Although they're professionals, they're also humans. But that would be a pity if that is what is going in their minds at the moment. Mindset that needs to be changed. And again, I would like to add here that Sindh, even though they are winning matches and they do very well in the second innings, but it must be a matter of concern for the coaches that they are failing in that very important first innings very regularly now. It's been most probably the third match where they have failed to make any impression with the batting first. Yeah, that the collapses are too frequent, probably for the liking of the coaches. And they've made a couple of recoveries. They've stumbled on a couple of other occasions as well in the second inning, and as a result have lost heavily. In the meantime, Central Punjab, nothing's happening in the field. They've now moved to 2 slips and 2 gullies. Long on and long off are back. The mid-on is hanging 2/3 of the way. See the 2 gullies and a slip, pretty scattered on the onside. That ball is short and wide. No protection on that side. Sohail Khan will get to his 50 with that boundary. Back-to-back 50s for the big man from Sindh. Coming handy with the bat, with valuable runs. Well played. What a contribution, what a brilliant innings once again. And he's raising 2 bats, most probably for both the 50s in 2 innings. Excellent batting. And needless to say that Sindh are in this position of strength because of that lovely innings in the first innings, and now again taking them to a very strong position with yet another 50 in the second innings. Excellent contribution. Field was set deep on the onside, and look at Fahim Ashraf. Poor delivery, and Sohail Khan got plenty of weight, and that's that moment of celebration. I don't think I've ever seen a batsman raising 2 bats for scoring a 50, but this is Sohail Khan. A wonderful moment. We've all said this many times. He enjoys his batting. Playing a miss from Tavish. Well, so much white ball cricket being played nowadays.
It's hardly do you see batsmen who just cannot do anything with the bat. If you ask me, I miss those days when you had those Walshes and McGraths, even though he has a Test 50 at the very end of his career, but you know what I mean. 285 for 7. Coach Abdul Razak, he must have come into the ground with high hopes this morning. Must be disappointed. You can tell by his expressions. That's where the leadership is coming from, because there's nothing on the pitch. Mohammad Saad has really looked out of his depth in that role of a captain. He's been very handy with the bat, excellent with the ball. But that's just about it. Leader of a very, very big team. That leadership hasn't been visible on the field. 2 slips and a gully for Waqas Maqsood. To wait for the umpire's signal. A leg by. Now Waqas Maqsood will have a chance to attack Tabish for almost the entire over. But if you look at the way the lower order is going about things for Sindh, I think definitely they have this on mind to put the opposition into bat for an hour most probably today. It's not an easy time to bat. Last hour in the evening, the ball does wobble around a bit, and then those nerves when you're not sure how to go about your innings. So just might, if you just can get a couple of wickets that time, would definitely make the task easier next morning. Tabish off the mark. That definitely will raise the question. Do you think they will get that far where they will have to make a decision? That means that they will be playing till an hour after tea to be able to be in a position to make a decision of declaration. Well, Central Punjab would have been ground to dirt by then. Well, by the way things look, absolutely doesn't seem that a wicket is coming from anywhere. Well, as we watch this single, you found an ally for your theory in the com box. I've been left alone. I initially thought they would never get into that position where they would have to make a decision, because they won't go that far. But well, if you and Ali Yunus think that might be the case, then who am I to disagree? That will really be very, very painful for Central Punjab supporters, though, if that were to be the case, because they literally will be out of the game. It's because once you get into that mindset, I'm talking about Central Punjab batting in the last innings, once you get into that mindset of trying to defend and trying to save the match, usually what we have seen is that it doesn't work that way. Usually you crumble under pressure. Have to wait and see how Central Punjab go about the chase, or would they go to chase the runs or play for time?
Both of you theories suggest that they're not likely to get any wickets anytime soon. See if Ali Yunus can help them. 288 for 7. Well, it's not just my theory, Shah Faisal. That is what is evident from the body language of the Central Punjab team at the moment. Because it's very important to keep believing that you will get a wicket, or you will get a breakthrough, or you will get a favor or a decision in your favor soon. Unless you don't believe that, it will never happen itself. If any man can make it happen, it will be this man, Muhammad Ali. He's bowled a longish spell with the old ball, but then that lackluster spell with the new ball. Fahim Ashraf and Waqas Maqsood, the captain had to turn to him. Could he deliver that blow that Central Punjab badly needs with that newish ball? Well, if you ask me, I'm starting to feel a bit sorry for Muhammad Ali. Absolutely no support from the other end, and he has bowled his heart out, no doubt. He's really bowled without any luck. 10 out of 10 for effort from Muhammad Ali. He really was struggling physically with tiredness in the previous spell, towards the end of that spell, because he was banging in that old ball. Still bowled quite a few good bouncers, especially to Hassan. But then, like Amar said, absolutely no support from the other end. Spin is non-existent in Central Punjab's bowling effort in this innings, although he got a wicket yesterday. If you look at his previous spell, he put everything into it. Quite a few short balls, bowling the quick bouncers. I was thinking that he won't be bowling at least till tea after that spell, but I think that's a forced change, as you said. Lackluster performance with the new ball from the other two bowlers has forced the captain to bring him on again. He must be a captain's delight, like I said earlier. Real workhorse. Sohail Khan, on the other hand, has really enjoyed some batting form in this game, and it'll be very fair to say that his runs in the first inning and now in the second inning could in the end prove to be the most telling contribution. Wide of the crease, keeping it low from that same spot that we've seen many times. I don't think it will please Muhammad Ali or Central Punjab anymore. It will please Sindh. Moved away as well. Well, do you think if things remain the same, do you think they will be declaring today, Shah Faisal? Or would they like to play throughout the day? Not till very late in the day, in my opinion. Like you said, maybe give him a late bat for a few overs, because they will be taking time out of the game as well. And batting them out of the game means that their job will be even tougher tomorrow. 289 for 7.
सिंध की लीड 257 रन की हो गई है। ताबिश खान नॉट आउट है 1 पर और सुहेल खान अपने इस मैच की दूसरी हाफ सेंचुरी मुकम्मल की, 54 रन पर मौजूद हैं 73 बॉलिंग खेल के। और एक ऐसे शख्स जिन्होंने सिंध पे बिलीव किया था पहले दिन की परफॉर्मेंस के बाद भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, अली सलमान मेरे साथ कमेंट्री पे मौजूद हैं। अली, दाद देनी होगी आपकी प्रेडिक्शन की, एक बार फिर आपने हमें गलत साबित किया है, एक बार फिर हम आपके मद्दा हो गए हैं। थैंक यू सो मच अली। लेकिन चूंकि जाहिर सी बात है मैं लोकल हूँ, कराची हाइट्स हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है इस पिच का, और डेफिनेटली इसी तरह लाहौर के पिचेस को आप बेहतर जानते होंगे एज़ कम्पेयर टू मी। तो इसी वजह से मैंने जो ये प्रेडिक्शन जो है वो की थी कि ये मैच जो है वो चौथे दिन तक लाजमी जाता नज़र आ रहा है। हुआ थोड़ी देर के लिए जाए, लेकिन मैच जाएगा ज़रूरी है चौथे दिन तक। और यहाँ हमने देखा कि 257 रन की अब लीड सिंध को हासिल हो चुकी है। एक बड़ा ज़बरदस्त ये मैच होगा दोनों टीमों के पॉइंट ऑफ व्यू से। शानदार कम बैक रहा है ये सिंध की जानिब से, एक ऐसे टाइम पे जब लग रहा था कि शायद सिंध इस मैच में पीछे रह जाएगा। एक हीरोइक इनिंग खेली असद शफीक ने, 97 रन, उनका बहुत अच्छा साथ दिया। मोहम्मद हसन ने अनलकी रहे कि 50 रन मुकम्मल नहीं कर सके, 49 रन बना सके। और अब सुहेल खान जो 54 रन पर मौजूद हैं, 73 बॉलों का उन्होंने सामना किया। शानदार इनिंग खेली, अपनी बैटिंग फॉर्म को जारी रखते हुए 50 रन से मुकम्मल किए थे पहली इनिंग में, और यहाँ पे भी 50 रन मुकम्मल किए। मोहम्मद साद जो कि सेंट्रल पंजाब के सबसे कामयाब बॉलर रहे हैं इस इनिंग में, 2 विकेट्स हासिल किए 42 रन देकर। ये स्टोरी बताती है सेंट्रल पंजाब की बॉलिंग स्ट्रेंथ की, कि आपके पार्ट टाइम बॉलर को जब इतनी बॉलिंग करनी पड़े तो क्वालिटी दिखाती है कि कितनी कम है। बड़ा शॉट खेले हैं, कलाइयों की मदद से फील्डर मौजूद है लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। सुहेल खान इस फॉर्म को कंटिन्यू रखते हुए अब इस अपनी बारी को एंजॉय कर रहे हैं, जैसा शॉट जहां चाह रहे हैं वहां खेल रहे हैं। जी हाँ, सुहेल खान ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से पिच के बिहेवियर को समझें, और अब तक बड़ी उम्दा बैटिंग की है सुहेल खान ने। जब चाह रहे हैं, जहाँ चाह रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं खेलने में कामयाब हो पा रहे हैं। जितनी दाद दी जाए सुहेल खान को कम है, क्योंकि उनकी इस इनिंग की बदौलत इस वक्त 261 के मजमूए तक सिंध की टीम पहुँचने में कामयाब हुई है। जहाँ कमिटमेंट लेवल की दाद देनी होगी, बासित अली को भी दाद देनी होगी। बहुत शानदार तरीके से कमबैक किया उनकी टीम ने, और पहली बार नहीं देख रहे हैं हम केपी के अगेंस्ट भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी, डाउन एंड आउट थी टीम और वहां से कमबैक किया, मैच जीते। और यहाँ पे भी ऐसा लगता है जैसे 261 रन की लीड के बाद फेवरेट होंगे, यहाँ से मैच जीतना चाहिए सिंध को, क्योंकि चौथे दिन बॉलिंग करेंगे, ज़्यादा आसान नहीं होगी सेंट्रल की बैटिंग के लिए। एक्सपीरियंस साइड जो सिंध की है बॉलिंग में, उनका सामना करना। विकेट कीपर को ऊपर बुला लिया है क्योंकि कदमों का इस्तेमाल किया था पिछले बॉल पे सुहेल खान ने, क्योंकि ज़्यादा पेस मौजूद नहीं है। फील्ड स्कैटर्ड है। अब लेग साइड पे 3 फील्डर्स मौजूद हैं, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग पे। लेकिन सुहेल खान जब हिट मारते हैं तो वो हिट रहती है, बड़ी हिट रहती है। ये बेहतरीन बॉलिंग है, सबसे बेहतरीन बॉलिंग मोहम्मद अली के बाद अगर किसी ने की है तो वो मोहम्मद साद हैं। 2 विकेट्स हासिल किए, 2 क्रूशल विकेट्स हासिल किए। असद शफीक, खुर्रम मंजूर की बड़ी विकेट्स इस इनिंग में भी लेने में कामयाब रहे हैं। जी हाँ, साद ने बड़ी ज़बरदस्त पहली इनिंग में भी बॉलिंग की और इस इनिंग में भी, और अच्छा लाइन को मेंटेन किया। इस मरतबा ऑन पे खेलने में कामयाब हुए। एक बैट्समैन की मानंद खेलते नज़र आ रहे हैं सुहेल खान, और प्रूव करते हुए गुज़िश्ता मैच में काफ़ी आवाज़ें लगा रहे थे ये अपने पवेलियन से, और जब बैटिंग करने गए तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन उस गलती का ज़ाला करते हुए सुहेल खान, और जब इन्होंने अपने क्रिकेट का आगाज़ किया तो ये इरफान पठान से बहुत मुतासर थे और सुहेल पठान के नाम से खेलते थे। उसके बाद फिर उन्होंने अपने नाम को तब्दील किया और अब सुहेल खान। और जो हम पहाड़ियों पे मकानात दिखाते हैं, इन्हीं के पीछे एक पहाड़ी जिस पे इनके कोहली को जब इन्होंने आउट किया था तो इनके नाम से एक पहाड़ी को मौसूम किया गया था। बहुत ही शानदार कमिटेड क्रिकेटर हैं, अग्रेशन वाले क्रिकेटर हैं। इन पहाड़ियों के साथ आप जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, बल्दिया टाउन इसके अकब का इलाका है, वहाँ पे इनके नाम से पहाड़ी मौसूम है। 294 हुआ स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पे 90 ओवर के खेल के बाद। खूबसूरत पवेलियन बिल्डिंग का मंजर, जिसके दोनों अतराफ में टीमों के पवेलियन मौजूद और दरमियान में चेयरमैन बॉक्स। ये जो आप कर्टन देख रहे हैं वाइट, ये चेयरमैन बॉक्स है। इसके नीचे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कुंदा है, और साथ साथ ऊपर जो
ट्रेडिशनल क्लॉक है। मोहम्मद अली अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। 28वां ओवर कर रहे हैं इस इनिंग का। बहुत लंबी बॉलिंग की है, लंबा स्पेल किया है, 71 रन देकर 1 विकेट हासिल किए। लेकिन ये नंबर सजेस्ट उनकी परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, क्योंकि बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की गुज़िश्ता इनिंग में मोहम्मद अली और साद ने यहाँ पे इतने इफेक्टिव अब तक अली साबित नहीं हुए। और इसकी वाहिद वजह अली मुझे ये नज़र आ रही है क्योंकि गेंद को आगे खिलाने की बजाय थोड़ा पीछे रखते हैं, और इस पिच पे अगर आप पीछे रखेंगे गेंद तो बैट्समैन के लिए ईजी होगा उसको हैंडल करना और मैनेज करना। शायद यही वजह है कि इस इनिंग में इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है मोहम्मद अली। डीप इन द क्रीज बैटिंग कर रहे हैं सोहेल खान। कट मारना चाहते थे जोरदार तरीके से, अब ऐसा कर सकते हैं क्योंकि अब थोड़ा सेफ जोन में आ गई है सिंध। 262 रन की लीड हो गई है। अपने शॉट्स खेलेंगे, हम पहले भी बात करते हैं, जितने भी रन यहाँ से ऐड करेंगे ये टेल एंडर्स, वो बोनस होगा सिंध के लिए। शॉर्ट बॉल थी, ऑप्शन से बाहर थी, इसको कट करना चाहते थे, खुशकिस्मत रहे, गेंद बल्ले के करीब से गई है विकेट कीपर के ग्लव्स में। और आपको याद होगा गुज़िश्ता इनिंग में भी सोहेल इसी अंदाज से आउट हुए थे, यही शॉट ट्राई किया था उन्होंने और फिर कैच हुए थे। ये सरफराज अहमद हैं, खुश होंगे अपनी टीम की कारकर्दगी से। इस मैच में शिरकत नहीं कर रहे, लेकिन अगले मैच में यकीनन क़यादत करेंगे जो नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा। जी हाँ, पॉइंट्स टेबल के भी अब बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। नॉर्दर्न ने अपना मैच जीत लिया एक इनिंग से, केपी ने अपना मैच जीत लिया। यहाँ से सिंध भी चाहेंगे कि ये मैच जीतें और उस दौड़ में शामिल हो जाएं जो कि अब काफ़ी आगे निकल गई हैं दोनों टीमें पॉइंट्स की, अगर हम बात करें नॉर्दर्न भी और केपी के भी। अच्छा कॉन्टेस्ट है ये 6 टीमों के दरमियान। इस तरह मैंने पहले भी कई मरतबा कहा कि लास्ट मोमेंट पे 99 का लूडो का सांप साबित हो सकता है किसी भी टीम के लिए। इस मरतबा उठा के खेलना चाहते थे, टाइम सही से नहीं कर सके, आउटरेज लेके गेंद थर्ड मैन पोजीशन पे बाउंड्री लाइन के बाहर। 12 रन्स की अहमियत और 4 बड़े वैल्यूएबल रन्स का इजाफा सोहेल खान के स्कोर में, सिंध के स्कोर में और सिंध की लीड में। जी हाँ, जैसे हमने आगे जिक्र किया कि अब आप हर तरह का शॉट खेल सकते हैं, क्योंकि अब आपको लाइसेंस हासिल है कि जैसा मर्जी शॉट कीजिए, रन आने चाहिए। देखिए जोरदार फ्लैश था। खास बात यह रही कि जोर से मारने की, जब आप जोर से मारने जाते हैं तो बॉल फ्लाई करता है स्लिप के ऊपर से, और यही ऐसा सोहेल खान ने किया और 4 रन हासिल किए। लीड पहुंच गए 266 रन पर। मुश्किलात बढ़ते हुए सेंट्रल के लिए, और अब वो सिचुएशन आ गई है अली कि जब हम एक टाइम पे सोच रहे थे कि सेंट्रल कब ये मैच जीतेगा कब नहीं जीतेगा। शॉर्ट बॉल बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे कवर में खेले हैं सोहेल, मिडिल ऑफ द बैट, एक बैट्समैन की मानंद। अली मैंने किसी भी दिन नहीं सोचा कौन जीतेगा, मेरी तो सारी सोच का महवर और मरकज चौथा दिन होता है, क्योंकि चौथे दिन तक मैच जाता है, जब भी जो है वो मैच पूरा मैच होता है, एंजॉय करने में मजा आता है। जी हाँ, सिचुएशन आज हमने सुबह जब देखी थी तो सेंट्रल कमांडिंग पोजीशन में था। हमें लगा था शायद एक विकेट अगर हासिल कर लेते असद शफीक में और हसन में से तो कमबैक हो सकता था, लेकिन बहुत शानदार पार्टनरशिप रही। तो अब आपको क्या लगता है कि यहाँ से क्या सिंध 300 रन लीड तक डिक्लेयर करने का सोचेगा? क्योंकि इनफ टाइम भी चाहिए देना होगा अपने बॉलर्स को, क्योंकि पिच जो है वो स्लो होती जा रही है, बैटिंग के लिए शानदार होती जा रही है, कुछ ज़्यादा वक्त भी नहीं देना है बैटिंग साइड को। बिल्कुल, ओवर भी मुकम्मल हुआ 299 7 विकेटों के नुकसान पे। और अली लगता तो मुझे ये है कि सिर्फ मुझे ही नहीं, चौथा दिन बहुत लोगों के लिए जो है वो इंतजार का बाइस होता होगा, क्योंकि चौथे दिन जो पिच का बिहेवियर होता है, मैच इंटरेस्टिंग होता है, लोग एंजॉय करते हैं, तो चौथा दिन वो होता है कि इसका ना सिर्फ हमें इंतजार होता है, बल्कि मुझे यकीन हमारी प्रोडक्शन टीम को भी बड़ा इंतजार होता होगा, क्योंकि सभी क्रिकेट को एंजॉय करते हैं और आप भी यकीन चौथे दिन का इंतजार करते होंगे। जी, चौथे दिन हमेशा ही कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है। इससे पहले हमने देखा कि 250 रन करने थे केपी के ने, जिसको सिंध ने बाखूबी डिफेंड किया। लास्ट मैच में सर्दर्न पंजाब नाकाम रही थी चौथे दिन, और कल देखना होगा कि अब सेंट्रल पंजाब यहां से क्या कर सकता है। खा वो 100 रन ना भी हों, 90s हों, जो टीम के काम आए वही शानदार इनिंग होती है। लेकिन अली आबिद अली की इनिंग को भी हम राइट ऑफ इसलिए नहीं कर सकते कि 188 रन स्कोर किए उनके, 187 रन स्कोर किए, 187 में आउट ऑफ 187 ही हैज स्कोर्ड 98 रन, तो अराउंड 50-55% जो है वो रन स्कोर किए हैं आबिद अली ने, तो उस इनिंग की भी जो वैल्यू है वो किसी तौर से कम नहीं हो सकती। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने।
बिल्कुल कम नहीं हो सकी होगी। लेकिन देन तीसरी इनिंग में रन्स करने थोड़ा मुश्किल होते हैं जब लीड आपके ऊपर हो, तो बहुत कम फर्क होगा दोनों इनिंग्स में। लेकिन मैं 100% आपसे एग्री करूंगा कि आबिद अली की भी शानदार इनिंग थी। मरतबा खेलने में कामयाब जरूर हुए, लेकिन फील्डर वहां पे मौजूद हैं आबिद अली, जिनका हम तस्करा कर रहे थे। सोहेल खान ने बड़ी जिम्मेदाराना बैटिंग की और बड़ी खुशाइन चीज़ है कि सोहेल खान कैरियर के इस फेज़ में एक सीनियर प्लेयर का रोल प्ले करते हुए ये एक अच्छा रोल में अब अपने आप को डाल लिया है सोहेल खान ने, मेंटोर सीनियर प्लेयर टीम में। और आप जब कमिटमेंट शो करते हैं तो यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ा ये सबक होता है, सीखने की बात होती है कि आपने कैसे। और ये दोनों प्लेयर्स, ताबिश खान की बात करें, सोहेल खान की बात करें, ये परफेक्ट एग्जांपल है नेवर गिव अप की। आपको ये होगा जब 92 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद पाकिस्तान ने फ़ौरन इंग्लैंड का टूर किया, तो वहाँ पे वसीम और वकार जो 2Ws की जोड़ी थी, उन्होंने अपने बॉलिंग से धाक बिठाई। लेकिन एक मैच ऐसा था कि जहाँ पे दोनों ने अपनी बैटिंग से पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़बरदस्त खेला, तो मुझे कुछ उसी किस्म का सिनेरियो यहाँ पे नज़र आ रहा है। जहाँ मैच जिताया था दोनों Ws ने बैटिंग से अपनी, लेकिन यहाँ भी काफ़ी काम बाकी है ताबिश और सोहेल का, क्योंकि सेकंड इनिंग में जब बॉलिंग करनी है तब भी इन दोनों को बहुत ज़्यादा काम करना होगा सिंध के लिए। जी वो 2Ws थे, ये 2Ks हैं। और मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, 2K यहाँ पे एक बड़ा मशहूर बस चलती है, उसका 2K उसका नंबर है, और नाज़िमाबाद में ही वो बस चलती है। तो इस मरतबा जो ड्रॉप कर दिया रिजवान थे, इस मरतबा मोहम्मद अली के चेहरे पे मायूसी बनती है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद आप स्पेल करते हैं, इतनी जानदार बॉलिंग करते हैं, एज क्रिएट करते हैं, और सिंपल कैच था ये। इस लेवल पे ये कैचेस होने चाहिए। रिजवान हुसैन ने पहले एक बहुत शानदार कैच पकड़ा था फवाद आलम का जब तक आउटसाइड एज हुआ था, लेकिन यहाँ पे डिसअपॉइंटेड हो गए मोहम्मद अली। और आई थिंक सो कि एहसान अली का भी पहले इनिंग में कैच रिजवान ने ही लिया था, लेकिन बहरहाल यहाँ पे कैच ड्रॉप कर गए इनिंग के इस फेज में। एक ऐसा फेस है जब अपनी बैटिंग का भी सोच रहे होंगे रिजवान हुसैन, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है कि अब उनको दोबारा बैटिंग के लिए आना है इस इनिंग में। लेकिन ये ख़राब क्रिकेट है, इस लेवल पे आपको कंसंट्रेशन अपनी 100% रखनी पड़ती है, आपको हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ता है। मोहम्मद अली काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनती बॉलर हैं, मजबूत जिसामत के हामिल, चौड़े शाने, जो एक फास्ट बॉलर के लिए एक आइडियल बिल्ड होती है। सियालकोट से इनका ताल्लुक़ है, बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने इस सीज़न में परफॉर्मेंस दी है। और कल हम स्पाइक्स की बात कर रहे थे कि 1890s में स्पाइक्स का इन्वेंट किया गया था, विलियम जोसेफ फॉस्टर वो इन्वेंटर थे जिन्होंने स्पाइक्स को इन्वेंट किया। उसके बाद से स्पाइक्स का एथलेटिक्स में और फिर इस क्रिकेट में इसकी इब्तिदा हुई। शॉर्ट बॉल और पुल कर दिया इस मरतबा ताबिश खान ने, 2 रन का स्कोर में इजाफा हो जाएगा। तो बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। या टॉप ऑर्डर हो, टेल एंडर हो, अगर आप उनको एक्स्ट्रा बारी देंगे, उनका कैच छोड़ेंगे, तो उनके कॉन्फिडेंस लेवल में तो बूस्ट आएगा ही। और यही हम देख रहे हैं, ताबिश खान अब पुल शॉट्स मार रहे हैं। मोहम्मद अली की पेस काफ़ी है और उनको फ्रंट फुट के ऊपर उन्होंने मिड विकेट की जानिब खेल के 2 रन हासिल किए। ये शो कर रहा है कि ज़्यादा पेस भी मौजूद नहीं है अब, ना सेंट्रल की बॉलिंग में और ना ही पिच से भी कुछ ज़्यादा मदद मिल नहीं रही है। और इन 2 रन के साथ ही 300 रन भी मुकम्मल हुए। सिंध की टीम के एक मौके पे स्ट्रगल करी थी सिंध की टीम। और जो आप बात कर रहे हैं पेस की, देखें मैंने पहले भी तस्करा किया, अगर आप इस पिच पे अब जो सूरत हाल है, जितना पीछे गेंद रखेंगे इतना बैट्समैन की आसानी होगी। 7 को आपने देखा कि आगे गेंद की और विकेटें लेते रहे। ये वो लाइन है जहाँ पे गेंद कर दिया, अपील हुई एलबीडब्ल्यू की, लेकिन अंपायर वलीद याकूब को यह अपील मुतासिर नहीं कर सकी। जहाँ ये क्लियरली लेग साइड से नीचे जा रहा था बॉल। मोहम्मद अली ने बहुत शानदार बॉलिंग की, ये सेटअप अच्छा था। और जिस लेंथ की आप बात कर रहे थे, अगर कुछ भी होना है वो इस लेंथ से होना है। आगे पिच, ये लाइन गलत थी 2, लेकिन अगर यहाँ से अगर आप इसी लाइन से अगर आप बाहर को बॉल निकालेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकेंगे।
गुज़िश्ता इनिंग में भी ताबिश खान LBW आउट हुए थे और यहाँ भी बड़ी कॉन्फिडेंट शॉट थी मोहम्मद अली की जानिब से। सुहेल खान दूसरी जानिब एक एंड से डटे हुए हैं, गिव अप करने के लिए तैयार नहीं। कराची क्लब क्रिकेट में सुहेल खान इनिंग का आगाज़ करते हैं तो आज अपनी बैटिंग की सलाहियतों का इजहार करते हुए। शॉर्ट बॉल और इस मरतबा अच्छा एग्जीक्यूशन था, टाइम नहीं कर सके ताबिश। स्कोर में 1 रन का इजाफा हुआ, बरतरी में इजाफा, 270 रन की बरतरी। सुहेल खान का आपने जिक्र किया था, ऐसा बैटर हमेशा ही वो एंजॉय करते हैं। हमने बहुत बार देखा है, पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने काफ़ी रन्स किए हैं। टेस्ट मैच क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, काफ़ी यूटिलिटी क्रिकेटर है। ये देखिए फ्रंट फुट पे अब ये हालात हो गए हैं कि ताबिश मोहम्मद अली जैसे बॉलर को फ्रंट फुट पे आके पुल शॉट मार रहे हैं। ये बताता है कि अब ज़्यादा दमखम रह नहीं गया है बॉलिंग में। निशाने बहुत अच्छे हैं सेंट्रल पंजाब के। पहले एहसान अली डायरेक्ट थ्रो पे आउट हुए और उसके बाद अब कोशिश अच्छी थी। अली जरियाब इस मौके पर शॉर्ट बॉल, इस मरतबा अच्छा तेज बाउंसर था, बैठ गए। सुहेल खान जाने दिया विकेट कीपर के ग्लव्स में। ओवर मुकम्मल हुआ 302 पे 7। जब सरफराज अहमद आ जाएंगे तो फिर कप्तानी किसके नाम जाएगी। पहले हमने देखा असद शफीक ने शुरू किया, वाद आलम को कप्तानी इस मैच में सौंपी गई। अब जब सरफराज अहमद की वापसी होगी तो फिर कहाँ जाएगी कप्तानी। आई थिंक फवाद के पास ही रहेगी कप्तानी। दूसरी तरफ अगर हम केपी की बात करें तो लास्ट मैच हमने देखा था कि आसिफ आफरीदी ने कप्तानी की थी और अब अशफाक कर रहे हैं कप्तानी। वहाँ ऑफसर से ये बाहर गेंद थी, जाने दिया। और मैं बाउंसर की बात जरूर करूंगा, बड़ा लीथल तेज बाउंसर था। और आपको थोड़ी बहुत अगर पाकिस्तान के कानून से दिलचस्पी है तो 302 एक ऐसा है हिंसा है कि इतना लीथल बाउंसर बनता है यहाँ पे। यहाँ पे ताबिश खान हट गए थे, तैयार नहीं थे, थोड़ा जल्दी आ गए 7 बॉल करना। और ऐसा ही कुछ सीन हमने कुछ दिन पहले बांग्लादेश में भी देखा था। नवाज हट गए थे जब नवाज हट गए थे। या आप इतना मार्जिन तो बैटर को देना चाहिए, आपको सेटल होने के लिए टाइम चाहिए होता है। लेकिन बहुत तेजी से, क्योंकि छोटा रन पे साहब का, तेजी से पहुंच जाते हैं। दिफाई अंदाज से खेले इस मौके पर। और आपको याद होगा एक मैच में अजहरुद्दीन ने सहारा कप में शायद आफरीदी को कहा था, बड़े भाई थोड़ा टाइम तो ले लो। बड़ा मशहूर हुआ था ये क्लिप, उनका वायरल हुआ था, क्योंकि शायद आफरीदी भी बड़ी जल्दी जल्दी अपना ओवर मुकम्मल करते हैं। वैसे हर काम में जल्दी रहती है आफरीदी को। बड़ी तेजी के साथ छक्के भी लगाते हैं, तेजी के साथ ओवर भी करते हैं, फील्ड में भी अग्रेसिव नजर आते हैं। एक जबरदस्त क्रिकेटिंग करेक्टर है शायद आफरीदी, और बड़ी फैन फॉलोइंग है आफरीदी की। इस मरतबा कोयटा ग्लैडिएटर्स को ज्वाइन किया उन्होंने। ये बेहतर लाइन है मोहम्मद साद की जानिब से। लेकिन अब कंडीशंस इतनी आसान हो गई हैं कि इवन टेल एंडर्स के लिए को भी ज़्यादा मसले नहीं हो रहे हैं यहाँ पे बॉलिंग को फेस करते हुए। शायद आफरीदी की आपने बात की तो शायद ही पिछले 10 से 15 सालों में किसी ने सुपरस्टार अपने नाम के साथ लगवाया होगा जो शाहिद आफरीदी ने टैग लगवाया है, क्योंकि वो सुपरस्टार हैं। और अब हमें लगता है कि शायद उनके फेम को कोई बीट कर सकता है तो वो बाबर आजम है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, वेरी ट्रू। बाबर आजम इस वक्त प्रोग्रेसिंग स्टार हैं जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में, और मैच किसी और मुल्क का खेला जा रहा होता है, एशेज में बाबर आजम का जिक्र हुआ, इससे आप अंदाजा लगा लेंगे बाबर आजम की कितने फैन फॉलोइंग है। 302 7 विकेटों के नुकसान पे, और सिंध से वो जल्द से जल्द क्रॉस करना होगा सिंध की टीम को। क्रिकेट इज द गेम ऑफ स्टैट्स एंड फिगर्स। इस तरह हम बात करते हैं आदात की, स्टैट्स की, रिकॉर्ड्स की। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो खिलाड़ियों की शर्ट्स पे नंबर होते हैं ये इनकी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से होते हैं या इनके लकी नंबर्स होते हैं। एक दफा फिर शॉर्ट बॉल थी मोहम्मद अली की, जाने दिया इसको सुहेल खान ने, तेज बाउंसर था। यार कभी कभी ये नंबर्स जो हैं वो प्लेयर्स की पहचान भी बन जाते हैं। नंबर 10 की अगर बात करें तो लाला के साथ क्रिकेट में मशहूर है वो नंबर। नंबर 7 धोनी का, रोनाल्डो का।
मैसी का भी 10 था नंबर, 7 था, धोनी का नंबर था। और पाकिस्तान के एक प्लेयर थे जिनका मैंने पहले भी तस्करा किया, उनका एक सेलुलर कंपनी से मुआहिदा हो गया और उन्होंने अपनी शर्ट पे उस कंपनी का डायलिंग कोड लिखवा लिया था। ये भी एक पब्लिसिटी का बड़ा जरिया बनाया था उस इन नंबर्स के इन गेम से। क्रिस गेल ने अपना टेस्ट का हाईएस्ट रन 333, उनकी शर्ट नंबर। शोएब मलिक ने अपनी गाड़ी का नंबर अपना हाईएस्ट स्कोर रखा था एक जमाने में। यार मुझे याद है जब सईद अनवर 194 की इनिंग खेल के आए थे इंडिया के अगेंस्ट, हाईएस्ट रन स्कोर किए थे उस जमाने में, तो जो उनको एक गाड़ी एक गिफ्ट की गई थी उनका उसका नंबर भी 194 था। चालान में काफी आसानी हो गई होगी क्योंकि पूरी दुनिया को रन याद थे। इस मतलब बैठ गए, जाने दिया। सोहेल खान इस वक्त बड़ी जबरदस्त इनिंग खेलते हुए काफी देर से 64 के स्कोर पे मौजूद हैं। ये तेज बाउंसर, ये खासियत रही है मोहम्मद अली की, बहुत तेज बाउंसर्स किए हैं क्योंकि हार्ड लेंथ को हिट करते हैं, शोल्डर से बॉल करते हैं, मारते हैं, पटकते हैं बॉल को आके। लेकिन शायद ये 30 ओवर्स एक दिन में बहुत ज्यादा बॉलिंग है। अब्दुल रज़ाक एक जबरदस्त क्रिकेटर जिन पे पाकिस्तान की टीम हमेशा फख्र करेगी। बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली अब्दुल रज़ाक ने, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, और जब ब्लॉक करने पे आते थे तो इनसे बड़ा ब्लॉकर कोई नहीं होता था। 99 के वर्ल्ड कप में अब्दुल रज़ाक ने जो रोल प्ले किया पाकिस्तान के लिए, उसने पाकिस्तान को फाइनल तक पहुंचाया। जब लॉन्ग हिटिंग की बात आती है तो अब्दुल रज़ाक एक अलग रूप में, और मैंने इनका एक मैच कवर किया नेशनल स्टेडियम कराची में जब इन्होंने स्टीव हार्मिसन को बड़े ज़बरदस्त छक्के लगाए थे और गेंद स्टेडियम के बाहर जाके गिर रही थी। और इसके अलावा साउथ अफ्रीका का मशहूर ज़माना मैच कौन भूल सकता है। और अब्दुल रज़ाक का मुझे वो मैच भी कवर करने का एजाज़ हासिल है कि जब साउथ अफ्रीका की टीम हंसी किरोनी की क़यादत में आई थी और आमिर सुहेल की क़यादत में ये नेशनल स्टेडियम कराची में खेले। शुएब अख्तर उस मैच में पहली मरतबा में लाइमलाइट में नजर आए। रमज़ान ने उस मैच में 100 किए, अली नकवी ने 100 किए, और इसके साथ साथ अली हुसैन रिजवी ने उस मैच में आउट किए थे। और गुज़िश्ता ओवर में दो, हम नंबर्स की बात कर रहे थे, गुज़िश्ता ओवर में 2-4 हाथ ही विकेट लेते लेते रह गए। लेकिन अभी जब ये भाग रहे थे मोहम्मद अली तो इनका जो नंबर है वो है 6-7, तो 2-4 होता तो शायद कुछ सिंक बनता। 2-4 हाथ जब लबे बाम रह गया। चौंसठ रन पर मौजूद है सोहेल खान, बहुत ही शानदार इनिंग, 67 नंबर। एक बार फिर तेज बाउंसर, मोहम्मद अली ने जो कुछ था लाके रख दिया है, इतनी ही जान बाकी है इनमें। और इसी दौरान चाय का वक्फा भी 302 7 विकेटों के नुकसान पे काफी देर से सिंध का स्कोर 302 पे रुका हुआ है। 270 रन की बढ़तरी हासिल हो चुकी है और अब देखना यह कि चाय के वक्फे के बाद क्या सिंध कंटिन्यू करेगी या डिक्लेरेशन की जानिब जाएगी, क्योंकि अपने बॉलर्स को भी टाइम देना है। पिच भी आसान खेल रही है और बासित अली बड़े इंटेलिजेंट कोच है, साथ साथ फवाद आलम की जो कैप्टनसी है, मसूर उनके साथ मौजूद हैं, तो एक अच्छा थिंक टैंक है सिंध के पास। क्या डिक्लेरेशन होगा या मजीद कंटिन्यू करेंगे? जहाँ ये सेशन एक बार फिर सिंध के नाम रहा, बहुत ही शानदार बैटिंग रही। सोहेल खान इस सेशन के हीरो रहेंगे। जो लीड है अब 270 रन पर पहुंच गई है। सोहेल खान मौजूद हैं 64 रन पर, ताबिश खान ने बनाए हैं 4 रन। इससे पहले मोहम्मद हसन की शानदार इनिंग रही, उन्होंने 49 रन बनाए और इस सेशन में आउट होने वाले वाहिद प्लेयर थे। गले लगा के दाद दे रहे हैं सब सोहेल खान को उनकी जबरदस्त बैटिंग पर। ये एनालिस्ट हैं आसिम, वीडियो एनालिस्ट आसिम, इसके अलावा मोहम्मद हसन ने दाद दी, इनके जो मसाजर उन्होंने शाबाशी दी, लेकिन साथ साथ ताबिश को भी यहाँ पे जो जरूर सराहना होगा। खुर्रम मंजूर सोहेल खान की कमर थपथपाते हुए बहुत ही जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया सोहेल खान ने। ये सेशन तो डेफिनेटली सिंध के नाम रहा है। काफी कुछ काम करना होगा यहाँ पे सेंट्रल को अगर वापस आना है इस मैच में। बैटिंग कार्ड पे अगर नजर डालें हम तो ये ज्यादा अच्छी सूरत हाल नहीं है सेंट्रल पंजाब की सपोर्टर है। अगर आप 23 रन बनाए, खुर्रम मंजूर ने, एहसान अली 4 रन पर रन रन आउट हुए, मेहरबुन यूसुफ ने 32 रन बनाए, 3 रन बना सके, साद खान
13 रन बनाए। फवाद आलम ने 49 रन की इनिंग खेली, मोहम्मद हसन ने लेकिन 2 इनिंग्स जो फर्क डालने में कामयाब रही वो असद शफीक के 97 रन रहे। अनलकी रहे कि अपने 100 रन मुकम्मल नहीं कर सके। और अब सोहेल खान इस मैच में दूसरी बार अपने 50 रन बनाने में कामयाब रहे। 64 रन पर नॉट आउट हैं। 96 बॉलों का उन्होंने सामना किया। उनके साथ ताबिश खान मौजूद हैं जिन्होंने 4 रन बनाए हैं। और मजमूई तौर पर 302 रन सिंध ने बनाए हैं 7 विकेट्स गवा के। ये अब तक का बॉलिंग कार्ड 2 विकेटों के साथ 7 नवाया रहे। वकास, फहीम अशरफ, मोहम्मद अली और अहमद सफ़ी ने एक एक विकेट हासिल की। 9 पे पहली, 45 पे दूसरी, 48 पे तीसरी, 105 पे चौथी, 138 के स्कोर पे पांचवी विकेट गिरी। और उसके बाद बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप असद और हसन के दरमियान 211 तक स्कोर को ले गई। और उसके बाद फिर 211 से 274 के मजमूए तक पहुंचते पहुंचते मैच एक विकेट गिरी। और अब 302 रन है स्कोर, तो बड़ी अच्छी है पार्टनरशिप हो चुकी है 28 रन की इन दोनों बैट्समैन के दरमियान। इस वक्त लेंगे हम यहाँ पे ब्रेक और चाय के वक्फे के बाद जैसे ही खेल का आगाज होगा एक मरतबा फिर आपको इस मैच के लाइव एक्शन के साथ खुश आमदेद कहेंगे।
टी के बाद के खेल में खुशामदीद। ये अब तक की मैच समरी। सिंध ने पहली इनिंग में 155 रन बनाए, 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर डिक्लेयर किया। 187 सेंट्रल पंजाब ने उनके जवाब में, और सिंध अब 302 रन 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर। असद शफीक की बेहतरीन इनिंग्स, 3 रन से रह गए 100 करने से, और मजमूई लीड सिंध की 270 रन की। एक दफा फिर सुहेल खान और ताबिश खान रिज्यूम करेंगे अपनी इनिंग को। बेल्स स्टंप्स पर आ चुकी हैं। फवाद बातचीत करते हुए सुहेल खान के साथ, ताबिश के साथ, और साथ साथ मीर हमजा भी शरीक गुफ्तगू हैं, क्योंकि अब मीर हमजा भी नेक्स्ट मैन टू कम है। इसके अलावा ताबिश खान सुनते हुए अपने कप्तान फवाद आलम को, और सुहेल खान ने जिस अंदाज से यहाँ पे खेला है, यकीनी तौर पे ये तीनों जो हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बैटिंग के बजाय ये बॉलिंग की बात हो रही होगी इस वक्त, कि किस चैनल पे बॉलिंग करनी है, पिच को आप समझें, और किस चैनल पे बॉलिंग करनी है, क्योंकि इस वक्त काफ़ी अच्छी बढ़तरी हासिल हो चुकी है सिंध की टीम को। बैकफुट पे इस वक्त रखा है। ये पहला फेज है मैं समझता हूँ इस पूरे मैच का, कि जहाँ पे डोमिनेट किया है सिंध ने, वरना अब तक जो है सेंट्रल पंजाब का पलड़ा जो था वो मुसलसल भारी रहा है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ये जो दूसरे इनिंग में बैटिंग, और ख़ास तौर पे वो असद शफीक और हसन की वो पार्टनरशिप, और उसके बाद सुहेल खान जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं अब तक, इन्होंने जो है वो सेंट्रल पंजाब को बहुत मुश्किलात में डाल दिया है। चौथी इनिंग आसान नहीं होगी। ये 270 की लीड अब तक हो चुकी है, और 300 रन की तरफ गामसन लग रहे हैं। कोई खातिर खा किसी बॉलर को मदद नहीं मिल रही, लग नहीं रहा कि कहीं से विकेट आने वाली है। सुहेल खान 64 रन के साथ क्रीज पे मौजूद हैं। 96 गेंदों का सामना किया, 9 चौके और 1 छक्का उनके स्कोर में शामिल। 66.67 का स्ट्राइक रेट है। ताबिश खान ने ज्वाइन किया है सुहेल खान को। अकब में आप ज़हीर अहमद साहब को देख सकते हैं, अभी बैंक से खेलते रहे, माजी में बड़े ज़बरदस्त विकेट कीपर थे अपने वक्त के। ज़हीर अहमद अक्सर मैचेस में नज़र आते हैं, और ग्रेड 2 की एक टीम थी है जिसको ये रन करते थे, और बड़े प्लेयर इस ग्रेड 2 की टीम से इन्होंने प्रोड्यूस किए। हबीब बैंक की क्रिकेट टीम को बनाने वालों में शामिल हैं ज़हीर अहमद। अहमद सफ़ी गेंद करने के लिए तैयार। अब तक 48 रन के एवज 1 विकेट हासिल की। जल्दी से जा रहा याद कर। हर फूल जो है वो गुलाब नहीं होता। जितनी मिस्ट्री, जितना सस्पेंस इब्ने सफ़ी में था, इतना अहमद सफ़ी में नहीं है। सीधी सीधी गेंद करते हैं, लाइन और लेंथ को मेंटेन करते हैं, लेकिन स्पिन टर्न ज्यादा नहीं है अहमद सफ़ी के पास। इस मैच के तनाजुर में अगर आप देखें तो कोई भी किरदार अदा नहीं कर पाए अभी तक अहमद सफ़ी। ना बहुत ज़्यादा रन्स रोकने में कामयाब हुए हैं, और ना ही कोई ज़्यादा खातिर खा कोई कामयाबी इनको हासिल हुई। जफर गौहर पे तरजीह दी गई है अहमद सफ़ी को। दिफाई अंदाज से खेले हैं ताबिश, और अमूमन अहमद आप भी कैप्टन कहा जाता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर कट ना खिलाए तो ये बड़े अपने फन के साथ नाइंसाफी है। आप देखें कि कट पे नहीं जा रहे हैं अहमद सफ़ी, बैट्समैन को सीधा बल्ला लाके उनको सिर्फ खेल रहे हैं। छियानवे ओवर का इख्तिताम, 302 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर सिंध। अब्दुल रज़ाक आपकी स्क्रीन पर। अब ऐसी सूरत हाल मैच की हो गई है कि कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं।
ये अब्दुल रज़ाक है, उनके साथ इनके टीम डॉक्टर हैं। थोड़ी सी अब यहाँ पे बैक फुट पे जाती नजर आ रही है, और जिस तरह रिजवान ने कैच ड्रॉप किया ताबिश खान का इनिंग के इस फेज में, कैच लेना चाहिए था वो। कवर्स में खेले इस पर तबाह, सुहेल खान आसानी के साथ रन हासिल कर जाएंगे। सैफ बदर गेंद के पीछे जरूर हैं, लेकिन महज 2 रन इक्तफा करना पड़ेगा। तो काफी देर के बाद 302 के हिस्से को क्रॉस किया। 304 है स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पे। 272 रन की अब बढ़तरी हासिल हो चुकी है सिंध को। सुहेल खान के पास एक और अच्छा मौका कि वो 3 हिस्सों को पार कर सके। मेरे ख्याल से जो हिकमत अमली सिंध की अब तक हमें समझ आ रही है, वो मेरे ख्याल से आखिरी 1 घंटा ज़रूर देना चाहेंगे सेंट्रल पंजाब को बैटिंग के लिए। शॉर्ट बॉल, उसको पुल करने में कामयाब हुए, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। सिग्नल देखना होगा अंपायर का। 4 रन। तो सुहेल खान इस वक्त बहुत ही जबरदस्त बैटिंग मूड में। हाँ, अच्छा बाउंसर था, ऊंचा, और ऑफ स्टंप के ऊपर तकरीबन पुल मारने की। ये देखिए, काफी अच्छा बाउंसर, वेल डायरेक्टेड, टॉप एज लगा। खुशकिस्मत रहे कि कीपर के ऊपर के सर से ऊपर से गुजर गई बॉल, और 4 रन हासिल कर लिए। तो अब सुहेल खान वाज़ेह तौर पे अपनी सेंचुरी की जानिब निगाहें किए हुए होंगे। इस मरतबा रूम बनाया, और सुहेल खान तेजी के साथ रन बनाने की कोशिश में कीपर के सर के ऊपर से खेलना चाहते थे। देखिए, एक और शॉर्ट बॉल जगह बनाई थी उन्होंने, और वनडे की तरह का शॉट स्लिप कॉर्डन के ऊपर से खेलना चाहते थे, कनेक्ट नहीं कर पाए। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वाइट शलवार कमीज में ज़हीर अहमद हैं, हबीब बैंक से खेले, और हबीब बैंक की जो क्रिकेट की टीम थी वो उसके पायनियर में से हैं। ये बतौर विकेट कीपर खेलते रहे। अच्छा बाउंसर था, डक किया जाने दिया। अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त विकेट कीपर थे ज़हीर अहमद, और उनके साथ मौजूद हैं ग्राउंड इंचार्ज और इस ग्राउंड के तमाम तर इंतज़ाम और इंसराम इनके ज़िम्मे शफीकुल्लाह सिद्दीकी साहब। बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है, जिस तरह से आउटफील्ड है, ग्राउंड है। अच्छा बाउंसर था, बैट गए जाने दिया। और ज़हीर अहमद स्पोर्ट्स में बहुत मकबूल है, क्योंकि ये सरफराज अहमद जो एक्सरसाइज करते हुए अगले मैच के लिए वार्म अप करते हुए, ज़हीर अहमद बड़े मकबूल है, क्योंकि इन्होंने ग्रेड 2 का डिपार्टमेंट भी बनाया हुआ था। प्लेयर्स को बहुत प्रेस करते हैं और बहुत प्रमोट करते हैं, तो बड़ा कंट्रीब्यूशन है ज़हीर अहमद का। शॉर्ट बॉल, और इसको पुल किया, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद है अहमद सफ़ी। इस बार काफी कंट्रोल में थे इस पुल शॉट के, अपनी नजरों के सामने बॉल को खेला और कलाइयों को मोड़ा आखिर में, तो वो ऑल अलोंग द ग्राउंड, पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन हासिल कर लिया। और एक अच्छा साइन है कि एक्स क्रिकेटर्स जो है, फॉर्मर क्रिकेटर्स मैचेस को देखने आ रहे हैं। शेब हबीब साहब को हमने अक्सर देखा, अभी ज़हीर अहमद साहब बैठे हुए हैं। इसके अलावा आपसे थोड़ी देर पहले शादाब कबीर भी इस मैच को देखने के लिए आए हुए थे, जो पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले। मोइन खान को भी हमने देखा। अच्छा बाउंसर था ये, ताबिश को इस मरतबा टेस्ट किया। ताबिश के हेलमेट पे लगी है, लेकिन ताबिश वहाँ पे काफ़ी मुतमईन है। ओके का सिग्नल दिया उन्होंने सुहेल खान को। देखिए, एक अच्छा तेज बाउंसर, से नहीं हटा पाए अपने आप को ताबिश खान। हेलमेट पे लगी, और डॉक्टर जो है वो का मुआयना करने के लिए आए। मैंडेटरी अब ये लाजिम हो गया है कि अगर सर पे बॉल लगे, हेलमेट पे भी अगर, तो एक मुआयना ज़रूरी होता है कंकशन को जांचने के लिए और देखने के लिए कि क्या खिलाड़ी जो है वो कंटिन्यू करने के लिए तैयार हैं या नहीं। और ताबिश मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब है बॉल इनको वाकई लगी है।
वरना अगर नॉर्मल रहते तो बहुत सीरियस रहते हैं, बहुत सीरियस रहते हैं वैसे। हाँ जी हाँ। और ताबिश के का गुस्सा भी बहुत मशहूर है, कोई भरोसा नहीं है बॉल सर पे लगने पे बॉल को उठा के कहीं पटक दे। लेकिन अब मोहम्मद अली जब बैटिंग के लिए आएंगे तो ताबिश को ज़रूर देखना होगा, सोहेल खान को। लेकिन बड़े ज़बरदस्त फाइटर हैं ताबिश खान, और पाकिस्तान के लिए एक टेस्ट मैच के लिए अगेंस्ट जिम्बाब्वे डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ी परफॉर्मेंस है ताबिश खान की। सोहेल खान की जानिब से अमर मुझे एक ऐसी स्मेल आ रही कि एक बड़ी हिट ज़रूर होगी यहाँ पे सोहेल खान की जानिब से। काफ़ी देर तक सोहेल खान रोक नहीं सकते अपने आप को। जी हाँ, अब सेंचुरी भी जो है उनकी ज़रूर दिमाग के किसी हिस्से में घूम रही होगी, क्योंकि तकरीबन क्रिकेट में तमाम चीज़ें और तमाम हदफ पार कर चुके हैं। वो विकेटों के हवाले से आप देखें या रनों के हवाले से 50 कर चुके हैं। एक 100 एक ऐसी चीज़ है जो रह गई है उनके करियर में अभी, और इससे अच्छा मौका मेरा ख्याल से न जाने दोबारा मिले ना मिले। लेकिन आप इस पिच को नहीं भूलें, ये बड़ी बेवफा पिच है। ये 100 के करीब तो ले आती है लेकिन 100 करने नहीं देती। इसकी बेवफाई के जो 3 शिकार हैं, उमर सिद्दीक, सलमान आगा, बल्कि 4, आबिद अली और असद शफीक, वो इसकी बेवफाई का शिकार हो चुके हैं। और जिसका मैं तस्करा कर रहा था, कदमों का इस्तेमाल किया, टाइम सही से नहीं कर सके, लेकिन बहरहाल इंटेंशन यही था कि बड़ी हिट खेलेंगे सोहेल खान। अच्छी फील्डिंग एफर्ट। जहाँ खेलना चाहते थे वहाँ नहीं गई बॉल, सर के ऊपर से मारना चाह रहे थे ये बॉलर के, लेकिन अंदर आया बॉल थोड़ा सा और बैट उनके हाथ में घूम गया, लेकिन गैप में गया मिड विकेट के और 2 रन हासिल किए। और अगर अहमद हम देख सकें तो अब मुझे ऐसा लगता है कि 4 जब आबिद अली ने संभाल लिया है, आबिद अली में फील्ड सेट करते नजर आ रहे हैं। अगर हम आबिद अली को फोकस करें, अब 4 जो है ऐसा लग रहा है कि आबिद अली ने अंदर संभाल लिया है, क्योंकि अब एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। और ये एक अच्छा साइन है। अहमद सफ़ी अपनी निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। 14 ओवर में अब तक 50 रन दिए, कंसीड किए 50 रन उन्होंने। और अब हम देखेंगे अगले ओवर में अहमद के आबिद अली ने यहाँ पे चार्ज टेक ओवर किया हुआ है, क्योंकि साद के हाथ से कुछ कंट्रोल से बाहर होती जा रही है सिचुएशन। ये देखें आप। जी हाँ, और ये भी बड़ा ज़रूरी है कि जिस तरह आपने देखा होगा ओवर के अख्ताम पर विकेट कीपर फ़ौरन भाग के दूसरी तरफ गए, और आबिद अली भी कितनी जल्दी अपनी पोजीशन में चले गए हैं। बॉलर को उन्होंने हिदायत दी है कि जल्द अज जल्द अगला ओवर शुरू किया जाए, क्योंकि मेरा ख्याल से ओवर रेट का भी थोड़ा सा मसला होगा इनको आखिर में, जो इनके दिमाग में होगा ज़रूर कि उसको भी पूरा करना है या बराबर करना है। तो अब इस मरतबा बाउंसर के लिए तैयार थे। अगर आप देखें उनका इंटेंशन, जो गुज़िश्ता बाउंसर उनको लगा है उसके असरात तब तक हैं कि शेकी हुए हैं। स्टांस भी देखिएगा थोड़ा तब्दील किया है ताबिश ने उस बाउंसर के बाद। ये देखें आबिद अली काफ़ी बिजी नज़र आ रहे हैं, और ये मोहम्मद अली और ये ताबिश। तो ऐसा है कि सारे जो शोबिज स्टार हैं वो एक साथ ही पिच पे मौजूद हैं। उनके हम नाम आबिद अली, मोहम्मद अली, ताबिश। शॉर्ट बॉल जानिद अली शान की जानिब। तकरीबन शॉर्ट लेग पे एक फील्डर खड़े हुए, ये देखिए शॉर्ट बॉल, उसी के लिए उनको खड़ा किया है शॉर्ट लेग को। रिजवान इस पोजीशन में मौजूद, मेरे ख्याल से एक अच्छा होगा अगर वो हेलमेट पहन लें, क्योंकि क्रिकेट में बहुत सी बार ऐसे हादसा देखे गए हैं कि क्लोज इन फील्डर्स के बॉल लगी है और काफ़ी अक्सर नुकसानदेह साबित हुई है। अभी शब तक उस बाउंसर के असरात से बाहर नहीं निकले जो उनके हेलमेट पे लगा था, और एक
फॉरवर्ड शॉट लेग फील्डर को प्लेस किया है कैचिंग पोजीशन पे। राउंड विकेट आए, बैठ गए, जाने दिया ताबिश ने। और अब इस दीवार में शिकावत डालना चाहती है सेंट्रल पंजाब। सोहेल खान को भूल के वो ताबिश पे अटैक कर रहे हैं। देखिए राउंड द विकेट, अच्छा बाउंसर और ताबिश उसके लिए तैयार। अमूमन जब विकेट से हेल्प नहीं मिल रही होती बॉलर्स को, बॉल स्विंग भी नहीं हो रहा होता, तो वो हर भी आजमाते हैं बैट्समैन को तंग करने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए, गलती पे आमादा करने के लिए। एक और बाउंसर और ताबिश बैठ गए, जाने दिया इसको। अच्छी यहाँ पे अब तक बैटिंग का मुजाहरा किया इन दोनों बॉलर्स ने। तीनों शॉर्ट पिचेस जो है उसको डक किया। ये सारी शॉर्ट बॉल्स और ये तीसरी। अब तक अच्छी तरह ताबिश ने निपटे हैं शॉर्ट बॉलर से। मोहम्मद अली अपने 32वां ओवर कर रहे हैं। और अच्छी बॉलिंग, अब तक 86 रन देके एक खिलाड़ी को आउट किया है। एक बार फिर शॉर्ट बॉल और ताबिश ने जाने दिया उसको कीपर के पास। दो 279 रन की बढ़तरी हो चुकी है। और अहमद, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो सोहेल खान की सेंचुरी का इंतजार है, और जैसे ही सोहेल खान आउट होंगे शायद डिक्लेयर कर दें कप्तान फवाद आलम और कोच बासित अली। मतलब अच्छा मैनेज किया है ताबिश ने, अच्छा साथ दे रहे हैं। मगर अब तक सोहेल खान का ओवर मुकम्मल हुआ है। एक मुश्किल ओवर था जिसको झेलने में कामयाब हुए, खेलने में नहीं बल्कि झेलने में कामयाब हुए। 311 7 विकेटों के नुकसान। शफीकुल्लाह सिद्दीकी साहब में दरमियान में जो इस ग्राउंड को हेड कर रहे हैं, इनके साथ साथ ज़हीर अहमद, जिनका बड़ी तफसील से मैंने तस्करा भी किया। हबीब बैंक की जब टीम बनी थी स्पोर्ट्स की क्रिकेट की, तो अब्दुल रकीब सर और ज़हीर अहमद साहब, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है और एक बड़ी मजबूत टीम बनी थी हबीब बैंक की। एक अरसे तक बतौर विकेट कीपर खेलते रहे हबीब बैंक के लिए। लेकिन से काफ़ी बाहर ये गेंद थी और उसके बाद फिर ताहिर रशीद जैसे विकेट कीपर ने ज्वाइन किया हबीब बैंक को। अतीकुज़्ज़मा खेले हबीब बैंक के लिए। आगा जाहिद, अरशद परवेज़, जावेद मियादाद, अब्दुल कादिर, मोहसिन खान, सुल्तान राना, ये सब वो प्लेयर हैं जिन्होंने हबीब बैंक को बहुत सर्व किया। पैड्स पे गेंद लगी, अपील और नासिर हुसैन की उंगली फिजा में बुलंद। और पिच की बेवफाई इस वक्त सोहेल खान को ले डूबी। ये 100 विकेटें मुकम्मल हुई हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अहमद सफ़ी की इस एक विकेट के साथ। और सिजदा रेज हुए अहमद सफ़ी। एक बार फिर बदकिस्मती सोहेल की। 73 रन बनाने के बाद पवेली में वापस जा रहे हैं। ये देखिए मिडल स्टंप पे गिरा हुआ बॉल सीधा रहा और अच्छा डिसीजन अंपायर का। एक बार फिर ये बॉल विकेटों के अलावा और कहीं नहीं लगती। सोहेल खान 73 रन करने के बाद पवेलियन वापस। 311, 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर सिंध। बड़ी ज़बरदस्त एक बैटिंग इनिंग का इख्तिताम हुआ सोहेल खान की। सिंध को मुश्किलात के भंवर से निकाला शफीक हसन और सोहेल खान ने। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अहमद सफ़ी अपनी 100 विकेटें मुकम्मल करने में कामयाब हुए, इसलिए वो सजदा रेज हुए। एक बड़ा अचीवमेंट है अहमद सफ़ी के लिए। सैफ बदर की जानिब से मुबारकबाद अहमद सफ़ी को उनकी 100 विकेटों पर। और नए आने वाले बैट्समैन मीर हमजा, दोनों फास्ट बॉलर ज्वाइन करते हुए। अली सलमान, आपके ख्याल में अब इनको मजीद बैटिंग करनी चाहिए या नहीं सिंध को? मैं समझता हूँ आखिरी जो 1 घंटा है वो चूँकि सी ब्रीज चलना शुरू होती हैं और
किसी भी टीम के लिए मुश्किलात का बायस होती है नई गेंद के साथ, तो वो आखिरी 1 घंटे को यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। 88वां मैच खेल रहे हैं, 476 रन मीर हमजा बनाने में कामयाब रहे। 25 इनका कैरियर बेस्ट, 7.9 इनकी एवरेज। तो आखिरी जो 1 घंटा है उसको यूटिलाइज करने की पूरी कोशिश करेगी सिंध की टीम, और 300 रन जरूर जहन में होंगे क्योंकि जिस तरह से पिच बिहेव कर रही है, तो 300 रन का एक नफसियाती हदफ जो है जरूर देने की कोशिश करेगी सिंध। मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा जारहाना अंदाज भी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पे अंपायर नासिर हुसैन ने जिस तरह से आउट दिया, गुज़िश्ता इनिंग में भी मैंने डिस्कस किया था नासिर हुसैन का, और ये सजदा रेज हुए। काफी सीधा हाथ ऊपर उठाते हैं नासिर हुसैन, और आप तो क्वालिफाइड कोच भी हैं। अमूमन बॉलर जो है वो कान के पास से हाथ लाने की स्ट्रक्चर होती है, लेकिन यहाँ पे अंपायर कान के पास से हाथ आते हैं बिल्कुल सीधा। अगर हम इनका आउट देने का अंदाज देख सकें तो बड़ा यूनिक अंदाज है नासिर हुसैन का। एज और हमजा का डिपार्चर, और मैं तो रिप्ले में आउट देने का बता रहा था, यहाँ पे तो लाइव जो है नासिर हुसैन ने उंगली उठा दी, और मीर हमजा का डिपार्चर। जी हाँ, बॉल सीधी रही अहमद सफ़ी की इस बार भी। पिछली बार भी उन्होंने सीधा बॉल किया था जो स्पिन के लिए खेल गए सोहेल खान, पैडों पे लगी, और इस बार बॉल सीधा रहा और पल्ले का भारी किनारा लेते हुए स्लिप में अच्छा कैच। तो इस तरह अब से थोड़ी देर पहले मीर हमजा बाहर की गेंद को खेलने की कोशिश की, और गेंद स्लिप में मौजूद फील्डर की जानिब, तो यूं एक और कामयाबी हासिल की। 311 के स्कोर पे 9वीं विकेट गिर गई है सिंध की टीम की। मीर हमजा आउट होने के बाद पवेलियन में बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, तो अब सिंध की बढ़तरी 279 रन की। अच्छा कमबैक सेंट्रल पंजाब का, एक बार फिर ये 2 विकेटें जल्द हासिल करके गेम में वापस आए। थोड़ा सा अगर फौरी तौर से अबरार को आउट कर दें या कोई भी विकेट हासिल करने में कामयाब रहें और सिंध की इनिंग को का इख्तिताम करने में कामयाब हो जाएं, तो वक्त कम से कम उनके पास इतना होगा कि वो इस टोटल को चेस करने के लिए एक हिकमत अमली बना सकते हैं। 7वां मैच खेल रहे हैं, 31 अब तक उन्होंने रन स्कोर किए। अबरार अहमद, ग्लासेस लगाए हुए अबरार अहमद ने, और डैनियल विटोरी जरूर याद आते हैं जब कोई बैट्समैन ग्लासेस लगा के बैटिंग करने के लिए आता है। डिफाइन दास से खेले। एक इंडिया के लेफ्ट आर्म स्पिनर थे दिलीप दोषी, वो भी ग्लासेस लगा के खेलते थे। डैनियल विटोरी, और ये वो मंजर जिसके नतीजे में मीर हमजा का डिपार्चर हुआ और अबरार की आमद हुई। अच्छा कैच इमरान डोगर का, स्लिप में शार्प कैच था, नीचे की तरफ लो कैच, और स्लिप में ऐसे कहा जाता है कि कोई भी कैच आसान नहीं होता। देखें आप आबिद अली मैन इन चार्ज, और आप देखें जब से आबिद अली ने कमान संभाली है, विकेटें हासिल की हैं और गेम में वापस आने की कोशिश की है सेंट्रल पंजाब ने। ये देख सकते हैं आप ऑफ साइड की फील्ड, और ये ऑन साइड पे एक फील्डर डीप फाइन लेग पे मौजूद है। मिड ऑन पे थोड़ा वाइडिश का स्क्वायरिश किया हुआ है, और इसके अलावा डीप स्क्वायर लेग पे एक बाउंसर की उम्मीद की जा सकती है। और बड़े हिट लगाना चाहते थे, तावेश गेंद की लाइन को मिस किया। ये देखते हुए कि अब उनको आखिरी नंबर के खिलाड़ी का साथ हासिल है। 100 ओवर्स अब मुकम्मल हो चुके हैं सिंध के। बहुत ही जोरदार हिट लगाने को, ये बॉल को इस दुनिया से दूर फेंकने की कोशिश कर रहे थे लग रहा है, जिस तरह उन्होंने बल्ला घुमाया। ये रिप्ले देखिए, ये पीछे अपने आप को जगह दी और बहुत जोर से, कामयाब नहीं हुए। इसको अमूमन स्लैंग क्रिकेट में लपेटा स्ट्रोक कहते हैं, टेप बॉल स्ट्रोक है। अगर गेंद बल्ले पे आ जाती तो मैं समझता हूं 2 ग्राउंड बाहर जाती। काफी बड़ा ये ग्राउंड है, ग्राउंड के बाहर एक और बराबर में एक और ग्राउंड है जहां पे नेट्स हैं, फुटबॉल ग्राउंड है, तो काफी दूर ये गेंद जाती। तेज रफ्तार बॉलर है मोहम्मद अली।
इस मरतबा स्लो डिलीवरी दी और बहुत ही एक बैट्समैन के अंदाज में खेले ताबिश, पूरी तरह से फोकस हैं, गैप देने के लिए तैयार नहीं। मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक हिकमत अमली के साथ ताबिश खेल रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त अब ज़ाया करना विकेट पे मुनासिब नहीं होगा मेरे ख्याल से सिंध के लिए। वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जितने रन बना सके उतना अच्छा है और फिर सेंट्रल पंजाब को मौका दें। एक और बाउंसर तैयार थे ताबिश। ताबिश मोहम्मद अली के सबर का इम्तिहान लेते हुए 279 रन की बढ़तरी है सिंध की, और कोशिश होगी कि मजीद 21 रन करें ताकि 300 का जो नफसियाती हिंसा है उसको क्रॉस करें। ये स्कोरर के बहुत ही अरकरेजी का काम होता है स्कोरिंग का। एक लीगल डिलीवरी की कम से कम 3 जगह एंट्री होती है, चाहे बैट्समैन रन बनाए ना बनाए, और अगर कोई नो बॉल हो जाए एक्स्ट्रास के रन तो 7 से 8 जगह उसकी एंट्री होती है, और मुख्तलिफ पैन मुख्तलिफ किस्म के मार्कर्स जो है वो इनके पास मौजूद होते हैं। बड़ी हिट खेली ताबिश ने, लेकिन लॉन्ग ऑफ पे फील्डर मौजूद था, 1 रन बड़ी तेजी के साथ मुकम्मल किया। जफर गौहर हैं जो मुतबादिल खिलाड़ी हैं, और अब अबरार इन बाउंसर को किस तरह झेलेंगे। ये देखें अब आबिद अली काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं अब, और फील्ड तब्दील कराया आबिद अली ने, क़यादत अब आबिद अली संभालते हुए। और आबिद अली के जिम्मेदारियां लेते ही मैच का मिजाज तब्दील हुआ चाय के वक्फे के बाद। दिफाई फील्ड इस वक्त किसी भी एक्स्ट्रा रन्स देना नहीं चाहते आबिद अली, बाहर है सिंध की टीम को। फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पे एक फील्डर रखा है कैचिंग पोजीशन पर अबरार के लिए। मोहम्मद अली मुसलसल बाउंसर कर रहे हैं, और किस तरह अब उससे नबरदाजमा होंगे देखना होगा। एक स्लिप गली के साथ गेंद करेंगे, यहाँ पे खेलने में कामयाब हुए अबरार, गैप में खेला। दूसरा रन के लिए पहले इरादा नहीं था ताबिश का, लेकिन फिर उसके बाद दूसरे रन के लिए भागे हैं, तो 2 रन के साथ अपने स्कोर का आगाज किया अबरार ने। बढ़तरी अब 282 रन की। बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग वक्त होता है ये फील्डिंग साइड के लिए। ये जो रन्स एंड में अगर आप कह सकें लीक होते हैं, वो तकलीफ भी पहुंचा सकते हैं इवेंचुअली टीम को, जब वो उसको चेस कर रहे हो टोटल। और कट किया इस मरतबा अबरार ने, और गेंद थर्ड मैन पोजीशन पे, और उतनी उम्दा फील्डिंग यहां पर मौजूद रिजवान हुसैन की जानिब से, यकीनी महफूज की अपनी टीम के लिए 3 रन। और ताबिश खुश नहीं है क्योंकि अब अबरार अगले ओवर का सामना करेंगे। ताबिश जिस तरह मैंने पहले बात की कि गेंद वाकई उनके सर पे लगी है, जिसकी वजह से मुस्कुरा रहे थे, और अब आपने देखा कि वापस अपने मूड में आ गए, गुस्से का इजहार कर रहे हैं ताबिश। ये इस बार बॉल अंदर आई और लेट कट इसको कहते हैं वो किया सेकंड स्लिप के दरमियान, और अच्छी फील्डिंग रिजवान की बाउंड्री पे। 1 रन ही बन सका, और स्ट्राइक जो है वो अब अबरार के पास। ताबिश इस बात से नाखुश थे कि वो चाह रहे थे कि स्पिनर का सामना खुद करें और शायद कुछ तेजी से रन बनाने की कोशिश करें। अब अबरार पे ज्यादा एतमाद नहीं है ताबिश को, बड़ी नाराजगी का इजहार किया है ताबिश ने कि दूसरा रन क्यों नहीं लिया। दिफाई अंदाज से पहली गेंद खेलने में और झेलने में कामयाब। 2 स्लिप के साथ गेंद कर रहे हैं अहमद सफी। कदमों का इस्तेमाल, और ताबिश यहाँ पे स्ट्राइक लेना चाहते हैं। काफी आगे निकल आए ताबिश, जल्दी कर रहे हैं ताबिश, एतमाद करना चाहिए अबरार पे। बड़ी हिट, बड़ा पावरफुल स्ट्रोक था ये, बड़ी पुर एतमाद हिट लगाई थी ये अबरार ने, कदमों का इस्तेमाल किया, बॉल तक पहुंचे और सीधा फील्डर के हाथ में चली गई बदकिस्मती से, लेकिन अच्छा शॉट।
दिफाई अंदाज से खेले इस मौके पे। अहमद, अगर हम अबरार के स्टांस पे बात करें, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ये झुक के खेल रहे हैं ये? बल्ले की अगर हम ग्रिप की भी बात करें, बहुत नीचे से उन्होंने बैट को कैरी किया हुआ है। से अकेले और सेंट्रल पंजाब के बॉलर्स के सबर का इम्तिहान लेते हुए इस मरतबा शॉर्ट कवर में मौजूद आबिद अली इस गेंद को नहीं रोक सके और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। ये ना तजुर्बेकारी तो मैं नहीं कह सकता, 100 विकेटें अभी आपने जिक्र किया ले चुके हैं, लेकिन अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे इस वक्त टेल एंडर्स को। इस मरतबा ज्यादा एतमाद के साथ खेले अहमद सफी की इस गेंद को अबरार। 287 रन की बरतरी अब हो चुकी है। मजीद 13 रन अगर हो जाते हैं तो एक अच्छा इजाफा होगा सिंध के अकाउंट में। और आप देख सकते हैं, ये हम स्टांस की बात कर रहे थे, एजाज अहमद याद आया आपको? जी हाँ, खासे मिलते जुलते अंदाज हैं इनके। एजाज अहमद और सिंध की टीम उम्मीद कर रही होगी कि शॉटें भी एजाज अहमद जैसी लगा सकें। तो बहरहाल 319 से स्कोर 9 विकेटों के नुकसान पे 287 रन की सिंध की बरतरी। और कहां तक सिंध अपनी लीड को बढ़ाने में कामयाब होगी, ये बताने के लिए मौजूद हैं शाह फैसल और अली यूनुस। '97, the top run getter of this inning, Asad Shafiq. Wonderful inning by him. And the second best, guess who? Sohail Khan with 73 runs of 109 deliveries. A wonderful inning. He was well supported by Hassan, who scored 49 runs, 32 for Umar bin Yusuf, 319 runs for 9 wickets, Sindh leading by 287. Happy days, happy times for Sindh. Shah Faisal. Absolutely. As the mastermind, Coach Basit Ali will be very pleased. Muhammad Ali has been ground to dirt by the Central Punjab skipper. Look at that. 33 overs out of 102 overs. That's a very, very long ball. A lot of work. But he's been up to the challenge, Muhammad Ali. He's bowling with that same intensity, bowling with the same pace, banging in short, bouncers. We haven't seen Yorkers much from him, but bouncers, yes, he's spot on with that. But at the moment, Sindh leading by 287 runs. It's not a good news if you are a Central supporter. Another one. If you can count the bouncer deliveries, there will be many today. That's what he has done, Muhammad Ali. Tried to scare the batters out, but hasn't happened. Well, there's an incredible stat about Muhammad Ali. He's almost got 100 wickets in this season. 29 in Quaid Azam Trophy, got 30 odd wickets for the second 11. His season started way back in the City Championship, where he got about 40 odd wickets. It's in the air and out of the park. Wonderful shot, big hit. Tabish Khan coming into the groove now. That's a long hit for 6. Wonderful batting. Sindh fighting right down till the end. He was pushed back in the crease with those fast bouncers, but as soon as he saw that ball pitched up in the arc and out of the park from Tabish Khan, incredible blow, powered away. Remember, there was a time when Sohail Khan was not even taking a single to give strike to Tabish Khan. And have a look at now. He's a senior partner when it comes to Ibrar Ahmed with him. And now hitting a long 6 to Muhammad Ali. Easily done.
The lead to 193. Central Punjab has really looked lackluster. They have lacked leadership on the park. That little session where Abid Ali led the troops when Saad was off the field. They really tried to make things happen, but overall they have a long day in the field and very little leadership. Absolutely, they've been flat. When the day started, a lot was expected of him, of the side. We were thinking that they might wrap this Sindh's inning quickly, but the credit must be given to Asad Shafiq. The way he started off things today early morning, first session, it's always difficult for the batters, but he did it wonderfully well. Showed patience, showed skill. He was well supported by Mohammad Hassan. And then by the second session, it was too easy for Sohail Khan to come in and bang in few boundaries. Got that score, 73, wonderful inning. Second 50 of the match. Bouncer, oh, that's gone right near from the wicketkeeper. 4 runs for Tabish Khan. He was ducking, but he left his bat high up. I think it took the edge. Might have skimmed off his helmet onto his bat as well. Just swatted it away. Very good bouncer. Well, try teaching that to any youngsters. Trying to avoid that delivery. Not a bad way if you can get 4 runs with that. The lead is now 297. Who would have had thought this morning when things started? Sindh has made a wonderful comeback yet again in this tournament, in this championship, and they're now favourites to win this Van even. Ahmed Safi Abdullah into his 17th over has taken 3 wickets. He's under-bowled in my opinion. Should have bowled more overs. Playing like a number 11, Abrar. Just a matter of time before he goes for that big swipe. Well, at the moment he's not in any sort of hurry. They got to be careful, Sindh. They don't want to take much time, too much time, to declare this inning. We understand there is a lot of time left, but they should give enough time to their bowlers to get Central Punjab out, because this is a quality Central Punjab batting. So you got to give them enough time to get them out. Although they did get KP out in 1 day's time, in fact half day, when they played here against Khyber Pakhtunkhwa. But that was a different attack. They had Dhani Hasnain in that side. "104 overs gone, 329 for 9 Sindh." And also the important thing is you want to show the opposition a realistic target that they can aim for, because if once they decide to shut the shop and a batter or two get settled on the crease, it'll be very hard to make breakthroughs like we've seen. But if they have a target that they think they can go for, they will take chances, and that will create opportunities. A few lessons for the youngsters. Ehsan Ali, Faraz alongside the former captain Sarfaraz Ahmed. And now we see Imran Doga. We should have seen him earlier. He will be bowling to Tabish Khan. This can be a good contest, because Tabish will go after him sooner or later. This wouldn't help Sindh. If they're batting, they need to continue to look to score. Absolutely, there is no point just blocking out these deliveries. Should be searching for some runs, some quick runs, some big hitting.
maybe get 20 odd more runs, get to 320, declare, give your bowlers enough chance to bowl your opponents out, because this is a good pitch to bat on, and Central has that firepower in them. Abid Ali, Rizwan Hussain, this is through. Runs for Ibrar, just a run in fact. So talking about Central's batting, they've got Abid Ali, Rizwan Hussain, Imran Doga, Mohammad Saad also in the side. So they've got plenty of batting, quality batters in them. So you've got to give your bowlers enough time to get those important wickets and win the game for yourself, because draw won't help. Down the track, up in the air, but away from the fielder. 2 runs to be taken by Tabish Khan. And that will take that lead past 300. 301 now. You see the claps from the Sindh camp. It's another psychological milestone that they've gone past now. It'll be beyond imagination if they continue to bat for any longer. Just searching for the right length, Tabish Khan. We know that he is going to go after the gentle off spin of Imran Doga. Just looking for that length to maybe heave it over mid-wicket or come down the track. Not quite getting. But Imran Doga should look to give it more air. It's very surprising that you're a part-time bowler looking to get a wicket. Bowling it flat won't help. 105 overs gone, 334 for 9 as Shah Faisal is anxiously looking towards the Sindh camp. Had they declared or they haven't? They haven't, Shah Faisal. Or they have? They have not. And the substitute from Sindh came onto the pitch. Muhammad Umar, I think. And he was sent back by the umpires. The umpires want to move the game along. But 62 overs have been bowled today. Another 28 remaining. Way too slow. What would be the message? What could be the message? Maybe a couple of overs. You got the opportunity to score runs. Yeah, but we still have the hold up. The substitute came and went. And then Tabish really wants to change his bat. Big news coming from the other side of town. Northern has completed a victory by an innings, and that will really propel them to the top of points table, because they collected 9 bonus points already, and the outright win with an innings, they will be sitting top of the table. Wonderful news for Northern. What a remarkable comeback it has been for Northern since they have travelled here to Karachi Lake. They've won 3 games, I believe. And they are now at the top of the table. Wonderful comeback. Doesn't get any better than that. It was Haris Rauf, in fact. And Haider Ali started off things, getting back to the momentum, and then it was up to Nawan Ali to take them to the top of the table now. Pressure on Sindh and Central. Because KP has also completed a victory earlier in the day. They got the job done. One team here, which is more likely Sindh at the moment, will probably join them on the victory trail for round number 9. But this is unnecessary wastage of time here from Tabish Khan. He's not happy with his bat. This is not good for Sindh. Cannot blame anyone. They're doing it themselves. Yeah, this was my worry initially when we were talking about the declaration. Sometimes notice that they err on the side of caution, and that's exactly what's happening here as well. What if he gets out? Nope, not happening at the moment. He's taking his time, he's taking the deliveries, waiting for the right sort of delivery to hit it out of the park. Looks like a brand new bat. This is a big one. There is a fielder. Oh, he can't catch it. It's gone for 4. It's working. The new bat has worked for Tabish Khan. Just signaling that that's exactly where he intended to play, the gap between the 2 fielders.
Yeah, that new bat is good enough. Timing was good. The intent was good. More importantly, the result was very good. Still not happy. What do you want? What are you looking for, Tabish Khan? You're 23 not out. I think he's still signaling that area, that mid-wicket, that cow corner. Wonder what he's asking for. Is he signaling that he's still going to hit him there? Yep, he's bowled him. Finally, the wicket falling. Ahmed Safi Abdullah getting his 4th wicket of this inning. Bowling Tabish Khan out on 23. It's the end of Sindh's inning on 338 runs. The lead by 306. So that means that Central would require to score 307 runs to win this game. They have enough time to do it though. Some unnecessary fuss before this delivery, but now Tabish cameo has come to an end. 23 of 57 deliveries. Sindh probably got what they wanted, a lead of 306 runs. The tail has wagged from a situation as we watch Tabish's dismissal, a slog across the line, loses his off stump. From 5 for 138, they have moved to 338. 200 runs added by the last 5 wickets. That could really prove to be the most telling blow from the tail of Sindh. That's a pretty ordinary day for Central Punjab. They were in a commanding position when the day started, but they've just given it away. Nothing taking away from the efforts of Asad Shafiq, Mohammad Hassan, Sohail Khan. They played wonderfully well. Have a look at the scorecard for Sindh. Khurram Manzoor, 23 runs. Ahsan Ali was just made 4 runs. Umair bin Yusuf, 32. Asad Shafiq was the man who held that inning together with his 97 runs. Was well supported by Mohammad Hassan, who scored 49 runs. And that inning in the end, Sohail Khan playing the inning of his life, 73 runs of 109 deliveries. And then it was Tabish Khan scoring 23 runs. In the end, Sindh managed to score 338 runs all out, and the lead by 306 runs, meaning that Central will have to score 307 to win this game. And this is how the wickets fell for Sindh inning. Have a look at that run out. Very unlucky dismissal for Ahsan Ali. A poor shot by Khurram Manzoor. Wonder what he was thinking playing that shot to Mohammad Saad. Fahim Ashraf, it was a good delivery and a very good catch by Imran Dogur in gully. Wonderful bowling. And this was Umair bin Yusuf. He tried to go over and straight, but it was a very good catch by Waqas. Mohammad Ali, the workhorse, getting the big wicket off Fawad Alam last inning. It was the last man to go. And then this morning, Mohammad Saad getting the wicket off Asad Shafiq right before the lunch. This was a blinder. Caught and ball by Waqas Maqsood. Sohail Khan, wonderful inning, was given LBW. Scored 73 runs. Mir Hamza couldn't do much. It was the same bowler again. This was the last one. Tabish Khan wanted to go big over that cow corner, losing his wicket for 23. Ahmed Safi Abdullah polished the tail, 4 for 58, took all the wickets. Mohammad Saad bowled really well, 2 for 47. But Muhammad Ali, the big-hearted effort from the big fast bowler, 1 for 100 of 34 overs. It was a magnificent effort from him. Bowled his heart out without much luck and support from his teammates. 338 in 105.3 overs means that Sindh will have a total of 306 to defend, and Central Punjab 307 to get up and climb that leaderboard, which has Northern sitting at the top now with 126 points and KP 124 points. Change of innings. We'll take a short break and we'll come back with you in just about 5 minutes.
Welcome back after the change of inning. And the news is that Central Punjab need to score 307 runs to win this game and have their hopes keep alive in this championship. Have a look at the match summary. Sindh scoring 155 runs in their first inning. Sohail Khan top scoring 65. Central in reply scored 187. Abid Ali scoring 98 runs. Sindh in reply, what a wonderful comeback. 338 runs courtesy to a wonderful inning by Asif Shafiq. Ahmed Safi Abdullah taking 4 for 58. Central Punjab need 307 runs to win. Runs on the board with Sindh's very experienced bowling lineup. They are definitely in the driver's seat. Abid Ali and Imran Dogar has come out to open for Central Punjab. 25 overs remaining in the scheduled play, which is highly unlikely, but very, very tricky period till close of play for Central Punjab batters. Seems like it was a good time for Sindh Punjab losing their wickets. 127th match, 8,674 runs for Abid Ali, an average of 40.64, the best of 249 24 hundreds to go with that 35-50. He's a wonderful player, and Central would want him to give them a good start, as he has always given them. In the last inning also, he was the only man that stood in the way, scored plenty of runs for Central. Imran Dogar, early days in his career, has been prolific at the second 11 level. Had graduated to first class, the best of 55. That would mean that he has scored a 50, so ignore that graphic on that part. But he will be very crucial to this chase, and he will have a very, very tough task at his hands against the likes of Hamza, Sohail Khan and Tabish. And this is the man who's got the ball in his hand, Mir Hamza. 359 wickets for Mir Hamza in his career. 27 times he's taken 5 wickets in one inning. Best of 7 for 59, as he's ready to bowl the first delivery of this inning to Abid Ali. Down the leg side. But the good thing is that swing is available. It's going to be a testing time for these openers. This is the best time to bowl for fast bowlers in Karachi, especially with the sea breeze. And like he said, first delivery, you could clearly see that movement, which we didn't see all day from Waqas Maqsood, even did he bowl with the second new ball. But this is the skill and quality of Mir Hamza. He will get that ball to go either way. Oh, wonderfully done. This is an excellent shot, but fielder taken. What a nice clip of the wrist that was from Abid Ali. And straight away we've seen that defensive field. This fielder is on deep square leg. A part of the plan for Sindh. Probably part of the plan for these two openers, making him think about that short pitch delivery, but that it was full and swinging on the pads. Was really surprised. Abid Ali probably didn't know or didn't notice that fielder. Remaining the same position for Dogar as well, and also there's a short leg in place. Down the leg side again. Shouldn't be wasting this new ball. That's the best they can do. Sindh, just make them play. Dogar hasn't had 100 at this level now. Still, what a time this would be if he's able to get 100 in this inning. And if he can win this game for his team, it will be a wonderful effort if he's able to do that. He's got the skill, he's got the potential to do so. Just need to be focused, determined to do it. This is better. Better by Mir Hamza. I said Dogar had been prolific at the second 11 level. He topped the charts last year. Farhan will confirm that. And also before he joined the first 11, he's still topping the charts
when he got that opportunity to represent that first 11. Since then, wickets have been difficult for batters to open, especially in the Sindh leg. Just 150 for him. This is good bowling and good running too. Off the mark, Dogar with a single. A lot depends on him because he can stay along with Abid Ali till the close of play today. Central Punjab might still rekindle those hopes of a victory, because like I just read the points table, Northern 126, KP 124. Swing available for Mir Hamza. It's been clipped towards that deep square leg fielder. One more run. That will make the end of the first over. 3 without loss, Central Punjab. Talking about that points table at the moment, Sindh stands at 105 and Central Punjab 103. Nothing to choose between the two. A victory for either side would really close that gap on KP and Northern and keep them under pressure for the next round. And if you're wondering what's the fixtures next round, Central Punjab will be taking on KP. It could well be a semi-final contest. Northern with Balochistan must be a fixture to look out for, and Sindh versus Southern Punjab, another mouth-watering contest. Wow, this is some quality cricket. That is why this Quaid Azam trophy is rated so high, because of the quality of players available. It's the best playing against the best. Talking about the best, here is another best. 120 matches, 512 wickets for Sohail Khan, and 37 times he's taken 5 wickets in one inning. 9 wickets for 109, his best bowling. It will be a challenge for central batters to negotiate his swing and his line. Yorker to start off. That's a good run. Very good running between the wickets. They knew that the fielders were not attentive. Option available. Yeah, they've got to do that. Rotation of strike is very important. Sohail Khan sitting on 26 wickets, is second amongst the list of top fast bowlers in this year's championship. He's really come good with the bat as well in this game. Probably we haven't seen his last contribution just yet. Oh, that has to be out. That has to be out. Given out. Wonderful start. That is the quality of this man, Sohail Khan. That kept low, came into Imran Dogar. No chance of him to survive that delivery of Sohail Khan. And that's the exactly sort of start Sindh were looking for. Huge start for them. Absolutely. The nip backer from Sohail Khan. Quite full. Dogar went on to that back foot. It really kept low. The angle was quite big, but I think the ball didn't have a lot to travel because Dogar was trapped inside the crease, and Walid Yaqub ruled in favor of the bowler. Worst possible start for Central Punjab. Imran Dogar, a lot was expected of him. Couldn't help much for this delivery. Kept low and lost his wicket. Wonderful start for Sindh. 4 for 1 is Central Punjab. सनसनीखेज आगाज़ हुआ है यहाँ पर सेंट्रल पंजाब के लिए। पहले ही ओवर में विकेट गवा बैठे इमरान डोगर, पहली इनिंग्स में भी नाकाम रहे, और अब रिजवान हुसैन जो 253 रन की इनिंग्स यहाँ पर खेल चुके हैं, 4 सेंचुरीज उनके पास मौजूद हैं, 1700 के करीब रन्स, और यहाँ एक बड़ी इनिंग्स खेलनी होगी रिजवान हुसैन को, क्योंकि 300 से ज़ायद रन्स का ताक़ुब कर रही है, और ये मैच बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल
बन चुका है इस वक्त अहमद सईद। बड़ी अच्छी कामयाबी सिंध को हासिल हुई है और इसकी तवक्को थी। ये बात हम डिस्कस भी कर रहे थे कि काफ़ी बेहतर इस्तेमाल करेंगे नई बॉल का सिंध के बॉलर्स। और आमतौर पर ऐसा होता है जब 100 से ज़ायद ओवर्स एक टीम फील्डिंग में रहती है तो फिर ओपनर्स के लिए जाते ही जो है विकेट पर ठहरना मुश्किल हो जाता है। इस तरह के मनाजिर हमें देखने को माजी में भी मिले हैं। दूसरे एंड पर आबिद अली मौजूद है और उनका साथ देने के लिए आए हैं बाएं हाथ के बहुत ही बासलाहियत बैट्समैन रिजवान हुसैन, और मेरा साथ देने के लिए आगे हैं एक और बहुत ही बासलाहियत कमेंटेटर अली सलमान। खुश आमदीद अली। शुक्रिया फरहान। 303 रन्स अभी भी खसारे में है सेंट्रल पंजाब, और किस तरह से इनिंग को आगे बढ़ाएगी यकीनन ये देखना होगा। बैट और पैड को मिलाकर खेले और दिफा पर कारबंद है, और ये वो लम्हा है जब सिंध की टीम ऑल आउट अटैक करने जाएगी। रन्स इनके पास काफ़ी मौजूद हैं और 300 से ज़ायद रन्स का ताक़ुब करना कभी भी आसान नहीं रहा चौथी इनिंग्स में। लेकिन यहाँ पर जीत चाहिए दोनों टीमों को। अगर हम पॉइंट्स टेबल देखते हैं अली, नॉर्दर्न और केपी ने अभी अभी कामयाबियाँ हासिल की हैं। तो नॉर्दर्न 126 पॉइंट पर है, केपी 124 पर, सिंध 105 और सेंट्रल पंजाब 103। तो इस मैच में जो फतह है वो इस पॉइंट टेबल पे किसी भी टीम की पोजीशन को आगे पीछे करेगी। यहाँ पे खुश नहीं है फवाद आलम, ताबिश है कि इस फील्डिंग एफर्ट से एक रन के लिए जान मारनी है। 2 ओवर मुकम्मल हुए 5 एक विकेट के नुकसान पर। और ये जो पॉइंट्स टेबल है अली, ये दोनों टीमों के जो कोचेस हैं, जो स्टेट बैंक पर मुकाबला हो रहा है, उनकी भी निगाह में ज़रूर होगा। और हम अभी दिखाएंगे अपडेटेड पॉइंट्स टेबल दिखाएंगे ताकि जो हमारे शायकीन हैं, व्यूअर्स हैं, वो भी जान सकें कि पॉइंट्स टेबल पर क्या पोजीशन है इस वक्त। लेकिन पहली कोशिश ये होगी यहाँ पर कि बढ़तरी को ख़त्म किया जाए और प्रेशर में रखा जाए सिंध की टीम को। मीर हमजा तैयार हैं बॉलिंग के निशान पर। भारी जिम्मेदारी है आबिद अली के कंधों पर। एक इनिंग को एक एंड से पाए रखें क्रीज को। ये अबरार हैं और दूसरे यानी अबरार पे बहुत जिम्मेदारी, क्योंकि अबरार की बॉलिंग यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। मरकज़े निगाह होंगे कल जब ये बॉलिंग करने के लिए आएंगे। आज भी ज़रूर चंद ओवर्स में हम इन्हें एक्शन में देखेंगे। और पहली इनिंग्स में भी देखें तो जो कदरे नया गेंद था वो काफ़ी बेहतर अंदाज से किया था अबरार ने। लेकिन इस वक्त जो मरकज़े निगाह हैं वो आबिद अली हैं। पहली इनिंग्स में 98 रन बना चुके हैं, और अगर ये जो 301 रन तक रसाई हासिल करनी है सेंट्रल पंजाब को, तो आबिद अली को एक बड़ी और जिम्मेदाराना इनिंग्स खेलना होगी। जी, आबिद अली के कांधों पे बड़ी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुज़िश्ता इनिंग की कारकर्दगी को दोहराएं। ऑन पर खेले 1 रन के स्कोर में मजीद इजाफा, और जल्दी हम अबरार को एक्शन में देख सकेंगे। और ये वो मंजर है इमरान डोगर के आउट होने का। ये गेंद शायद लेग स्टंप की जानिब जा रही थी लेकिन काफ़ी नीचे लगी, इसलिए अंपायर वलीद याकूब ने आउट करार दिया। दोनों इनिंग्स में नाकाम रहे हैं इमरान डोगर। डिफाइन द से के लिए रिजवान इस मौके पर
इस पिच को बेहतर समझते हैं रिजवान, और साथ साथ उनको आबिद अली जैसे सीजन प्लेयर के साथ हासिल है। और यसर शफीक के जो एक और बदकिस्मत खिलाड़ी रहे, नर्वस 90s का शिकार है, 97 रन की इनिंग खेली इस मैच में एक मुश्किल मौके पर, और मोहम्मद हसन के साथ अपनी इनिंग को आगे बढ़ाया। सीजन कैंपेनर, और सर हम सुबह बात कर रहे थे, जो आपने स्टैट्स बताए थे कि 16 इनिंग से इन्होंने कोई सेंचुरी नहीं बनाई। 2019 दिसंबर में इन्होंने सेंचुरी आखिरी स्कोर की थी, और आज भी उस सेंचुरी से महरूम रह गए जो ये डिजर्व करते थे। और शायद अली इन्होंने अपनी पूरी इनिंग्स में एक ही ख़राब शॉट खेला और उस पर विकेट गवा बैठे। और आमतौर पर जब इतना इंतज़ार में हो बैट्समैन अपनी सेंचुरी के लिए, तो फिर वो जल्दबाजी में भी अपनी विकेट देता है, और शायद इसलिए असद शफीक आउट हुए। आज कोशिश फरहान ये होगी सिंध की कम से कम एक विकेट हासिल की है, 3 विकेटें कम से कम आज ज़रूर हासिल करें, और अगर उसमें प्राइज विकेट मिल जाती है आबिद अली की तो सोने पे सुहागा होगा। ये आगे गिरा हुआ गेंद था, इसको ऑन साइड पर खेला। फील्डर्स हर जगह पर तैनात किए हुए हैं फवाद आलम ने। ये ताबिश खान है, इनको भी हम एक्शन में देखेंगे आज। और आमतौर पर अली ये होता है कि जब बहुत लंबी आप फील्डिंग करने के बाद आते हैं, एक बड़ा टारगेट जेन में होता है, तो नफसियाती तौर पर भी जो ओपनर्स हैं वो दबाव का शिकार होते हैं। बिल्कुल, और इस वक्त दिन के अख्तामी लम्हात हैं। पहली कोशिश होगी कि विकेट ना गिरने दें। अंदर आते हुए गेंद ऑन पे खेले, बहुत ही खूबसूरत खेले रिजवान, और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। पिछली गेंद पर भी यही शॉट खेलना चाहते थे, इस मरतबा ये गेंद मजीद स्विंग होने के बाद रिजवान की टांग की तरफ गई और इसको ऑन साइड पर राह दिखा दी बाउंड्री लाइन के। और इस चौके से ज़रूर एतमाद हासिल हुआ होगा मोहम्मद रिजवान को, जो पिछले मैच में यहाँ पर बहुत ही शानदार इनिंग्स खेलने में कामयाब हुए थे। और ये लेटेस्ट जो पॉइंट्स की सूरत हाल है, नॉर्दर्न और खैबर पख्तूनख्वा ने कामयाबी हासिल की है। नॉर्दर्न ने इनिंग्स के मार्जिन से मैच जीता है अपना सदर्न पंजाब के खिलाफ, तो एक बोनस पॉइंट भी उन्हें मिला। तो 126 पर नॉर्दर्न, 124 पर खैबर पख्तूनख्वा। और ये जो दोनों टीमें हैं सिंध और सेंट्रल पंजाब, इसमें जो टीम कामयाबी हासिल करेगी वो फिर बिल्कुल करीब हो जाएगी नॉर्दर्न और केपी के। तो बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन है इस पॉइंट टेबल पर। जब आगाज़ हुआ इस लेग का, इस राउंड का, 9वें राउंड का, तो 102 पॉइंट के साथ सिंध और खैबर पख्तूनख्वा लीड कर रहे थे। उसके बाद फिर 100 पॉइंट्स थे, और इसी तरह का सिलसिला था उसके बाद। और यहाँ पर एक अच्छा कॉन्टेस्ट है, और नॉर्दर्न के जो कोच हैं एजाज जूनियर, इनको ज़रूर सराहना होगा, क्योंकि उनकी कोचिंग में सेंट्रल पंजाब ने भी कायद आज़म ट्रॉफी अपने नाम की थी, और अब नॉर्दर्न भी हमें यहाँ इस वक्त टॉप पे नज़र आ रही है। एजाज अहमद जूनियर की आपने बात की, तो कोचिंग का वसी तजर्बा उन्हें हासिल है। मुझे नहीं याद कि कोई ऐसा रीजन होगा जहाँ उन्होंने कोचिंग ना की हो। फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है, सियालकोट रीजन की कोचिंग की, डेरा मुराद जुमाली में भी उन्हें भेजा, आज़ाद कश्मीर की रीजन की भी कोचिंग करते रहे। फिर सेंट्रल पंजाब का आपने जिक्र किया, तो उनकी कोचिंग में सेंट्रल पंजाब ने कामयाबी हासिल की। और अब बिल्कुल नौजवान टीम, अगर हम नॉर्दर्न की टीम देखते हैं तो सबसे कम तजर्बा नॉर्दर्न के पास है, लेकिन बड़ी खूबी से लड़ाया एजाज जूनियर ने इस टीम को। जी हाँ, जितनी दाद दी जाए काम है एजाज जूनियर को। जिस तरह से उनकी टीम स्लो एंड स्टेडी सफ़र करते हुए पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे पहुंची है, यकीनन क्रेडिट जाता है। और दूसरी जानब क्रेडिट जाएगा आबिद अली को, कि जिनकी शानदार इनिंग की बदौलत पहली इनिंग में एक अच्छे खेल का मुजाहरा करने में कामयाब हुई थी सेंट्रल पंजाब, और ज़बरदस्त बैटिंग की थी। 98 रन की इनिंग खेली थी आबिद अली ने, और यहाँ भी इनका किरदार अभी ख़त्म नहीं हुआ। अहमद सईद, उनके साथ अली यूनुस, शाह फैसल और लाहौर साहब एक और मेहमान। और अली ये जो स्क्रीन के बिल्कुल बाएं जानिब हैं, अजीम इनका नाम है, लाहौर में इनका एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्रिकेट के फ़ैन है, और इनके रेस्टोरेंट में आपको जो मेमोरेबलिया है, जो खिलाड़ियों की तस्वीर हैं, उनकी शर्ट्स हैं, उनका जो सामान है, वो आपको वहाँ पर मिलेगा। तो अच्छा खाना भी खाएं और क्रिकेट की जो तारीखी दस्तावेज़ात हैं उनसे भी लुत्फ़अंदोज़ हों।
और बिल भी ना दें, क्योंकि क्रिकेट के शौकीन है तो क्रिकेटर से तो बिल, कमेंटेटर से तो बिल नहीं लेते होंगे। अगरचे मैं अली लाहौर में ही रहता हूँ, लेकिन अभी तक इनके रेस्टोरेंट जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन ये अच्छा मशवरा आपने दिया है, तो अब कायद आज़म ट्रॉफी के बाद सीधा इनके रेस्टोरेंट का रुख करूँगा और जी भर के खाना खाऊँगा। तो फरहान, आपके इन कमेंट के बाद तो आपको लाइफ टाइम जो है वो फ्री मील होना चाहिए। और मैंने अपनी आवाज़ बढ़ा दी है कि मेरी आवाज़ पहुंच सके अजीम तक। लेकिन अली, हम बाहर की दुनिया में हम देखते हैं कि ऐसे क्रिकेट के फैंस मौजूद होते हैं जो अपनी जेब से पैसे खर्च करके ये मैचेस देखने के लिए जाते हैं, खिलाड़ियों से मिलते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, और पाकिस्तान में ये ट्रेंड बहुत कम है। तो ये अजीम नौजवान है, लेकिन ये क्रिकेट के खेल से मोहब्बत करते हैं और कायद आज़म ट्रॉफी के मैचेस देखने के लिए ये सिर्फ आए हैं कराची, क्योंकि ये अजीम नौजवान है। अजीम नौजवान ही अजमत वाले के हामिल काम करते हैं। और बोल्ड कर दिया, बड़ी विकेट सोहेल खान की, और ये वो विकेट थी कि जिसका इंतजार था सिंध की टीम को। आबिद अली, और आप देख सकते हैं इमरान ताहिर के अंदाज में जुबिलेशन सेलिब्रेशन सोहेल खान की जानिब से, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब आए, और सोहेल खान की एक बैटिंग परफॉर्मेंस एक तरफ और ये विकेट एक तरफ। सुहेल खान ने पूरी तरह से मेला लूट लिया, और जिस अंदाज से उन्होंने इस विकेट का जश्न मनाया, ये इस बात को साबित करता है कि सिंध की टीम तकरीबन इस मैच को अपनी मुट्ठी में बंद करने में कामयाब हो गई है। बहुत बड़ी विकेट, आबिद अली अपनी बॉडी से दूर खेल रहे थे, ये गेंद अंदर आई, इनसाइड एज लगा और विकेटों से जा टकराई। ये देखिए, क्रीज से बाहर निकल कर खेले, स्विंग को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन बैट और पैड के दरमियान बहुत बड़ा गैप। और ये अंदाज देखिए सुहेल खान का, बहुत कम ही हमने इस अंदाज से जश्न मनाते देखा है सुहेल खान को। इमरान ताहिर के से अंदाज में जश्न मनाया, आबिद अली का डिपार्चर हुआ, 4 रन बनाए 11 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है सिंध की टीम ने, सब कुछ सिंध के हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और सुहेल खान की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और जो वेटरन प्लेयर्स हैं सिंध की टीम के, वो हर लम्हा सबसे आगे हमें दिखाई देते हैं, जिनके पास तजर्बा मौजूद है और अपने तजर्बे का पूरा फ़ायदा वो उठाते हुए अपनी टीम को। और यहाँ बिल्कुल नौजवान खिलाड़ी आए हैं, अली ज़रियाब कप्तानी भी कर चुके हैं सेंट्रल पंजाब की, और ये बहुत ही मुश्किल वक्त है इस नौजवान बैट्समैन के लिए। अगर ये वक्त सर्वाइव करने में कामयाब हो जाते हैं तो सेंट्रल पंजाब कदरे बेहतर पोजीशन में होगी, वरना मुश्किलात में घिरती चली जाएगी। बड़ी विकेट हासिल की है, अली ज़रियाब की आमद हुई, 23वां मैच खेल रहे हैं, 1241 रन स्कोर किए, 33.21 की एवरेज है, 5 निफ्ट सेंचुरियाँ, 3 सेंचुरियाँ, 131 बेस्ट। अली ज़रियाब 22 साल, अली ज़रियाब जिनके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी विकेट हासिल की है आबिद अली की सूरत में। तीन स्लिप एक गली के साथ गेंद करते हुए मीर हमजा फार एंड की जानिब से। ये अच्छा शॉट था, टाइम किया, यहाँ पर एक ही रन हासिल होगा। फवाद आलम कप्तान मौजूद हैं। तो अली, अगर हम कमिटमेंट की बात करते हैं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं सिंध की टीम के, खुरम मंजूर की हम बात करें, असद शफीक ने एक शानदार इनिंग्स खेली, और ये देखिए आबिद अली का डिपार्चर। और सिंध की टीम को एहसास था कि मुकाबला अब आबिद अली और सिंध के दरमियान है, जिस तरह वो मेरिट पे खेलते हैं। और जैसे ही विकेट हासिल की सुहेल खान ने, उनकी जुबिलेशन सेलिब्रेशन, और ये तो आपने ग्राउंड का मंजर देखा, उस वक्त हमने एक शॉट देखा था कि कुर्सियों से कोचेस खड़े हो गए थे। वो यकीनन रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, लेकिन हमने देखा मसूर अपनी नशिश छोड़ के खड़े हो गए, और हर तरफ जो थे वो मनाजिर खुशी के नजर आए। अपनी लाइन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे मीर हमजा इस वक्त। पिछले ओवर में रिजवान ने बाउंड्री हासिल की, इस मरतबा 2 रन बनाने में कामयाब हुए। और ये हम कमिटमेंट की जो बात कर रहे थे सीनियर प्लेयर्स की, असद शफीक की एक उम्दा फील्डिंग एफर्ट, ताबिश खान ने जिस तरह की बैटिंग और बॉलिंग की, और सुहेल खान तो बिल्कुल टॉप पर दिखाई दे रहे हैं। तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं, ओल्ड इज गोल्ड। असद शफीक जिनके नाम के मायने ही शेर के हैं, क्या शेर की तरह गेंद तक लपके, अच्छी
स्प्रिंट लगाई, गेंद तक पहुंचे और उस अंदाज में गेंद को थ्रो किया। और एक और सीनियर प्लेयर खुर्रम मंजूर जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं सिंध की फतुहात में। नौजवान एहसान अली और ये असद शफीक हैं कि जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त ना सिर्फ बैटिंग की, बदकिस्मत रहे सेंचुरी को मिस किया, लेकिन फील्डिंग में बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट थी यहाँ पे असद शफीक की जानिब से। अच्छी स्प्रिंट थी यहाँ पे असद शफीक की, एक ही अंदाज में गेंद तक पहुंचे, फील्ड की, थ्रो की। बड़ी ज़बरदस्त कमिटमेंट विद द टीम, विद द गेम असद शफीक की जानिब से। असद एक असद की तरह, एक शेर की तरह गेंद तक लपकते हुए। ये अच्छा गेंद था, बैट का बाहरी किनारा लिया, फील्डर के पास से होता हुआ ये गेंद बाउंड्री लाइन की जानिब गया, लेकिन बिल्कुल भी इस शॉट पर बुरा नहीं मनाएंगे। मीर हमजा अपनी लाइन पर वापस आ गए हैं और एज हासिल करने में भी कामयाब रहे। एंगल किया टुवर्ड्स थर्ड मैन, खेलना चाहते थे। बल्ले का आउट रेज लेने के बाद गेंद गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। और आबिद अली जब आउट होने के बाद फरहान हमारे सामने से गुजरे तो आपको याद होगा गुज़िश्ता इनिंग में उनका बैट टूट गया था, तो उन्होंने फ्रेश बैट लिया था। और जब वो गुजरे हैं सामने से तो हमने देखा कि इनसाइड एज जहाँ उनके गेंद बल्ले के बिल्कुल बाहरी किनारे पे लगी है, एक बहुत बड़ा स्पॉट था वहाँ पे जिससे गेंद लगने के बाद विकेट्स पे जा लगी और फिर आबिद अली का डिपार्चर हुआ। आमतौर पर बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट खेलते हैं आबिद अली और बहुत कम देखा है कि उनके बैट पर एच लगते हैं, और ख़ास तौर पर जब वो पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। लेकिन एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर हासिल कर ली है सुहेल खान ने। इस मैच में सुहेल खान के लिए बहुत कुछ है, बॉलिंग अच्छी की, बैटिंग अच्छी की दोनों इनिंग्स में। और अब आबिद अली की जो विकेट है उनकी तमाम तर परफॉर्मेंस पे सबसे भारी परफॉर्मेंस है ये, जो उन्होंने आबिद अली को आउट किया और मजबूत दिफा को आबिद अली के तोड़ा। इस मरतबा भी टाइम किया, और ये दोनों बैट्समैन अगर आप देखें तो ये ज़्यादा ज़ोर से ड्राइव नहीं कर रहे, सिर्फ गेंद को टाइम कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि गेंद हवा में जा सकता है। और इस वक्त बिल्कुल भी कोई विकेट गंवाना अफोर्ड नहीं कर सकती सेंट्रल पंजाब की टीम। 5 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है, 19 रन 2 विकेटें गंवाने के बाद सेंट्रल पंजाब। जल्दी हम ताबिश खान को एक्शन में देख सकते हैं कि अब तक मीर हमजा की जानिब से नई गेंद का इस्तेमाल देखने को नहीं मिला जिसकी एक्सपेक्टेशन यकीनन होगी। और ये सुहेल खान, पहली विकेट डोगर की सूरत में, पैड्स पे लगी पुरजोर अपील, और दूसरा आबिद अली। ये कह सकते हैं कि इमरान डोगर किसी हद तक अनलकी रहे, लेकिन इस मरतबा अंपायर को भी जहमत नहीं दी जब आबिद अली को शिकार किया सुहेल खान ने। और ये गेंद लेग साइड पर थी। विकेटों के पीछे, विकेटों के आगे काफी बेहतर रहे मोहम्मद हसन भी, अली शान ने भी बड़ी जबरदस्त विकेट कीपिंग की। दोनों टीमों को अच्छे यंग नौजवान विकेट कीपर्स का साथ हासिल। और सुहेल खान का अगर आप बॉलिंग फिगर देखें 2 पे 2। और ये हसन है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, बात करते रहते हैं, हत्ता कि बैटिंग में भी ये खामोश नहीं रहते। नॉन स्ट्राइकर एंड पर भी मौजूद हों तो फील्डर्स के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं, लेकिन बहुत ही उम्दा विकेट कीपर। जी हाँ, मैं बात करता सुहेल खान के बॉलिंग फिगर की 2 पे 2, तो यकीनन सुहेल खान की जो उम्दा परफॉर्मेंस है वो इस बात की मुतकाजी है कि कुछ दूसरों को भी करने दो। लेकिन अली फवाद आलम इस पोजीशन पर भी शायद खुश नहीं दिखाई दे रहे। मुखालिफ टीम को 300 से ज़ायद रन का हदफ दिया है, 2 विकेटें हासिल कर ली हैं, बड़ी कामयाबी आबिद अली की सूरत में भी। लेकिन अभी भी अगर आप चेहरे के तासुरात देखें तो मुतमिन नहीं है अभी भी फवाद आलम, क्योंकि अभी दिल्ली दूरस्त, हुनूज दिल्ली दूरस्त, ये मंजिल बहुत दूर है, अभी टास्क जॉब कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए शायद परेशानियां हैं फवाद आलम के चेहरे पर। क्योंकि उनका एहसास है कि पॉइंट्स टेबल उन तक भी पहुंच चुका होगा फरहान, उनका अंदाज़ा होगा कि इस मैच में कामयाबी कितनी ज़रूरी है फाइनल तक पहुंचने के लिए। इस मैच के बाद एक और राउंड का मैच बाकी है तमाम टीमों का।
लेकिन इस वक्त बहुत मुस्तहकम पोजीशन है सिंध की टीम की, लेकिन फवाद आलम एक ऐसा करैक्टर है कि इन्हें मुतमिन करना बहुत ही मुश्किल काम है। बैटिंग कर रहे हो तो स्क्रीन साइड स्क्रीन से मुतमिन नहीं होते, लेकिन बहुत ही बाकमाल क्रिकेटर। और आप देखें फर्स्ट स्टेशन में पूरा इन्होंने एक सर्कल काटा है और किसी से बात भी नहीं की, पूरा एक चिल्ला इन्होंने काटा है, पूरा एक सर्कल इन्होंने काटा है। आप देखिए गुज़िश्ता ओवर में पूरा ये घूमते हुए गए और फ्रस्ट्रेशन में ना किसी से बात, ना किसी चीज फोकस करते हुए। और अब गेंद की शायद जो साख्त है उससे खुश नहीं है, तो खुश नहीं रहते फवाद आलम, ये तो हमने पिछले गुज़श्ता कई बरसों से देखा है। लेकिन बड़े जबरदस्त क्रिकेटर हैं फवाद आलम। इस मरतबा ऑन साइड पर खेला, बहुत ही अच्छा टाइम किया आबिद अली। ताबिश खान गेंद के पीछे थे लेकिन रोकने में नाकाम रहे और ये दूसरी बाउंड्री हासिल हुई है यहां पर रिजवान हुसैन को। रिजवान हुसैन अब उनका विकेट पे रहना जरूरी है सेंट्रल पंजाब के लिए, इस पिच को समझते हैं। अच्छी टाइमिंग के साथ खेले ऑन पे, गेंद रोल होती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। दो 283 रन की बढ़तरी अब रह गई है सिंध की। और रिजवान हुसैन पे बड़ी भारी जिम्मेदारी। ये फवाद आलम जिनका हम तस्करा कर रहे थे, एक क्रिकेटिंग फैमिली से इनका ताल्लुक है। इनके वालिद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है। HBFC के लिए काफ़ी अर्से तक खेलते रहे तारिक आलम। इनके जो अंकल हैं रफ़त आलम, अच्छे ऑलराउंडर थे, अच्छे पेसर थे। इसके अलावा इनके जो फादर इन लॉ हैं मंसूर अख्तर, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। ब्रदर इन लॉ दानियाल मंजूर कराची अंडर 19 खेले। उस्मान अफजाल जो इंग्लैंड के क्रिकेटर थे वो इनके कज़न। अदनान मलिक इनके कज़न। मंजूर अख्तर इनके फादर इन लॉ के छोटे भाई। इनके खुद भाई जवाद आलम जो पाकिस्तान कस्टम से खेले। तो क्रिकेटिंग फैमिली से ताल्लुक़ है फवाद आलम का। शायद मीर तकी मीर ने इन्हीं के लिए तो नहीं कहा, मुस्तनद मेरा फरमाया हुआ, मैं हूं सारे आलम पर छाया हुआ। और रिजवान कुछ तकलीफ में है और इनकी सलाहियत पर किसी भी तरह से शक नहीं किया जा सकता। जूनियर क्रिकेट के बाद मुझे याद है पाकिस्तान की उस अंडर 19 टीम के भी रुकन थे जिसने बांग्लादेश में वर्ल्ड कप जीता, और उसके बाद एक नेशनल T20 में इन्होंने बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, मैन ऑफ द फाइनल तमाम एजाज़ात ले उड़े थे और उसके बाद ये फिर पाकिस्तानी टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए। जी हाँ, वो मैच, वो इवेंट मैंने कवर किया था। उस टूर्नामेंट में बड़े जोवन पे नजर आए थे फवाद आलम। और उसके बाद फिर इनको शारजा में नजफ शाह के साथ डेब्यू कराया गया। पहले मैच में ज़्यादा कामयाब नहीं रहे, लेकिन पहले टेस्ट मैच में बड़े कामयाब रहे। पहले वनडे में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी फवाद आलम की। नजफ शाह तो अब किस्सा पारीना बन गए और अब फवाद आलम अभी तक नाखुश हैं मीर हमजा के साथ बातचीत करते हुए। और वजह सिर्फ इसकी यही है कि विकेट्स चाहिए फवाद आलम को। और ये बेहतर पर यकीन नहीं रखते, बेहतरीन इनका तकाजा होता है। और इन्होंने जो क्रिकेट खेली है, अगर हम उनकी बैटिंग परफॉर्मेंसेस देखें तो वो भी बेहतरीन है। उनकी बैटिंग औसत देखें, सेंचुरीज की तादाद देखें, रन्स की अंबार देखें, तो ये नंबर 1 पर रहे हैं, टॉप पर रहे हैं थ्रू आउट अपने डोमेस्टिक करियर में। और आपको याद होगा मैंने गुज़िश्ता ओवर में कहा था कि हम जल्दी ताबिश को एक्शन में देखेंगे। तब ताबिश को गेंद दी है, हमजा की जगह ताबिश खान गेंद करने के लिए आए हैं। दूसरे एंड से सोहेल खान बड़ी उम्दा गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। फवाद आलम सबको एक्टिव रखते हैं, सबको जगा के रखते हैं। ये फील्ड देख सकते हैं आप, ऑफ साइड की फील्ड, ऑन साइड की फील्ड, काफी बड़ा ग्राउंड है ये। ताबिश खान का ये पहला गेंद लूजनर कहेंगे, आगे गिरा हुआ था। और ये अच्छी तब्दीली है। मीर हमजा की शायद लाइन इतनी बेहतर नहीं थी तो फौरी तौर पर ताबिश खान को लेकर आए। और जब 3 ऐसे फास्ट बॉलर आपके पास हों जिनकी विकेटों की मजमूई तादाद 1500 के लगभग हो, तो फिर कप्तान के पास एक लग्जरी होती है कि वो एक के बाद एक तब्दीली करता जाए और विकेटें हासिल करे। अच्छा कलेक्शन था यहाँ पे मोहम्मद हसन की जानिब से, काफी गेंद नीची रही।
चौथी इनिंग में बैटिंग करना किसी भी बैट्समैन के लिए आसान नहीं। अच्छा कलेक्शन इसको कहा जाएगा मोहम्मद हसन की जानिब से। ताबिश खान की रफ्तार के हवाले से क्या समझते हैं आप? क्या ये उसी पेस से ही बॉलिंग कर रहे हैं जैसे 5-6 बरस पहले करते थे, या फिर इनकी रफ्तार में कुछ कमी आई है? जहाँ डेफिनेटली कमी आई है, क्योंकि एज डज मैटर। कवर में खेले इस मरतबा, लाइन को मेंटेन करते हुए ताबिश, लेकिन इब्तिदा में काफ़ी तेज़ रफ्तार बॉलर थे। अब भी इनकी रफ्तार किसी हद तक कम ज़रूर हुई है, लेकिन इनको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। एंजॉय करते हैं अपनी बॉलिंग को, और कंडीशन जो है वो विकेट से की मुतकाजी हैं। दूसरी जानिब हम हसन की बात कर रहे थे। हसन मुमकिन तौर पे शायद अगला मैच ना खेलें, क्योंकि सरफराज ज्वाइन कर लेंगे टीम को। और ये गेंद राइज हुआ, कदरे तेज आया, तो अब विकेट भी यूं लग रहा है कि तीसरे दिन का ये इख्तितामी वक्त है, तो एक तरह से डबल पेस भी हमें दिखाई देती है। कुछ गेंद नीचे रह रहे हैं, कुछ गेंद ज़्यादा उठान ले रहे हैं, तो यहाँ पर एडजस्ट करना इतना आसान नहीं होगा इन दोनों बैटर्स के लिए। ऑप्शन से बाहर गेंद जा दिया इसको विकेट कीपर के ग्लव्स में। रन बनाने का मौका नहीं। बढ़तरी अब 283 रन की। मजीद 1-2 विकेट्स अगर मिलती हैं तो सिंध के पास बड़ा सुनहरी चांस होगा इस मैच में फतह हासिल करने का। और इब्तिदा में हमने देखा सेंट्रल पंजाब ने डोमिनेट किया हर शोबे में, और अब हमें आज के दिन सिंध की डोमिनेशन नजर आ रही है। ये सुहेल खान मैन ऑफ द मोमेंट सिंध के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहे। सुहेल खान सिंध की टीम ने मैच के तीसरे दिन में हमेशा अच्छा किया है तीसरी इनिंग्स में, और अभी भी 283 रन दरकार हैं सेंट्रल को जीतने के लिए। दोनों ओपनर्स को गंवाने के बाद स्कोर है 24 रन। Beautiful pictures from State Bank Sports Complex as the evening has set in. Sindh has dominated the day, first with the bat and now with the ball. Suhail Khan around the wicket, always keeping those good areas. It's reaped the rewards already. 2 wickets for him in the second innings. Very happy and pleased. Right next to me is Amar Saeed. Very good evening, Amar. Thank you very much, Shah Faisal. Good evening to all the viewers. Sindh doing pretty good. That makes you happy? Oh yes, it does. Usman Hussain, huge responsibility on his shoulders after the dismissal of Imran Dogar and Abid Ali. That dismissal from Abid Ali was really crucial for both teams. Suhail Khan getting 2 quick wickets. Bowling up to the batter, much fuller, getting the rewards. And Abid Ali, as you mentioned, making that mistake which has been the reason for the downfall of many a batsman on this wicket, driving away from his body, creating that gap between bat and pad, and paid the price. Price scalp, that one for Sindh.
as all hopes were pinned on Abid Ali to play that role of the sheet anchor, or most probably the dominating batsman for Central Punjab. But now it is up to the rest of the batting. Mohammad Saad to follow. He's got a role to play. He most probably is now the batsman who has to play that sheet anchor role whenever the opportunity comes. Usman Hussain, the double century maker. Once again, big shot, pitched in line, and the finger has gone up. Ali Zaryab caught on the crease, was plumb in front, and is that man Sohail Khan once again did it with the bat, and now doing with the ball. Central Punjab reeling. Excellent bowling. Look at that length. That is what we were talking about. There you see the fuller length. Stuck on the crease, Ali Zaryab, and paid the price. Absolutely plumb. Absolutely stone dead. And look at Sohail Khan. That was some celebration. Ali Zaryab makes the long walk back. Gone for 8. Central Punjab 25 for 3. $25 for 3. Ahmed Saeed, is it that simple? We've just discussed this earlier as well. Cricket is a simple game. If you make it complicated, then things might get complicated. But otherwise, it's simple. As far as bowling is concerned, at the moment, Sohail Khan showing that if you bowl a fuller length on this track, it will create problems for the batters. And again, the batters making things difficult for themselves. The footwork is, they are unsure of their footwork, and that is creating problems. Mohammad Saad, 113 matches, 6,033 runs, 32 50s and 11 hundreds, 203 is his best, and a lot of responsibility on his shoulders. If Central Punjab are to save this match, I think from here. Well, the skipper, huge responsibility. He must be reflecting on how that day began. Came back in, but not quite enough to trouble Saad. Plenty of oohs and ahs. The chirp is quite loud from the Sindh fielders. And that's the replay. Look at that length. That little bit of movement. He was stuck on the crease. Head falling over. And plumb in front. Walid Yaqub would not make an easier decision than that. Got it spot on. And that's Saad. First delivery coming back in. Extravagant reactions from Hassan. Sindh all over Central Punjab. First, they dirt them to ground in the field. And now, few knockout punches to the top order from Sohail Khan. 25 for 3. Well, that is why so much emphasis is put on fitness nowadays. You stay in the field for a day, and all of a sudden, when you have to bat, there are problems. You're tired, and your body gets tired, so does your mind. And when your mind is tired, the whole thinking process changes. Two slips in a gully for Tabish against Rizwan. You make an excellent point, and I further emphasize that in case of Abid Ali, who's just come from national duty, he really had to battle hard in that first innings. It was a very fighting knock. It must have took out a lot out of him mentally
And then the drag in the field when he came around for the second time, his error was more mental than technical, because I think he wasn't willing to fight as hard as he did in the previous innings, because his mind was tired and he played that shot and paid the price. So even the best can succumb to that kind of pressure that this game can put on you. Well, you don't expect a shot like that from a player like Abid Ali, and especially if you see in the first innings how compact he was, and that is why he was successful on this wicket. Playing within himself, nothing flashy, nothing away from his body, and the results were evident. And in the second innings, he made the same mistake as most of the batsmen have made here, who have not been successful. That is playing away from the body. Strengthening the slip cordon. 2 slips in a gully. A short mid-wicket catching as well. Saad looks beautiful when he drives on that front foot. Glorious stroke. He just leant into it. Just a caress. And it fairly raced across. Look at that delivery. Bit too full. Half volley nearly, and punched. You see again, it wasn't really driven with a full flow, it was just punched. That is the way you play on this track. Excellent shot by Saad. Delivery. So look at that one, that jacked back in. Maybe did a bit too much on the higher side as well. So good decision by the umpire there. Knocked him over on that front foot. Tabish Khan has bowled an absolute pearler to Muhammad Saad, and the skipper has lost his off stump. Central Punjab slumps further. That drive again. Someone on the coaching staff or the analysts need to tell these batsmen, you cannot play those drives here on this track, especially with the new ball. Look at that. Well, beautiful delivery that left him at the last moment taking the off stump. Nothing much he could really have done about that, but yeah, maybe if he would have gotten closer to the ball and try to play a defensive shot rather than this drive, might have the result might have been a bit different. Drinks here at the State Bank Sports Complex with 30 for 4. जिसने अपने ही मिला लिए 10 मेरे लिए थे 70 हो गए अपने 10 मिला के क्यों भाई यार जो काम किया है ना राफे ने ओए होए होए काशिफ काशिफ यार तो आवाज ही सुनी गाने सुनने को मिला यार भाई वाह
What a session of play this. Central Punjab are really falling like 9 pins. 4 wickets down for 30 runs. Saif Badr is the new man in. What a delivery that was from Tabish. Angling in like he always does. And he straightened and hit the off pole of Muhammad Saad. 2 slips in a gully. Short mid-wicket catching. Another big in-swinger from Tabish. Slightly cooler outside. It's breezier. And the ball is doing plenty. This is the dismissal. He was shaping up for that drive. That ball kept coming in, but straightened at the last minute. Beat him on the outside edge. That ball was not there to drive. And Saad paid the price for it. Saif Badr is the new batter in. 20 matches, 969 runs so far. 750s and 100. 118 is his best. He would need to repeat that best performance for Central Punjab to have any hope from here. Highly improbable, especially in the face of this kind of bowling from Sohail Khan. Once again, swing in the air and off the wicket as well. As we were discussing, Faisal, of air, this was expected because we all knew what Sohail Khan, Mir Hamza and Tabish Khan can do with that new ball on this track, because they know which length to bowl. This one came in to Rizwan, going down leg side. And the key word you use again, the length. And again, angling in or away from the left-hander. But one thing is constant, and that is the length. And if you cast your mind back to all those 4 dismissals in the second innings, that length was crucial in all 4 dismissals. Sohail Khan, 3 for 8, 250s in the match. Cannot get any better than that. And like I say, he's not finished yet. Still swinging that ball. About half an hour's play still left. What more damage can he do to Central Punjab? And that's the dismissals we were talking about. Amber, just the length. Watch out for that length. Yes, that was, there you see the first ball. Pitched up, came in sharply, kept a bit low, most probably a bit unlucky. There again, that length, Abid trying to drive outside that off stump. Paid the price, and again, that fuller length. Batsman stranded on the crease. Plumb in front, and again, bringing the batsman on that front foot is the key here with the new ball. Not even afraid to get driven as well, like we saw the last one from Rizwan Hussain. That's the chance you have to take. Induce 2 drives and 2 wickets. Doesn't matter if it costs you 3 or 4 or even 5 boundaries to get 2 wickets. Exactly the difference between the Central Punjab and Sindh attack. The Central Punjab bowlers persisting with that short of length bowling, especially with that new ball, and the Sindh bowlers bowling that fuller length, and you can see the difference. Central Punjab could not dislodge the last 5 wickets of Sindh today. They had to pay a heavy price, 200 runs for the last 5 wickets. But since Sindh are bowling, they feel like they're bowling on a different pitch. Run scoring is absolute difficult because of those lengths. The skill and that knowledge by the Sindh pacers, and then the execution to go with it. That one kept low.
very low. Did it pitch in line? Umpire Walid Yaqub says no. End of 10 overs, 30 for 4, Central Punjab. You see that one pitching outside leg. Oh, look at that bounce. I'm pretty sure it hit that crack that we were talking about in the morning. We've seen a few balls pitch on that crack, and it did die off the wicket. It didn't bounce at all. If we can have just about that length as we watch the batsman doing the gardening, Rizwan Hussain. Tabish has also got the bit between his teeth. The ball is moving for him. Talking about that crack, have a look where that ball pitches. Did it hit a crack? It appears to be. Yes, he was spot on. Shah Faisal. That is the crack the ball pitched on that previous delivery. And, lucky for the batter that it is a bit outside leg stump for the left-hander. Nice flowing drive from Saif Badr onto that front foot. The ball was swinging, but he got into the drive very nicely. I don't think Tabish will mind that. Saif Badr off the mark with the boundary. Yeah, good shot. A half volley nearly, and punched through the covers for Saif Badr. But as you said, Tabish won't mind that, and as you know, he likes to play with that length. Tabish always bowling that fuller length. This time pushing him onto that back foot. Got good bounce on that. Like you rightly said, he's just playing with that length. It's not that he's erring in his length. That fuller one to induce him into the drive and push him back in the crease, and then probably that one in the next 6 meter area where the batter can go and play out in front. That's experience. Always challenging on that front foot. This time Saif Badr playing slightly around his pads. That was pretty straight. Saif Badr most probably coming on that front foot a bit too early, just because he's trying to counter that in-swinger from Tabish. Look at that. There you see. Swinger once again from Tabish. The constant throughout this over is the length. He's made him play on front foot on 3 out of 4 balls. We talk about the potential of the bowlers, how good they are, or how good they look. You have to add that skill of how to set up a batter, how to get wickets, how to get them out, to how their action looks, how quick they are. That knowledge and that skill also needs to be added. Walking down at Tabish, not as quick as he used to be, Saif Badr. And Fawad Alam, for some reason, seems to be pretty upset with most things. 35 for 4.
the summary. Match played at National Bank Ground, Southern Punjab, 238. Salman Agha scoring brilliant 142 in the first inning. Noman Ali getting 6 for, and Northern in the reply scored that mammoth 462. Faizan Riaz 168, and Southern Punjab in reply were all out for 219. Noman Ali again getting 6 wickets. The Northern won by an innings and 5 runs. And by virtue of that victory, they now sit at the top of the table. KPK is following hot on their heels, and I think Sindh will join them to complete the top half after this round. Beautiful sight here, State Bank Sports Complex, that pavilion in the sun setting. Magnificent shot. Finally, after 9 rounds, I think this points table is opening up slightly. And there will be a little gap between the top 3 and the bottom 3. But still 1 round to play. We don't know the finalists just yet. Farid Abdur Razak, sure he wouldn't be too happy with the performance of the batters and the bowlers. He's had a disappointing day. His mind must be going back to that Mohali Test match where Pakistan were 5 down at the end of the 4th day, and he and Kamran Akmal came out on that day 5 and played the entire day to take that test match to a draw. I'm not sure if even a draw would help Central Punjab here, but the man has done it himself, and he's in the best possible position to recharge his troops. Riding that bounce, both the batsmen have ended up at the same end. Fawad Alam will knock the bails off, and catastrophe here for Central Punjab as Saif Badr is very, very disappointed. But look at that Sindh camp. Jubilation. Unbelievable that. What a mix-up that is, especially at this stage. Look at that. Saif Badr playing that dived, and Meher bin Yusuf, and very well done in the end, keeping his nerves. "35 for 5. Look at that, Saif Badr. It was behind square. It was Rizwan's call. Saif Badr has no one else to blame because he turned his back on his partner. He was ball watching at all times. Rizwan called, he made his ground, and Saif Badr is absolutely livid with himself. And he should be. As you said, ball watching, it's not on. You've got to trust your partner who's got the eyes on the ball. Look at that again. He played it behind square, and look at that, watching the ball, not responding to the partner. That's a sin, and paid for it, and rightly so. Another good delivery. Homing in on those stumps, a little bit of movement as well. Fahim Ashraf was lucky he got a thick inside edge. What a spell of bowling this is. Sensational cricket here from Sindh. And Central Punjab has buckled under pressure.
This is an incredible game of cricket we've seen here today. For large times, it didn't look that anything can happen off of this wicket on day 3 until Central Punjab started to bat. Look at that one fly. Nearly knocked Hassan off his feet. I was anticipating. Look at that replay of that last delivery. Left alone, but look at that carry. I was anticipating that it would be difficult for Central Punjab to deal with Abrar in that 4th innings. Sohail Khan has other ideas. I don't think that he will leave it to Abrar. You're absolutely right. He could still be lethal, but he's not required. Glorious straight drive from Fahim Ashraf. 2 full on that occasion from Sohail Khan. And Fahim Ashraf with a great flourish hit it straight back past him. Boundary to finish off the over. 40 for 5. Yes, that one in his zone. And driven handsomely. No need to be overcautious, as Fahim has declared immediately after coming on the wicket. If it is there to be hit, Fahim will not be shying away. Those reactions have changed. Must have come to the ground this morning hoping for a victory. It may be a very, very distant thought right now with 40 for 5. Sohail Khan getting the applause of his teammates as he takes a little breather. Tabish will continue. Rizwan Hussain. Once again that fuller length. They don't mind getting driven, do they? And why should they? That is the length they have bowled since play started. The innings, Central Punjab's innings started, and they've got all the rewards. They don't need to change anything. Absolutely brilliant. This pair has bowled 4 since so far. 5 o'clock, schedule close has been reached, but we're still behind with the overs. Off the edge, through the gap. Rizwan will pick up a streaky boundary. Once again that fuller length inducing the false stroke. They have been relentless, the Sindh bowlers. The length Tabish is bowling, I think that mid-wicket fielder and even that cover fielder, you don't need it, especially at the end of the day's play when you're looking for wickets. You're looking to put that extra pressure on the batting side. You need fielders in catching positions. It will not matter if they get a couple of boundaries on the on or the offside. Full delivery once again, inviting that drive. You're spot on. Even that deep square leg, they need to try anything short just now. Get him in the slips. Show them the gaps, the batters. Rizwan is a free-flowing batter anyway. That mid-wicket has now come to the slip cordon, and that deep square leg was initially coming, but it's staying back 2/3 of the way. Two slips and a gully. Now there's still a gap between gully and look at that square leg fielder. There's still that gap between the second slip and gully. I would like to plug that gap with that cover fielder. I wouldn't mind if he hit for a couple of boundaries through that area, but I wouldn't like to miss that opportunity, which just went begging at the start of this over.
And that's the fielder in the middle that Amar is talking about. It can easily go into that gap between the two slips. Angling in, big shout. But the angle is working against Tabish. But clearly once again defeated Rizwan Hussain. It's going down the leg, I think. That angle being created. Once again, as I was discussing earlier, Waqas coming round the wicket. No need. See, yeah, that one going down with the angle. You don't need to change anything when things are, you're getting things right. Why change? You're right, Amar. Things were happening. Change of angle, not required, because he was getting that in-swinger as well. Look at that angle that he creates from wide of the crease. Is never going to threaten the stumps unless it straightens down the line. A very difficult skill. But he was doing much better over the wicket. That little in-swinger to the left-hander was troubling Rizwan. 46 for 5. 12 overs remain in the scheduled close of play, but like we see, maybe just 10 or 12 more minutes. And Hamza is now being given the ball. If Sohail doesn't get you, Tabish will. And if Tabish doesn't, Hamza will. That's a glorious straight drive. Once again, that fuller length, a little bit of shape into the left-hander. But Fahim Ashraf has really come out with intent. Puts away another beautiful boundary. Well, those are the kind of shots for which Fahim Ashraf is included in the test side for that number 6 position. Playing as an all-rounder. Very, very important position, that number 6 in a test match. They're definitely capable of playing a very good innings. Look at that. Hamza immediately comes back, pulls that length a little bit, and asks a tough question. Fahim should enjoy this battle. He's Pakistan's test star, a regular in the longer format. So watch this replay, just angling in. Not enough, but he had the off stump covered pretty nicely. Talking about Fahim's role in the national team, I mean, this should be a good examination for him. And he can learn a lot from him, because he can be doing that for Pakistan. Who knows? Looking to put bat to ball when he can. 50 has been brought up. 50 for 5. Well, as we had discussed earlier, when you see a test player come and play at this level, at the first class level, there's always should be a difference. A difference should be visible. We saw that with Abid Ali in the first innings. What a superb innings he played. And that is exactly what is needed from Fahim Ashraf here. Rizwan Hussain loves the short pitch delivery. He's also coped pretty well in the face of adversity. Moves into 20. Yeah, that's the point you made, and we saw in this round Abid Ali in the first inning was clearly head and shoulders above all the other batters. Fahim Ashraf now needs to come to the party. I was just talking about the rescue mission by Abdul Razak. Good target to emulate. Helped it on its way in the air, just falling short of Abrar. Two fielders were set. We've seen Hamza do this before as well. Probably it's for that shot, not for the short pitch delivery. Well, emphasizing the fact
about test players looking a bit different, having that extra thing in their armory. I remember a first-class game, Pakistan reserves played against Allied Bank at Gaddafi Stadium. Allied Bank were in a similar sort of situation where Fazli Akbar removed the top order. But Amir Sohail was playing that game, and even in that situation he looked different from others. He was at ease on the wicket, scored a double hundred, got his team out of trouble, and we eventually lost that match. That is the X factor I'm talking about in a test player when it comes to play first-class cricket. Difference in class has to be visible, and that's what Fahim Ashraf needs to do. You remember Amir Sohail did that later on in a test match against Australia. A match-saving 100. That's the stage where you learn your craft. You do it, and who knows, one day you may be required to do it in a test match. And if you've gone through a tough examination like this, you stand a better chance. But now Amir has got his wish. Only 14 overs into the innings, 5 wickets, but still Abrar has been thrown the ball by Fawad Alam. It's a good time to bring him on. These last moments of the day. Can be very difficult for batters to negotiate, as they're not sure usually that what needs to be done at this time. Either they play for time or keep playing their shots. Big turn. Fahim Ashraf, to his credit, watched it all the way. That's the leg spinner. If he's turning that leg spinner, Googly is going to turn and bounce a lot more than that. With 2 left-handers in, don't be surprised if he pulls one out of the bag. Turn him square. Didn't take him long. What sensational viewing this is. This is terrific. Yeah, it's sometimes it's funny the way batsmen try to negotiate. It's very difficult to pick him from the hand. Usually batsmen have to play off the pitch, and it becomes very difficult. Especially with that new ball. And that's skidded on. Short leg was in play. He's already troubling the batters. And that bounce will help him. We saw even in the first innings, he spun a googly which went on over the top of middle stump of Abid Ali. Good start to the leggy. 55 for 5. It is also the pace at which he bowls, Shah Faisal, because he's something like Kumble, who was bowled at that pace. It's very difficult to decide really what to do, and always attacking the stumps at the batsman all the time. Very, very difficult customer. He's not as tall as Kumble. And probably he turns it more than him on flat decks even. But on a wearing pitch, I think his pace will increase and he will become very nasty to tackle. And at this stage, the light meters were out and the umpires have made the call. Sindh reluctantly leaving the field. Central Punjab will be delighted to see the back of a horrendous day for them
first with the ball and then with the bat. But this has been a sensational day of cricket here, and the honours clearly taken away by Sindh as they're really leading this game. Central Punjab needing 252 more runs on the final day with just 5 wickets in hand. This session, 25 overs, 91 runs and 8 wickets have fallen in this session. Sindh team having a final word, a debrief from the captain before they go in the dressing room and relax. Most probably telling them the plans for tomorrow, what he's expecting of all of them. They could not have asked for a better day. With 5 down starting this morning, they were only 115 runs ahead. Now that lead went up over 300. Put Central Punjab in the field for most of the day. And when they came out to bowl in that last hour, they really went hard and Central Punjab were blown away. The sun is setting here in north of Karachi, and look at that batting card. Well, a sad story. This card tells you Rizwan Hussain is not out on 21, and with him Fahim Ashraf on 11. Apart from that, no one even got in the double figures, and it was all Sohail Khan. 55 for 5, Central Punjab. 5 wickets in that last 1 hour. Sohail Khan, keep looking at that length, jagging back into Imran Dogar, caught on the crease. Abid Ali could not battle on that occasion, and that battle was won by Sohail Khan. Once again, that man trapping Ali Zaryab on the crease and plumb in front. This was a pitch from Tabish, a signature Tabish Khan delivery, and that summed up the day for Central Punjab. And Saif Badr really turned his back on Rizwan Hussain, but in the end he had to pay the price because Rizwan made his ground, and Central Punjab are in complete disarray. The bowling so far for Sindh: Mir Hamza 4 overs 24 runs, Sohail Khan the hero of the day 6 overs 13 for 3, and Tabish chipping in with another wicket to complete the rot. 55 for 5, Central Punjab. Well, what a day, and this is how things look at the close of play. 155 plays 187, plays 338, 55 for 5. The story of destruction from Central Punjab as they need a further 252 runs on the final day with 5 wickets in hand. A thoroughly entertaining day here at the State Bank Sports Complex. It was a wonderful day of first-class cricket, but it has ended today. It's just about time for us to say goodbye from here. We look forward to your company tomorrow for the final day. Until then, it's goodbye from here.